Welcome to the one-day digital Dhyaan Yagna, 19th April 2020. Today is 19th of April 2020. Yesterday there were showers in Delhi, and we have got a pleasant morning today. And my dear friends, my dear masters, and my dear co-creators, Namaskaram, Vanakkam, Namaskara, Yellarku Vanakkam. सभियों के लिए स्वागत है वन डे डिजिटल ध्यान यज्ञ के लिए। मैं आज का प्रोग्राम चालू करने के पहले हम इसका फीडबैक और पीछे कैसा ये डिजिटल ध्यान यज्ञ का आइडिया आया है और कैसा हम करना चाहते हैं, आप सब लोगों को दोहराना चाहता हूं। आप सभियों को पता है पिरामिड मास्टर्स को 19th, 18th एंड 19th ऑफ अप्रैल पत्री सर ने डेट दिया हुआ है कि फॉर कुरुक्षेत्र में ध्यान यज्ञ 2 दिन का ध्यान यज्ञ करने के लिए। ये हमारा कैलेंडर में भी ऑलरेडी छापा हुआ है, सभी पिरामिड मास्टर्स को पता है ये डेट के बारे में। सभियों को पता है गए 26 दिन से 26 डेज से ये लॉकडाउन का और कोविड का और कोरोना का महामारी का चक्कर में जो लॉकडाउन करके रखा गया है, उस टाइम में ये ध्यान यज्ञ का डेट को कैसा करना है, कैसा इंप्लीमेंट करना करके सभी लोगों का आपस में वार्तालाप हो रहा था। उस वक्त खास करके कृष्णा बोम्मा रेड्डी जी हमारा पीएमसी ट्रस्ट का फाउंडिंग मेंबर है और कुछ सीनियर मास्टर्स का आपस में जब वार्तालाप होते वक्त हमको ये आइडिया आया है कि पत्री सर ने जो डेट दिया हुआ है उसी डेट को हम क्यों ना डिजिटली, ये सभी मास्टर्स प्रोग्राम्स तो कर ही रहे हैं, इसको हम लोग क्यों ना कर सके, ऐसा करके आइडिया आया था। देन इमीडिएटली बोम्मा कृष्णा जी ने पूरी तरह से उसका कार्य संभाला है। सब मास्टर्स को बुलाना और प्रोग्राम का रूपरेखा बनाई गई है। आप सभियों को पता है 26 दिन हुआ है ये लॉकडाउन और कोरोना देते हुए। पीएसएसएम मास्टर्स हर एक मास्टर ने पूरी तरह से ये 26 दिन को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया हुआ है। हर एक मास्टर ने हर एक जोन से, दक्षिण से हो या उत्तर से हो या पूर्व से हो या पश्चिम से हो, पूरा भारतवर्ष और ग्लोबली इस 26 दिन को पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साउथ इंडिया में हैदराबाद हमारा मेन हेडक्वार्टर्स है। पत्री जी भी आजकल हैदराबाद में ही रहे हैं। हैदराबाद से हमारा हर एक अल्टरनेटिव डे प्रोग्राम, पत्री जी का लाइव प्रोग्राम 2 घंटे का प्रोग्राम मॉर्निंग से 10 बजे से लेकर 12 घंटे का चल रहा है। मेडिटेशन भी हो रही है और सत्संग भी हो रही है डिजिटल माध्यम से। वैसा ही बेंगलुरु से पिरामिड वैली इंटरनेशनल, हमारा पिरामिड वैली इंटरनेशनल से भी लाइव प्रोग्राम चल रहा है। मास्टर्स को बुला रहे हैं, एवरी डे का प्रोग्राम चल रहा है। वैसा ही चेन्नई से हमारा पिरामिड पीएमसी तमिल चैनल की दौरिये पूरी तरह से कार्यक्रम को लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम से, वैजाग से हमारा नंद प्रसाद जी जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है अपना पीएमसी चैनल का, भी उन्होंने लाइव प्रोग्राम्स दे रहे हैं, सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसा अगर हम ईस्ट इंडिया की तरह से आएंगे, अगर पूर्व भारत तरफ से आने के वक्त आप जान सकते हैं कलकत्ता में पहली बार जूम को यूज करते हुए, अपना पूरी टेक्निकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए डिजिटल इंडिया मिशन जो भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिजिटल इंडिया के बारे में दोहराया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कलकत्ता का मेन लीडर है हमारा पूनम पोद्दार मैडम, और उनकी लीडरशिप में रिंकू गुप्ता मैडम, ईशा गोयल मैडम और बहुत सारे मास्टर्स मिलते हुए जूम का क्लासेस एवरी डे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटा 2.5 घंटे का प्रोग्राम पत्री सर के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स और मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम पश्चिमी तरह से आएंगे, बॉम्बे से हमारा राम बाबू जी
पूरी तरह से क्लासेस ले रहे हैं, मास्टर्स ले रहे हैं, हर एक मास्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। अगर रायपुर की तरह से आएंगे तो हमारा पुलतुशी चक्रवर्ती मैडम, जोरबादा बुद्धा, हम यूथ का ऑर्गेनाइजेशन हर एक को खास करके बताएंगे। पुणे से हिमांगी बलसारी मैडम, उनकी तरह से भी प्रोग्राम्स चालू हुआ है, उन्होंने भी मास्टर्स को इनवाइट की है। अगर नॉर्थ इंडिया की तरह से आएंगे थे, हमारी पूरी तरह से हर एक मास्टर्स नॉर्थ में क्लासेस ले रहे हैं। वैसा कि शारू मैडम, आशा गुप्ता मैडम, दीप्ति मैडम और कविता मैडम, सौरभ रंजन जी, राधिका मैडम, काजल तहरीर जी अपना और डिफरेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्थ इंडिया से कार्यक्रम कर रहे हैं। खास करके हमारा नव युवक ने, हमारा यंग मास्टर्स ने पाइमा पूरी तरह से चैलेंजेस कर रही है। हर एक व्यक्ति को, यूथ को प्रोत्साहन करने के लिए पाइमा चैलेंजेस प्रत्येक दिन कर रही है। वैसा ही जोरबा एक्सपर्ट मास्टर्स और एक्सपीरियंसेस को बता रही है। वैसा ही ईस्ट इंडिया से हमारा अवेकनिंग यूथ, हमारा साहिल कंडेई जी एंड टीम, उन लोगों ने भी मास्टर्स का एक्सपीरियंसेस करके यूथ को पूरी तरह से प्रोत्साहन दे रही है। और मैट बुद्धास, खास करके एमबी पब्लिशिंग, मैट बुद्धास पब्लिशिंग ने बुक रीडिंग को हर एक को प्रमोट करते हुए बहुत सारे किताबों को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वैसा ही सेंसे टीम पूरी तरह से संगीतकारों को, नई संगीतकारों को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने भी स्वाद सीरीज करके कार्यक्रम किया है। ऐसा पूरा यूथ टीम नए नए प्रोग्राम्स के साथ, नए नए आइडियाज के साथ उन लोगों ने कार्यक्रम गए 26 दिन से लगातार कर रही है। इसके अलावा पीएसएसएम, खास करके हमारा चारों प्रिंसिपल से हमारा पत्री जी हमको बताते हैं, ध्यान करना और लोगों को करवाना। गए 26 दिन से हमारा सामूहिक ध्यान घर परिवार में सभी मिलकर ध्यान कर रहे हैं और लोगों से करवा रहे हैं। नए लोगों से, फोन से, ईमेल से जो आ रहे हैं, सभी लोगों को जितना प्रयास करना था कर रहे हैं। वैसा ही आप सभी को पता है बुक रीडिंग के बारे में पत्री सर ने खास करके प्रत्येक दिन कोई ना कोई किताब का, नया किताब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सभी को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वो किताब को पढ़ने के लिए और लोगों को पढ़वाने के लिए। और तीसरा प्रिंसिपल पिरामिड शक्ति को और पिरामिड ऊर्जा को बताने के लिए, पिरामिड शक्ति और पिरामिड ऊर्जा को बताने के लिए हमारा मास्टर्स ने डेमो क्लासेस भी लिया हुआ है, मंडल क्लासेस लिया हुआ है। इस तरह से प्रमुख प्रोत्साहन कर रही है। सत्संग तो हो ही रहा है। ये चारों प्रिंसिपल जो पीएसएसएम का 4 प्रिंसिपल्स है, वो 4 प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से हम लोगों ने पालन कर रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए हमारा पत्री सर के साथ जितने सेक्रेटरीज है, सब सेक्रेटरीज इस इंफॉर्मेशन को हर एक व्यक्ति तक, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं डिजिटल माध्यम को इस्तेमाल करते हुए। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूं, इतने टफ सिचुएशन के बावजूद भी परिणता पत्री मैडम ने पूरी तरह से पत्री सर का डिजिटल डायरी को संभाल रही है। सवेरे 6 बजे से लेकर रात को मिडनाइट तक फोन में बात कर रहे हैं, जूम में बात कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। देख लीजिए, पीएसएसएम ग्लोबल हो या पीएसएसएम इंडिया मास्टर्स हो, पीएसएसएम इंटरनेशनल हो, साउथ से हो, ईस्ट से हो, हर एक तरह से मैडम परिणीता पत्री मैडम पूरी तरह से डिजिटल डायरी संभालते हुए पत्री सर को हर एक टेक्निकली अवेयरनेस करते हुए मैडम सर को लेके आ रही है। और परोक्ष रूप से मैं श्रीनिवास रेड्डी जी को पूरी तरह से उनका सहयोग को हम नमन करते हुए आज मेंशन करना चाहते हैं। श्रीनिवास रेड्डी जी ने जो नए नए किताबों ने ढूंढ कर पत्री जी को दे रहे हैं, पत्री जी उस किताबों को पढ़कर हम लोगों को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं हर एक मैसेजेस के माध्यम से। इस डिजिटल ध्यान यज्ञ इतनी पूरी तरह से
पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारा ग्रैंड मास्टर ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने आज को इस कार्यक्रम को उद्घाटन भी करें और उनकी मैसेज देते हुए सभी लोगों को आज मदित ध्यान करवाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं और एक बार आप सबका सामने बाहर आऊंगा। मैं ओवर टू पत्री जी। पत्री जी कुछ ही मिनट में आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पत्री जी आ रहे हैं। आज का डिजिटल ध्यान यज्ञ के लिए सभी को एक बार स्वागत करते हुए पत्री सर का आज का सेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और आज उनका मैसेज का थ्रू ध्यान करवाएंगे। आज थैंक यू पत्री सर, आपके लिए आज का डिजिटल ध्यान यज्ञ का इनाग्रेशन आप करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Please tell a few words about the whole program to me. What is it for the whole day? आज का कार्यक्रम ऐसा शुरू होता है सर। शुरुआत में आपका सेशन होगा 10 से 11, आइए 15-10 मिनट आगे हुई है। 1 घंटे का आपका मेडिटेशन का प्रोग्राम होगा। जैसा हम लोगों ने हर एक ज्ञान यज्ञ में प्रोग्राम हम लोग करते हैं, वैसा ही आपका मैसेज और आपका लाइव म्यूजिक मेडिटेशन के द्वारा। उसके बाद 10 से 11 बजे डॉक्टर न्यूटन जी का सेशन होगा और डॉक्टर न्यूटन जी के बाद आयना सिल्की मैडम का सेशन होगा 11 से 12 बजे और 12 से 1 बजे तक अनिल भारती जी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद 1 से 1:30 बजे का टाइम में लंच होगा। उसके बाद पल्लवी का क्लास होगा, मास्टर पल्लवी का 1:30 बजे से लेकर 2:15 बजे तक। देन 2:15 बजे से लेकर 3 बजे तक हितेश वशिष्ठ जी का सेशन होगा। उसके बाद 4:30 से लेकर 5 बजे तक नागलक्ष्मी मैडम का लाइव म्यूजिकल मेडिटेशन होगा। उसी का समय फिर दोबारा आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन भी 1 घंटे का होगा। उसके बाद आनंद करुणेशन जी का 1000 सीट्स ऑफ जॉय का जो रचयिता है उनका प्रोग्राम होगा। एंड प्रोग्राम में परिपत्री मैडम का क्लास होगा शाम को 6 से 7 बजे का। आप सुबह इनाग्रेशन के बाद फिर शाम को 4 बजे के टाइम में फिर दोबारा 3 बजे के टाइम में, सॉरी सर, 3 बजे के टाइम में फिर दोबारा आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा लाइव। हम लोगों ने कंट्रोल क्वेश्चंस ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स में मंगवाए हैं, उसी लोगों के द्वारा हमने उन क्वेश्चंस आपको पुट करेंगे इस 1 घंटे का समय में सर। That's very good स्वामी जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों का। PSSM का बहुत बहुत बधाई हो, हर एक बंदा का बधाई हो। आज का दिन सचमुच एक नया आविष्कार है दुनिया में। Today it's a great day for the whole of PSSM because it's a new format, it's a digital yagna. We are entering the new age really today. The old age is different, the new age is different. Before digital yuga age, it was the old age. After the digital age, it is the new age, where we don't have to transport our physical bodies. We only transport our own essence. Now I am speaking my essence. I am not transporting my physical body. मैं दिल्ली में शरीर के साथ नहीं हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ और दिल्ली में सभी लोगों को से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया से मैं बात कर रहा हूँ। To interact with the whole world, it is not necessary to transport my body. That is the greatness of the digital age. The computer age, the information age. We are here to exchange our information. Our physical body becomes irrelevant in this age of information. Our physical body can stay at home, happily resting, and we can interact with the whole world through the digital age, through the computer age,
through the new information age. This is the new age where physical body is discounted. Before this, we used to transport our physical bodies everywhere to our meetings. We used to take the physical body on the roads. Now that is no more necessary in the digital age. I can stay in my physical body here in Hyderabad and I can interact with the whole world. The modern technology, the digital technology is changing the whole world into new direction, new spiritual age, very, very fast. So, in tune with this digital age, this digital yagna today, right from morning to evening, and people everywhere sitting at their respective homes, at their respective places, and listening to this program is really a great revolution. What is today's theme? Today's theme is meditation theme. Today's theme is spiritual science theme. Today's theme is compassion theme. Today's theme is Karuna theme. Today's theme is peaceful interaction. No fight. We don't take arms. There is no war here. There is only exchange of information. Today's theme is vegetarianism, ahimsa. Today's theme is search for truth. Today's theme is search for internal satisfaction. Today's age is what I feel I want to do. What I want, I will get for myself through the help of myself. Today's theme is Corona is there everywhere. I want health. And I will get my health from myself, not from external sources. I will lock down myself in the home and I'll protect my health and create my well-being. I will do meditation and increase the immunity power of the body. And I will protect myself. I will heal myself. I don't need anybody's protection for me. I am independent. I can protect myself. I will help myself. So that is the age of, this is a new age. We have to protect ourselves. That is the real independence. There is no more dependence. The new age is an independent age, non-dependence age. One more thing, everybody has to understand that this physical body is not dependent upon food. We don't have to take food. It's only a choice, one of the choices. If you think the body will survive only through the food, then you need the food. But if you think and understand, you give any food. When you do a lot of meditation, you don't require any sleep also. When you do a lot of meditation, you don't require any food. The physical body is a wonderful thing. The more you do meditation, the more you see the wonders of the physical body. What a beautiful physical body is this. People who don't do meditation
they don't understand the physical value of the physical body or the greatness of the physical body. Only those people who do meditation, जो लोग ध्यान करते हैं, उन्हीं को मालूम होती है कि ये शरीर क्या है. The greatness of the physical body has to be explored, to understood through meditation. Through meditation, we understand many things. And one of those many things is the greatness of the physical body. We have a wonderful physical body, but we waste it. We undermine its capacity. The moment some problems come, we hang ourselves. We kill this physical body. And that's a great crime. This physical body is a great wonder, created by the Almighty. And whatever is created by the Almighty is always Almighty. A tiger comes from a tiger. Almighty comes from the Almighty. This physical body is Almighty. In our Hinduism, we have a concept, Chiranjeeva. They are with the same body for the yugas. We remember an Ashwatthama, we remember a Parashurama, we remember a Vibhishana, we remember a Hanuman. And many such people in this connection. They are Chiranjeevas. They have realized the beauty of the physical body. They have seen the greatness of the physical body. And they have realized the greatness of the physical body. What about we? When will we raise our consciousness to that level where we can really see the greatness of the physical body? The mortal body can become immortal if you manage it properly. We have been accustomed in our mind. It is mortal body, mortal body, mortal body. It has to die. No way. It's one of the choices. If you think it is a mortal body, it becomes a mortal body. And if you think it requires food, when you don't give food, the body will die. Because you fed your physical body on that intelligence, that without the food, the body will die. That's a belief system. It is your belief system which is the most important thing, which creates your realities. You change your belief system, you change the reality. In this lockdown period, to think that the souls are locked down is wrong. The souls are talking to each other. And we are saving our physical bodies. We are saving ourselves. We are treating our physical body in a different way. I was traveling all these years, but now I am at home. For the first time, I am giving great rest to my physical body. And my physical body appreciates it. You must overcome your belief systems. Eschew old belief systems and acquire new belief systems. Make an experiment with new belief systems. You don't have to open your mouth and talk always. You can be in great mauna, silence. Avatar Meher Baba was in silence for 45 years. He didn't open his mouth. We don't have to open our mouth to talk or open our mouth to eat. Jasmine from Australia, she doesn't eat.
and she participates in the world's activities as dynamically as you and I do. So what is the difference? Belief systems are different. So realities that you encounter are different. Yad bhavam tad bhavati. As your belief, bhavam is belief system. Bhavam is your actual reality you encounter. Mankind has to realize this great statement, Yad bhavam tad bhavati. What you think will happen. What you don't conceive in your mind can never manifest itself in the material realm. Bhava is a material realm. Bhava is a mental realm. Whatever happens in the mental realm happens in the physical realm. The physical realm is a mirror image of the mental realm. If you want something to be changed in the physical realm, you have to change your bhava. What is bhava? A belief system. If Rama is a god, if Krishna is a god, we are worshipping them. We are also gods. We have to worship ourselves. Since we are equal gods. But we don't realize that. We think we are stupid people. Only Rama is great, only Krishna is great, so we worship them. Worshipping gods arises from a belief system that they are gods and we are not gods. They are gods and we are dogs. From that kind of belief system, the whole worship, puja, prarthana, all these things arise. From a particular type of belief system. When you change the belief system, your reality changes. Another thing gets manifested. Recently, we have read a book. I have decided to be 120 years. When you decide here that I am going to stay in this physical body for another 100 years, under 70 years, under 60 years, whatever it may be, you are giving a new program to your brain. And you are giving a new program to the whole body through your brain. The brain and the body they are your servants. They are your ministers. And you are the king. The people and the ministers and the whole army looks for the king to give orders. If the king says, okay, fight the enemy, all these people, they fight the enemy. If the king says, no fighting, only peace, everybody stay at home, everybody will stay at home. The ministers, the cabinet, the army, the people, the civilians, all people, they look for the king to make a decision. The king makes a decision and the whole kingdom follows. Hitler said, hey, Germans, you are the greatest people. We are going to conquer the whole world. Hitler indoctrinated all the Germans. You are the best of the Aryan race. You are of the pure blood. All Germans are gods. All non-Germans are dogs. We are going to rule the whole world. He indoctrinated all his people. And the Second World War came in all its brutality. We have seen that. How one Hitler can change the belief system of a vast number of people, and he can direct them to take up arms, to kill all the people, to bomb everybody. One Hitler can do that. What has he done? He changed the belief system of people. You are the superior race. Oh, I am a superior man. Others are inferior to me. Okay, I am not going to allow these inferior people to exist on this earth planet. This earth planet should have the same thing with all the jihadis. The jihadis consider
all non-Islamic people are infidels. They don't deserve to exist on this earth planet. So all the jihadis, their belief system is such strong, they put bombs on themselves and go as suicide bombers. Their belief system has been changed by people. They have accepted the belief system. So what do they do? They put all the bombs on their bodies, and they go into people and they detonate themselves. Why a human being does that? Because of the belief systems. As you think, so you are. Yad bhavam tad bhavati. And what is the belief system of pyramid masters? The belief system of pyramid masters is we will help the whole world to become a heaven. We will teach meditation to everybody. We will teach non-killing, non-violence and non-interference to everybody. We will create a heaven out of this hell. This is the belief system of me and all the pyramid masters. And many people like us who are having parallel spiritual organizations. Now the whole world is full of spiritual organizations. Pyramid Spiritual Society Movement is one such great organization. Here the belief system is different. Different to the Hitlerian belief system or the jihadi belief system. Every belief system has its own set of believers. Our Pyramid Spiritual Society movement also is a vast movement. It also believes in one's own self. The power of the soul, the power of the mind, the power of the body, the power of the intellect, the power of the Almighty Creator who creates everything. We have got 5 powers. Power of the physical body, power of the mind, power of the intellect, power of the soul, and power of God. These are the 5 powers. Physical body is a great power in itself. The mind is a great power in itself. The intellect is a great power in itself. The soul is a great power in itself. And the God is, of course, Almighty. We are all these 5 powerful things. Our body is not a weak body. It's a powerful body. It's an immortal body. But because of our stupid belief system, we have made it a mortal body. Our mind is a great creator. Because of the mind, man has gone to the moon. Who has gone to the moon? Who made the man to go to the moon? The mind. The mind is so very powerful. It can create aircraft, spacecraft, and it can create all the technology. Right now, the digital technology we are speaking of has been created by the mind. How great it is. The TV, the cell phone, this kind of zooming, created by the mind of the man. It's such a powerful thing. The intellect of man, such a wonderful thing. It has created democracies, beautiful governments, beautiful social justice, courts. A Supreme Court is an example of a great intellect. What do the people do in the court, in the Supreme Court, in the high courts? They use their intellect to see what is useful, what is useless, what is good and what is bad. It's a powerful thing. Intellect is a powerful thing. And the soul is forever. I am forever. And see, D.L. and Shastri is forever. The soul is all powerful. The soul creates lifetimes through its own designs. And the Almighty, who has created the suns and the stars and the planets, the mineral kingdom, the plant kingdom, the elemental kingdom,
human kingdom, all this been by the Almighty, coming from the Almighty. So how we are Almighty on one side. We are the physical body, a powerful physical body. We have the powerful mind. We have a powerful intellect. We have a powerful soul, and we are the powerful Almighty. All the five things, five powers we have, not one. We are five powers. We have to develop all the powers. Each power is dependent upon the other power. If you develop the body's power, you will develop the mind's power. If you develop the mind's power, you will develop the intellectual powers. If you develop the soul power, you will develop everything else. To see always the power of Almighty is called a Bhakti Yoga. To see the power of the soul is called a Dhyaan Yoga, Jnana Raja Yoga. To see the great power of the intellect is called Jnana Yoga. To see the great power of mind is called a Karma Yoga. To see the great power of body is called a Hatha Yoga. This is Hatha Yoga. See the power of the body, greatness of the body. This is the Karma Yoga, second finger. See the greatness of Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and Bhakti Yoga. See the power of the Almighty. So Hatha Yoga, you cultivate the body. In Karma Yoga, you cultivate the mind. In Jnana Yoga, you cultivate the intellect. In Dhyana Yoga, you cultivate the soul. In Bhakti Yoga, you cultivate the Almighty. You have direct relationship with the Almighty. All these five yogas are there to realize the greatness of five things: the physical body, the mind, the intellect, the soul, and the God. We have five fingers. Five yogas. You know Hatha Yoga. Through Hatha Yoga, people are living in the Himalayas under the extreme cold for thousands of years. They have seen the greatness of the physical body, power of the physical body. It is not at all easy to see the power of the physical body. We have a great historical habit of discounting the physical body. No way. Now the time has come to see the physical body in its own mighty role, mighty significance. We are living in a physical body. We have to see the significance of the physical body, which we are not doing. We have two eyes. These two eyes are so powerful, they can see the stars. We have 2 ears. We listen to everything. So very powerful. We have a brain which can conceive everything, which can understand everything. We have 2 legs which can climb the Everest. We have 2 beautiful hands with which we can paint like Leonardo da Vinci, or play a flute like Hariprasad Chaurasia. We have a great mind. We have a great intellect. We have a great soul. We are great gods. 5 powerful things are we. Pyramid Spiritual Society movement gives back these 5 powers to all the people. Hey guys, realize your own powers. You got 5 powers. You have to cultivate your powers. See, you got vocal cords. If you cultivate the vocal cords, you will become like Lata Mangeshkar. You will become like Bhimsen Joshi. If you don't cultivate them, nothing will come out of the vocal cords by itself. Cultivation is important. The soil is there, but if you don't cultivate it, you can't raise any crops. It will be arid soil. You must cultivate the soil,
Put some seeds, take care of the sprouts, and you will have a great crop. Otherwise, the soil, the land will remain barren. Weeds will grow out of it. It is our choice whether in our piece of land there are weeds or there is a beautiful wheat crop. It is our choice, our decision, our efforts, our intentions, our attentions. We are having 5 wonderful things. Our intention should be to cultivate these five things through Hatha Yoga, through Karma Yoga, through Jnana Yoga, through Dhyana Yoga, and through Bhakti Yoga. We have to cultivate ourselves. Cultivating the whole gamut of our own selves, the body, the mind, the intellect, the Atma, and the God Almighty. This cultivation is called as spiritual practice. The great Qutub Minar was built. The great Red Fort was built. The great Taj Mahal was built by great efforts. The great Wall of China has been built, which is the only structure which can be seen from the moon. Okay. So people have built many wonderful things. The Great Pyramid was built. Wonderful things have been built. They have been built out of the mind. Mind is the builder. Somebody thought of the Great Pyramid, somebody thought of the Great Wall of China, somebody thought of Taj Mahal, somebody thought of the Qutub Minar, somebody thought of the Red Fort, and they have come. Somebody thought of a big pyramid in Bangalore, so the Bangalore pyramid had come. Somebody thought about a big pyramid in Kartal, Hyderabad, so the pyramid has come. 20,000 people have thought about pyramids, and 20,000 pyramids have come in India. How did they come? From the minds of the people, pyramid masters. The mind is the builder. How did they realize the power of the mind? Through meditation, through realizing the power of the soul. And who helped? Masters, all the astral masters. Combined are called as God. That is the Almighty's power. You take one step and the Almighty takes 9 more steps. Then you will complete the 10. You will get 10 out of 10. When you do 1 out of 10, the 9 out of 10 is added by astral masters, by the Almighty. And then you become 10 out of 10. The Almighty is there always to help every soul. We think that the Almighty doesn't help us. No, it helps. But it helps only those people who help themselves. The 9 by 10 assistance from the God depends upon the 1 by 10 assistance, self-help. Unless we start our own self-help, the 9 by 10 will not come to you. But the moment you are doing your 1 by 10, the whole 9 by 10 is with you. That is the power of the Almighty is with you. When you realize the power of the soul. 1/10 is your work, and your achievement will be 10 by 10. Effort is 1 by 10, and achievement is 10 by 10. So that 9 by 10 has been offered as a free gift by the Almighty. It gives everybody. It's like this, all the Ravanas, Hiranyakashipas, Rakshasas, they did 1% meditation, and Lord Shiva gave everything. All the powers. Had they not done meditation, Lord Shiva wouldn't be there to give them the powers. All the powers you want, whatever powers. Pyramid masters are interested in changing the world from a hell to a heaven. 1%, and the 9%, the other 10%, and the 90% comes from the Almighty. And we will realize our goal in the under 10 years. Because we have done our job all these years. In these 30 long years,
My dear pyramid masters, we have done our job, 10% job. Our 10% job ensures 90% addition by the Almighty, with all the astral masters. Because we have done 10% job, our job sincerely for 30 years, the rest is going to add. Without our asking, without our requesting. It's a matching contribution by the Almighty. So please rest assured that in another 10 years, the whole world is going to become heaven. All the 7.5 billion people are going to become pyramid masters. Every minister will become a master. When anybody comes in contact with a pyramid master, he has to become a pyramid master. If DL and Shastri has become a pyramid master, then whoever is in contact with DL and Shastri, all the misters who come into contact with a master, they have to become a master. That is how, if corona can infect everybody, do you think a mastery cannot infect anybody? It is natural. In Telugu they say, Neeru palla merugu, satyamu vyapti nerugu. The water knows its own depths. The water will naturally drift to the ocean. The truth will naturally spread to the whole world. Neeru palla merugu, satyamu vyapti nerugu. That is the Telugu statement. You don't have to tell any water, hey, go towards the sea. You don't have to tell any river, go to the sea. The river will find its own way down to the sea. Similarly, truth will spread by itself. Who doesn't want this truth? Like a dog smells and finds its target. A dog has got acute sense organ. That's why we use dogs. The police use dogs. Because a dog's sensory organ, smell organ is very, very acute, powerful. So, everybody wants truth. And they will smell, where is truth? Oh, well, truth is with DL and Shastri. So go to DL and Shastri. Contact him. You want truth, and the truth is there. I have smelled it. So all people will come, flock to DL and Shastri. All people will flock to all pyramid masters. Hey, truth is there. I have smelt it. Let me go and acquire. Have some truth. How many thousands and thousands of masters are there in pyramid spiritual society at the moment? About 40 years back, I was the only person in the PSSM. 40 years back, PSSM was Miss only Patri, Subhash Patri. Now there are millions and millions of Subhash Patris, millions and millions of pyramid masters. Every pyramid master is the same. Every pyramid master realizes the 5 powers: the body's power, the mind's power, the intellectual power, the soul's power, and the Almighty's power. Masters have realized all these powers. We can stay without sleep. We can stay without food. We can build anything. We can read all the books in the whole world. We can do hours and hours of meditation. And these 30 years, all the pyramid masters, they have completed the 10% work required to change this earth from hell to heaven. So our job is complete. Today, our job is complete. If today DL and Shastri leaves his body, he will be welcomed as a Purnatma in the higher worlds. He is no more Amshatma. Purnatma means we have realized the power of the body, power of the mind, power of the intellect, power of the soul, and the power of the Almighty. You are complete in all the departments.
You are flowering in all the departments. So, when you have completed your task in all the 5 departments, when you vacate the body, when you choose to vacate the body, you are welcomed as a Purnatma in the higher worlds. So, my namaskars to Purnatma, dear and Shastrigar. Purna means full, complete. Not half Atma. Purnatma. After the 5, if you realize only 2 things, you are half. If you realize all the 5 things, greatness of all the 5 things, you are Purna. Hatha Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and Bhakti Yoga. You are here to do up to Dhyana Yoga. Then Bhakti Yoga gets added to you. Bhakti Yoga is not you that you cultivate any yoga. Bhakti Yoga comes to you as a result of these 4 yogas. You will automatically become a Bhakti Yogi. You will automatically understand the whole scheme of the things, how you are receiving the help. So you don't ask for the help. You realize the concept of receiving the help. That is Bhakti Yoga from our definition. We realize all the astral masters helping us. That is called grace. That which come to us by itself. Our efforts completed with the Dhyana Yoga. And Bhakti Yoga gets added to you. The grace comes to you. That 9 by 10 of help comes from you, comes to you. When you help yourself, 1 by 10. And PSSM has done 1 by 10 completed by these 30 years. In another 10 years, we receive the grace from the whole Almighty, and earth will become a heaven by 2030. Now we understand all these things, my dear friends. Please realize you have got a powerful body, immortal body. You have got a great mind, a great builder mind. Power of the mind is infinite. You have got a great intellect. You can understand everything. Don't undermine your intellect. Oh, I can't understand. You can understand everything, provided you believe in the greatness of the intellect. And you are an eternal soul. You are creating your own lifetimes. And the Almighty is there, who is the creator of all the solar systems, galactic systems, dimensional systems, kingdoms, mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, human kingdom. All has been created by the Almighty. We know the Almighty. We know the whole structure. 5 departments are there. 4 yogas are there to be cultivated. 1 yoga will be added to you, which is called Bhakti Yoga. In Hatha Yoga, we do strenuous physical body practices. In Karma Yoga, you go and interact with all the people, face all the situations. In Jnana Yoga, you read all the books. In Dhyana Yoga, you are with your breath. In Dhyana Yoga, you are with your breath. If you do 1 yoga, automatically you will be a yogi in all the other yogas departments. Because 1 yoga leads you to all the other yogas. If you contact 1 pyramid master, you are contacting the whole movement of pyramid masters, isn't it? If you contact Dhyaan Shastri, you have contacted the whole Pyramid Spiritual Society movement. Because Dhyaan Shastri is a link in the whole movement. So 1 yoga, you contact, you get into all the other yogas automatically, gradually, steadfastly, with so much ease. That's why after these 4 yogas, we said only 1 yoga, be a Dhyana yogi, be with your breath. If out of these 5 fingers, we have to show only 1 finger, we will only show this finger. We don't show this finger, or we don't show this finger, we don't show this finger. After these 5, if you want to show only one thing, we'll show this finger, isn't it?
This is the Dhyana Yoga. One finger we don't show this. One finger we don't show this. One finger we don't show this. One finger we don't show. One finger with this finger, index finger we show. The one contains the many. That's why hang on to the one. Hang on to the breath. Everything else will come to you. All pyramid masters have realized this truth. They hang. They stuck to their breath and they got everything. They became a master. From Mister, they became a master. The one yoga that we advocate is Dhyana Yoga. Become one with the breath. You simply are at home. Don't do anything else. Be a Dhyana Yogi in the lockdown period. Be with your breath. Close your eyes and be with your breath. That gives you everything. An immortal body, a powerful mind, a great intellect, and the ultimate is grace. Everything will come to you when you are with your breath. The one thing you have to do is becoming one with the breath. That's what I realized 40 years back. How did I realize? Through the grace of my own past lifetimes. Through the grace of the grace. And through the grace of my own search for truth in this lifetime. All three things conspire together to give me a clarity about this one finger. Hey, become one with your breath. Then you get everything. Whatever you want. Meditation is the Kalpa Vriksha. Meditation is the Kalpa Taru. Kamadhenu. It is the Vajrayudha. It is the Allahuddin's magical lamp. One thing will give you everything, all the other things. One thing leads to the other. If you contact one pyramid master, you would be naturally contacting the rest of the pyramid masters in the rest of your lifetime. When you contact a master, every mister will become a master in due course. It cannot be otherwise. Welcome to all the masters of Pyramid Spiritual Society movement. My dear friends, the one thing is learn meditation, practice meditation, teach meditation, spread meditation. That is the one thing we are dedicated to. Learn meditation from pyramid masters. Practice meditation in your own home. And then teach meditation to your neighbors. And spread meditation digitally to all the friends in all over the world. So these are the 4 steps. Learn meditation, practice meditation, teach meditation. You have to teach only to your neighbors. You don't teach people in America or Russia or China, but we spread the information to those people and they will learn by themselves. Nobody is stupid. Everybody is intelligent. Everybody wants truth. Everybody wants health. Everybody wants peace of mind. But they are lacking the information. When you speak out your mouth, when you make a phone call to China, to one of your neighbors, one of your friends, friend's friend, you make a call, then they will receive the information of the meditation, one thing they have to do. So they will do that. You talk to your friend talked to you, another of his friend, and he talked to somebody else, and the information spreads. How to become one with the breath, how to do meditation. And that fellow will become a master. Every mister will become a master by 2030. Because of the spread of the information from mouth to mouth, across the globe, across the planet Earth. If Corona can spread like that, our word is more powerful than Corona.
So, learn meditation, practice meditation, teach meditation, and spread meditation. 4 things. This is the one yoga called as Dhyana Yoga. This is the one Karma Yoga called as Karma Yoga. Learning meditation is Jnana Yoga. Practicing meditation is Dhyana Yoga. Teaching meditation is Jnana Yoga. Spreading meditation is Bhakti Yoga. For us, all these yogas are combined in what we do. And through this yoga, our physical body becomes immortal. We stay in this physical body as long as we want. I have decided to stay in this physical body until 2095. Yad bhavam tad bhavati. I've been talking about 2095 for the past 15, 20 years, perhaps. I don't know. But I'll continue to speak about 2095 until the 2095 comes. My words create my realities, and my reality creates everybody else's realities. Our realities are codependent. D.L.N. Shastri's reality impacts my reality. My reality impacts D.L.N. Shastri's reality. It cannot but happen like that. It is natural phenomena that we impact each other, knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously. Everything happens. So I wish very well for all the Prayer Masters today, from morning to evening, let us do some meditation. Please close your eyes and begin to observe your breathing. Become one with your breath. Our 4 principles are learn meditation, practice meditation, teach meditation, and spread meditation. Be with your breath. Normal, natural breath, my dear friends. Remove your specs. Hands into hands, fingers into fingers, crossing the feet. Sit comfortably and be with your breath. That is the one thing we have to learn to do, if you have not learned yet. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath. Be with your breath, my dear friends.
Be with your breath. Normal, natural, easy, simple, soft, tranquil, peaceful breath, my dear friends. Learn meditation means learning to be with the breath. The breath is your guru. And you have to be with your guru. If you want to become spiritual, you have to be with your guru. And your guru is your breath. You don't have to go in search of your guru. Your guru is there in your own body as the breath. So we don't go anywhere in search of guru. We realize, we discover that our guru is always with us. And we become, our rest of lifetime is dedicated to our guru, to become one with the breath, wherever we are. Howsoever we are, we want to be with the guru. The breath is our guru. That is the greatest discovery of mankind, which they should do to become divine kind. The whole mankind has to become divine kind. The whole mankind has to become divine kingdom. For that, they have to become one with their own respective guru, which is the breath. That's all we need to do. We need to close our eyes. We need to cross our feet. We need to cross our hands. All fingers into all fingers locked in, and become one with the breath, my dear friends. And that is the only thing we need to do. And we will get everything else as bonus, as grace. Everything else happens as an after effect of your practice of meditation. We have only one advice with us. Hey, guy, close your eyes and become one with your breath. Sukhamaya pranayama. Just be with the breath in the as is various condition of the breath. Observe what the breathing is doing. The simple practice of inhalation and exhalation, becoming one with anapanasati, will give you everything. From alpha to omega, from A to Z. And you will become a Purnatma. You will realize 5 powers. You will realize the power of the body, power of the mind, power of the intellect, power of the soul, and power of Almighty. You will realize five powers. When you realize 5 powers, you are all powerful. You are full. You become a Purnatma. You must realize the great powers of all the 5 departments, 5 fingers. And out of the 5 fingers, we choose one finger, that is index finger. That is the meditation. Becoming one with the breath. And by being with that, we get everything else as a bonus, as a grace, without our targeting them. All pyramid masters are here on this earth planet to teach meditation, my dear friends. To teach meditation to their neighbors and to spread meditation all over the world. They have learned this meditation many incarnations back, and they have practiced it for many incarnations. Now they have come to teach to your neighbors and to spread it across the world. Pyramid masters are the people to teach everybody meditation, to spread meditation on this earth planet. And vegetarianism will come, ahimsa will come as an offshoot of meditation. Karuna will come as an offshoot of meditation. Peace will come, everything comes as an offshoot of meditation. We do our job. We have done our job for 30 years. Another 10 years,
our job will be completed in spite of ourselves, not because of ourselves. In spite of ourselves, our job gets completed in another 10 years. Final 2 minutes. Be with your breath, only 2 minutes. Only 2 minutes more, my dear friends. Be with your breath. Final 1 minute. Be with your breath. Normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath, my dear friends. All over the world. We have to spread this truth all over the world. And it is happening digitally. Final 20 seconds. Final 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Kindly put your hands on your eyes for 5 seconds, my dear friends. For 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and you may open your eyes. Thank you, Shastri Garu. Thank you very much, sir. And आज ఎంత టైం వన్ అయింది? డే డిజిటల్ ధ్యాన యజ్ఞ టైం ఎంత అయింది? టైం 10:25. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బాబా. Thank you, sir. So one day digital ध्यान यज्ञ एक्सपेरिमेंट we did, क्योंकि आपने 18-19 तारीख के लिए कुरुक्षेत्र का ध्यान यज्ञ का डेट दिया था. Today we are supposed to be in Kurukshetra, but we are virtually in everybody's house and doing the digital ध्यान यज्ञ. So आपने पूरा नॉर्थ इंडिया की मास्टर्स और आज मोर देन 1000 पीपल अभी ये ध्यान यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर. हमारा पीएमसी तेलुगु चैनल, तमिल चैनल, कनाडा, पिरामिड वैली इंटरनेशनल और क्यूएलयू ग्लोबल सभी लोगों ने लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं. सभी लोग अटेंड कर रहे हैं सर इस बार आज का प्रोग्राम. वेरी गुड. ये प्रोग्राम ने पूरा आपका दिन को सेट किया है. गए 20 दिन से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था लगातार आपने हर एक अल्टरनेटिव डे में जो तेलुगु में जो मेडिटेशन और जो मैसेजेस दे रहे हैं उसका कश्मकश आपने आज पूरा दिन का कार्यक्रम को पूरी तरह से सेट किया है. ध्यान जगत के लिए, शाकाहार जगत के लिए, स्पिरिचुअल साइंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. एंड आज हम अगला कार्यक्रम चालू करेंगे. हमारा डॉक्टर न्यूटन और लक्ष्मी न्यूटन का कार्यक्रम होगा. प्रज्ञा और करुणा के ऊपर में डॉक्टर न्यूटन सर एंड लक्ष्मी न्यूटन का कार्यक्रम होगा. उसके बाद आयोना सिल्की का कार्यक्रम होगा फ्रॉम दुबई से सर. सो थैंक यू वेरी मच. आप हम दोबारा आमंत्रित करेंगे 3 बजे को Q&A के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. राइट बाबा. थैंक यू. तो आपका फाइनल संदेशा टू एवरीबॉडी सर. Learn meditation, practice meditation, teach meditation and spread meditation. That's all. Thank you, Newton. I can see Newton and Lakshmi.
This is soul food today. We received a wonderful soul food breakfast, sir, from you. It's amazing. The 5 hours that we need to realize. It's amazing, amazing, sir. Thank you, sir. Thank you. It's wonderful, wonderful. Nice to see you, Newton Lakshmi. Yes, sir. Yes, sir. We are in the same city, but we are not able to see physically. But we are here to see each other digitally. Yes, sir. Thank you. Huh? Thank you, sir. Thank you. अगला कार्यक्रम होगा डॉक्टर न्यूटन एंड लक्ष्मी न्यूटन मैडम। हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में पत्री सर के साथ एक ही प्रोग्राम में बहुत बार देखना चाहते थे, बट कोई ना कोई कारण की वजह से हो नहीं पाया है। बट हम आज ये डिजिटल ज्ञान यज्ञ में पत्री सर के साथ आपको भी हमने एक ही प्लेटफॉर्म में देख पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है सर। और एक्चुअली 19 तारीख को कुरुक्षेत्र में डिजिटल ध्यान यज्ञ होने वाला था। आज सेम दिन में आज डिजिटल ध्यान यज्ञ कर रहे हैं। उसमें आपको और दोनों मैडम को हार्दिक स्वागत है। आप सब पिरामिड मास्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, पहला सेशन पत्री सर का हमने देखा है और मेडिटेशन का आज का कार्यक्रम का पूरी तरह से टोन सेट किया गया है। आज हमारा फर्स्ट स्पीकर्स है करुणा और प्रज्ञा, और करुणा के ऊपर में आज लक्ष्मी मैडम और न्यूटन सर आज का सेशन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर न्यूटन सर एंड लक्ष्मी न्यूटन क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का संस्थापक है। उन्होंने गए लास्ट मोर देन 1 ईयर से सोल कोच प्रोग्राम कर रहे हैं, और जब से 26 दिन, दिस इज टुडे इज द 26th डे सर आफ्टर द लॉकडाउन हैज बीन अनाउंस्ड, लगातार न्यूटन सर और लक्ष्मी मैडम एवरी डे, 1 डे इन तेलुगु 1 डे इन इंग्लिश, पूरी तरह से कार्यक्रम हर एक एपिसोड बता रहे हैं। बहुत सारे लोग आपका कार्यक्रम को देखकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजा हुआ है, और हिंदी चैनल का थ्रू से भी हम लोगों ने क्वेश्चंस आपको भेज रहे थे, आपका आंसर्स भी आ रहा है, सभी लोगों को हम शेयर कर रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है, आप आज का सेशन लेंगे और सबको आनंदित करेंगे। और थैंक यू इतना कहते हुए दोनों को निमंत्रण सर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक द सेशन। Thank you, Shastri ji. And my gratitude goes to Brahmashri Pitamaha Patri ji, who taught me meditation, who actually made me to step into this spiritual path. When I met Brahmashri Pitamaha Patri ji, I was 19 years old. At the time, I was very, very stupid, ignorant, and no awareness about whatever that we are speaking, whatever Patriji was explaining today morning about the power of mind, power of soul, power of Almighty. Only I thought we are bodies, we are physical bodies. So that point of time when Patriji taught me meditation, that practice of meditation transformed me. Today, both of us, myself and Lakshmi, are going to share our insights, our views, and our experiences with all of you, dear friends. Along with me, Lakshmi is also here, and both of us going to speak today with all of you. नमस्कार, प्रणाम, प्रज्ञा और करुणा, इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। इस अवसर पर जो कुछ भी हो रहा है कोरोना की वजह से, इस समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए रात और दिन जो डॉक्टर, जो नर्स, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जो मास्टर्स मेडिटेशन का जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं,
उन सबको मैं नमन करती हूँ। It's really wonderful what we are currently right now going through throughout the globe. This situation is making us to stay at home, and it's teaching us one beautiful thing. We are learning meditation, staying at home. It never happened. We used to have many excuses. Oh, I don't have time. I am very busy person, and it's very difficult for me to meditate. Now, it's almost like the whole universe conspired to manifest for entire humanity the grace of time, abundance of time. So much time is given to everyone. So we are right now, we are blessed beings staying at home. And as Patriji given a beautiful message, this digital age, digital Dhyaan Yagna, this is something amazing that there is a beautiful shift of consciousness that is happening. So, dear friends, the topic that we have chosen, Pragna and Karuna, when Delhi Pyramid Spiritual Society's movement asked us, Krishna Bomma and Shastriji, and the whole team asked the topic, and immediately what came to my mind is Pragna and Karuna, because for me, my life began with a journey into meditation and acquiring the wisdom, learning what I don't know. So Pragna is actually learning what we do not know. So one beautiful words from Lao Tzu, I want to say, knowing about others, knowing about the world is knowledge. But knowing yourself is called wisdom. So dear friends, I really thank Master Patriji for bringing this very beautiful, simple wisdom, simple tool to everyone around the globe. He made it so simple. So it is not at all difficult. Only thing is we need to invest our time. So we come to know about ourselves. Prajna is to know one's own self. So Patriji spoken about that. The index finger, Dhyana Yoga. And with that, all the other things will be like a bonus for us. Everything comes to us. That is what I have experienced, dear friends. I have experienced the innate wisdom because I believe, I truly feel that all of us are wise beings. Everyone who incarnated, whoever is born, is a wise being. Only thing is we have forgotten our wisdom. So meditation awakens the inner wisdom. We're already Buddhas in making. Only thing is we have forgotten. We thought we are Buddhas. We've forgotten our own Buddhahood. We just, in meditation, Dhyana Yoga, we wake up. We wake up to our true self, our real self. So many experiences that we get during meditation practice when we are watching the breath. So many things unfold spontaneously from our own consciousness. So, friends, Prajna is learning what we do not know, and Karuna is teaching what we know. These are two things are like wings of a bird, or two eyes of an awakened being. Each one of us, as an awakened, conscious, aware being living on this planet Earth, we have these two eyes. One eye represents Prajna, and the second eye is Ankh. Second Ankh represents Karuna. Only with one eye we can't see properly. We need the two eyes. A bird cannot fly with one wing, it needs two wings. So the first step is to, when you come into meditation path, meditation refines you.
awakens your inner wisdom, and you come to know about yourself. You reach to a fulfilled state. You're fulfilled at many levels, like physically, mentally, emotionally, intellectually. So, and then what happens is you become like a flower. Now, no more you are a bud with the petals but not opened. But this flower, which is blossom now, Karuna comes out of you. So initially, before I started meditation practice, I was a non-vegetarian. So when I came into the practice of meditation, the first thing that happened in me is compassion came to me. When I started understanding myself, how could someone kill animal and eat animals? And I became completely a non-violent being. Even words are sword. So my words were before meditation practice, it was very rude and used to hurt people through words. But after practice of meditation, so much of compassion arose in me, and I became a non-violent being, even non-violent communication. I also thank Dr. Lakshmi, who is my biggest inspiration. She's also a very great teacher to me, because when I started meditation practice, that time everyone used to laugh at me, my classmates in the medical college, because we were medical college students at that time. So everyone was always, "Oh, you crazy guy, what are you doing? You always go and meditate in the pyramid." Because every time in the evening times, after medical college studies are over, I used to go to the pyramid to meditate. In 1990, that's the year 1990, 1990, 91, 92, 93, 94. Those are the very precious years of sadhana for me. When I every day I used to go to pyramid. There is a beautiful pyramid built in Karnool, near Hyderabad. That's where I was studying as a medical student. And Dr. Lakshmi, she was my classmate. And she's the only one person who used to have the similar kinds of ideas like me. Because I had these crazy ideas like I want to find out who I am and what's the purpose of life, what happens after death, and I want to know about the truth. And we used to have such beautiful spiritual conversations. And she used to really help me, hold my hand. She said, "We're going to discover the truth together." And also, that point of time, I was highly arrogant person, very egoistic. A kind of all kinds of arrogances I had. And Dr. Lakshmi's compassion and help, I always feel that she is far ahead, very advanced than me. In the soul, she is far advanced, far advanced. And her compassion made me to drop my arrogance. I realized about many things, because we need Sajjan Sangatya. I found right in my home Sajjan Sangatya. Every day Sangatya, friendship, Maitri with Dr. Lakshmi, it really made me a good human being. And I still, there is so much to learn. There's no end. I believe that there's no end to the wisdom, gaining the wisdom. So wisdom is also, prajna is knowing that I don't know anything. The first step is that. When we come into meditation path, so far before meditation, we think I know everything, because we get knowledge. Knowledge is not is not going to really change us. There's no inner transformation. It's only theoretical knowledge. It's only data and information, and information which is processed in the mind. It becomes knowledge, but the knowledge has to be translated into prajna, wisdom. Wisdom comes from your own inner experience, meditation experience.
That's what I really realized, dear friends. And I want Dr. Lakshmi also now to speak. Yeah. Prajna and Karuna are two sides of the same coin. In meditation, in your sadhana, Prajna gives rise to Karuna and Karuna gives rise to Prajna. Without Karuna, Prajna is not real Prajna. And without Prajna, Karuna is not real Karuna. So, Karuna के बिना प्रज्ञा अधूरा है और प्रज्ञा के बिना करुणा भी अधूरा है. So friends, I just want to share with all of you, when you realize yourself, when you understand about your true essence, when you realize that you are that divine consciousness, you also realize that everything else is also divine as you are. So I just want to share this story of Lord Buddha, a beautiful story, because he is the representation of both compassion and karuna. When you mix compassion and wisdom together, then that's Buddha. So Buddha, when he left his palace in search of truth, he was just wandering and he reached Magadha, and he just wanted to go to a faraway mountain where he can find some sages, some great masters who can help him in his path. So on his way, he just encountered a flock of sheep. And all these shepherds were just taking these sheep towards the capital because they wanted to sacrifice. There was a ceremony going on, and so they were all taking these sheep for that sacrificial ceremony. And one little lamb got injured, and Buddha felt so much of compassion for this lamb, and he just took start taking care of this little lamb, and he started following these people to the capital of Magadha. And when he reached there, he saw that King Bimbisara and all the other priests were performing this ceremony where they are going to sacrifice all these animals. So felt so sad. And he just went to them and he started speaking to them. Please stop this sacrifice because life is extremely precious, not only for all the creatures, because life is the same. Everyone wants to live like us. All these creatures, they want to live like us. So if you expect mercy, then show mercy. And according to the law of cause and effect, if you kill others, then you will be killed. So if you expect happiness in the future, so don't harm these poor creatures, these poor animals. And if you sow the seeds of suffering, then you are just going to reap the same benefits. You are going to get back the same suffering. So immediately the priest got very angry and he started arguing with the Siddhartha, the Gautama. And then what happened? The priest said, why are you not understanding what we are doing? Because when we do these sacrifices, it's going to benefit all of them, the king, the mediator, the priest, and all these goats. None is going to lose because asked what benefit you're going to receive because of this sacrifice. So then the priest said, the king and the priest, they are going to gain merit, and all these sheep, they are going to gain heaven. They are going to go to heaven directly. So then Buddha asked, are you sure about it? So then the priest said, yes, I'm absolutely sure about this. And all these sheep, they are going to go to heaven. They are going to gain heaven. So immediately Siddhartha asked the priest, my dear friend, do you also want your old father to gain heaven when he is dead? So then the priest got very upset. He said, yes, I want my father to go to heaven. So then why don't you sacrifice your father?
What a compassion! What a compassion! Because it's a truth. So when you realize yourself with the practice of meditation, then you speak the truth. Because life is the same for everyone. And then when you realize it's the same life, it's the same pain, it's the same happiness, the other creatures are also experiencing, then you will also stand up for them. That is what is Karuna is all about. So friends, Buddha Bhagwan वो जो करुणा और प्रज्ञा का एक प्रतीक है और अवतार है. So here Lord Buddha is teaching us about both prajna and karuna, because the wisdom he has within his being, and he's so compassionate towards other beings, fellow creatures, and he's not even scared of anybody. He's just speaking the truth. Even in those times were not like today. They were very difficult, but in spite of that, he couldn't stop speaking the truth. So he's just setting an example. He's a role model for all of us how to be, because an enlightened master is an epitome of prajna and karuna. What do you say? That's beautiful. That's very true. Without each other, it becomes incomplete. And friends, it's both are integral parts of each other. So, as a practitioner of meditation, for example, we have come into the path of meditation. We are learning. We are progressing. Some of you are beginners. Some of you are advanced. You really doing practice in the last 20 years. Some of you 30 years. So many incarnations, because not this lifetime. Many of you are from many lifetimes of sadhana. You have come here, and these two need to be balanced. Without each other, without karuna, prajna remains 50%. Without only karuna and without prajna also it is 50%. So it's so important. Both need to go hand in hand. That's what I feel like saying to you, that first, our goal is to embrace both, understand these two things, ahimsa and atmagyan. Ahimsa and atmagyan. Ahimsa is nothing but karuna, because compassion is required towards all the fellow creatures, all the fellow beings living on the planet Earth, every being. And if we look into the eyes of these animals, we can know that immediately our awareness says certain things. Oh, just like me, this animal also is trying to live on the planet Earth. Just like me, this animal also is trying to find solution for the suffering. Just like me, this animal has certain needs. Just like me, this animal also is looking for. I'm not different from this animal, and this animal is not different from me. This is what is karuna, compassion, dear friends. We are very compassionate towards our fellow human beings, but this is so important. Right now on the planet Earth, this is so important that ahimsa, even compassion towards all the fellow creatures living on the planet Earth. So the second is Atmagyan. So some they enter into this field of Atmagyan, like meditation, Dhyanamarg. First they enter into Dhyanamarg. But Dhyanamarg itself can change them. Some of us, they enter directly into path of compassion and karuna. Dr. Lakshmi came into this path, spiritual path, through path of compassion. She is born vegetarian. By birth, she is a vegetarian. So she is born in a non-vegetarian family. Her samskaras, past life, I think strong imprints
about vegetarianism so strong, being very compassionate towards animals. So I feel that she came through the path of compassion and she entered into the path of prajna. I entered in a different direction. First, I came into path of meditation. I was like a rakshas, non-vegetarian, eating meat and whatnot. And because I was ignorant, I was not having any information about how to live on plant food because I don't have information about that. And it's not an excuse, but still, when I think about my past, I feel so guilty. So guilty that how could I eat killing animals, the food from the animals? And but now the guilt won't serve any purpose. We have to turn that to compassion. So now my service is I have to make at least my effort is to reach out a billion population to make them understand about vegetarianism. That's my service. My guilt is now I'm transforming into compassion. So friends, I first came into path of prajna, means path of meditation and wisdom, gaining the wisdom, and that wisdom taught me about compassion, ahimsa mark, and both support each other. I'd like to say about three things from Buddha's wisdom, because he's the one who was using these words. In the Pali language, he was calling this as panna. Prajna is called panna. So this prajna in Sanskrit, in English it means wisdom. This wisdom is threefold. So before we come into these three understandings, before that we understand that we don't know anything. In meditation, the first thing that we understand is when the mind becomes zero and empty, and you're watching the breath, what happens is you not know anything. I don't know anything about myself. That's what is the first realization. And then you start looking at yourself. Oh, I was a bad guy. I was hurting people. Oh, I misused my speech. I was abusing people through my speech, abusive speech. So many realizations will come. These are the layers. Many these mind, emotional layers, ego layers. Our ego, which is holding all these things, they will be peeled off. And then we arrive at a beautiful understanding. Buddha shared it as three beautiful things that arises in every meditator. The one thing is called the wisdom of nothing. This is called wisdom of shunya, wisdom of emptiness. Buddha talked great about this emptiness because meditation itself is emptying the mind, emptying the past, emptying your fears, emptying the ego, emptying the past life karmas, and emptying the baggage. It is whatnot, everything you empty and you become complete zero, a big zero. And this shunya, Buddha talked about, Mahashunya he talked about, a great void. This is giving birth to everything. Nothingness is giving birth to everythingness. Only when we can become nothing, then we can become everything. We can really know that we are all pervading, all expansive consciousness. First, we need to become completely zero. This is first, Buddha called it as wisdom of nothing, shunya, mahashunya, mahaparishunya, great mahashunya, mahaparishunya. Greatest levels of silence need to be embraced. As human beings, we are so accustomed and habituated to always to avoid the silence. When silence is rising, we want to speak, habitually speak. We want to fill our silence with so many activities. We don't want to be in silence. We don't want to be in that emptiness and the void. That void is the most beautiful experience, and it gives rise to everything.
When Buddha talked about wisdom of uncertainty, it also means wisdom of insecurity also. Means in this world that we see, the material world, everything is changing. Buddha called it as anitya. Everything is anitya. Samsara is full of anitya. Everything is changing. You can't say that this will not change. My house will be there forever. Whatever the house that I built, it may stay for 10 years, 20 years, maximum 120 years, 150 years. But afterwards, one earthquake will completely demolish that building. Many constructions were, built. Everything goes away. Everything changes. Our body, which incarnated, we incarnated into the body, and this body is also a beautiful tool, beautiful instrument, beautiful vehicle. One day this body need to be discarded. This becomes old. If you stick to this, oh, I don't want this body to change, I want to be forever young, it is not possible. So Buddha said wisdom of uncertainty. One great wisdom arises from within you when you embrace uncertainty. Right now, coronavirus is the most uncertainty moments that are created around the globe, and insecurity for the people. What is going to happen to the business, finances, health, life of everyone on the planet Earth? We don't know. This insecurity, uncertainty need to be completely embraced. Buddha said, when we know that outer reality is going through the changes, and you understand through watching and observing and cultivating your awareness, you recognize that there is something which is unchanging in you. That is called the soul which is eternal. The body may be discarded, my body may die, and many things will perish around the world, in the world, but the soul in you is imperishable. The soul always is unchanging principle in us. So that's what is the wisdom Buddha was talking about, the prajna of what is called as unchanging principle in you, the awareness in you. The awareness which is definitionless in the background, which is unchanging principle. We call it, as we give all the names to it, as spirit, soul, and atma, different names, but means the same. And the third wisdom Buddha talked about is called as, the first one is wisdom of nothing. Second one is wisdom of change, uncertainty, wisdom of insecurity, and nitya anitya. Wisdom, the third one is called anatta. Buddha talked a lot about this anatta, anatma. Another word, it means all that what we see around the globe, it has, it is anatma, means it is not a, it has no, like a human consciousness. Our human consciousness is totally different. So like all the material things, like money to everything, it is anatma. It is not essential, it is non-essential. So anatta means which is divided of the essential principle. So friends, but opposite word of anatta is called atta or atma. Atman. So this third one, the prajna, is nothing but whatever that wisdom of the soul which rises within you, that you are a being, not just a three-dimensional personality, ego, or a human thinking or human feeling or human doing, but you're a human being consciousness which is non-linear, non-local. Your consciousness which is residing in beyond time and space. That's what Buddha talked about. This wisdom arises within us. So friends, prajna, it is
really unending, vast. It is ocean-like. There's no end to it. So that's why when we know certain things and we come to a point that, oh, there's something more to know. There is something unknowable. So our journey begins from known world that we know through five senses, but we want to know that mysterious element, unknown world, unknown dimension of us, that unknown. After knowing the unknown, and then there is something called unknowable, which always challenges us, which makes us like eternal students. Prajna means also you are a teacher, you are a student at the same time. You are an eternal teacher, you are an eternal student. You always learn what you know or what you do not know. You teach what you know. This is what happens. So, dear friends, let's hear from Dr. Lakshmi now. Yeah, let me share something about Karuna. Somebody asked me this question, Dr. Lakshmi, if we meditate, then we become wise, then we become compassionate. So don't you think when you become so compassionate, then there will not be any, you can't defend yourself in certain situations. Then you become very weak, then you become very weak. So is it desirable? So then I told them, compassion is not about becoming weak. When you act with compassion, when you act from that non-violent state, and when you have this understanding of non-duality, then you have to be very strong. Let us take the example of Mahatma Gandhi ji. His only weapon was non-violence, nothing else. He was so strong, he could fight with the whole British and he could get the freedom for us, the Swaraj for us. So friends, I just want to share this joke about a lady who came from the West and she wanted to learn about spirituality from a master in India. And she was staying with this master and she was just, learning many things. So one day she went out with her friend in a rickshaw, auto rickshaw, and suddenly some stranger came and started hitting them and he wanted to take away their belongings. And they resisted and he couldn't do nothing and he ran away. So then she came back to the ashram and she asked the master this question. Master, I'm learning about spirituality from you. So what should I have done in this situation? Please tell me, please guide me, because I didn't know what to do in that situation. Because spirituality teaches us to be compassionate. So please tell me. So then immediately the master said, you could have very mindfully, with the utmost compassion, whacked that fellow with your umbrella. So compassion means to be strong. Compassion is your strength. You have to be strong in order to spread this awareness, because there will be many people who will not resonate with what you're teaching, with what you're feeling, with what you're saying. But in spite of all that, you need that courage, you need that strength, and compassion is your strength. Only when you have this compassion in your heart, you can feel for other beings, you can feel for the animals, you can feel for the whole earth. That's really a very good point that you shared, Lakshmi. It's really beautiful that compassion is not weakness. People think, oh, my people will take advantage of my compassion and they will start hitting me. So it's not true. The compassion has its own strength. Don't you think that between a mountain and the flower, can you compare both of them? We can't say that mountain is strong, but even a flower with such gentle fragrance, it carries such a strength. It can move the mountain also. Even the
mountain wants to smell the fragrance of the flower. It is the smallest things has greatest value. Even compassion. I want to share one more, just a story that I read. One monk is going in a water body because it is flooded. He saw that one scorpion is getting drowned in the waters, and immediately what he did is he found a leaf, a big leaf. He wanted to save the scorpion. He tried to save the scorpion. The scorpion bitten him, and he really experienced such a terrible pain. And um, again, that scorpion is in the water. Save it again. The second time also, again he brought the leaf. Again he tried to save. Again it started biting him. A villager was watching the monk, and he said, "You are like such a stupid fellow. Don't you know that this? Don't you know that this scorpion is actually is going to bite you? It is poisonous, and it is its nature that scorpion bites people." And monk said, now the third attempt also, he was carrying the scorpion, left it to the shore, and said, "Yes, I know it's the nature of the scorpion to bite me, but it is the inner nature of me to be compassionate, to serve, to save this wonderful, beautiful creature, even though it is poisonous. I know it is very poisonous, but still, this is my inner nature." Dear friends, prajna makes us understand our swadharma. Prajna is coming out of your meditation sadhana, dear friends. Our sadhana practice. A lot of practice is needed. Initial days of my meditation practice, it was utter flop, because I want to share this because some of the beginners from North India, from South India, everywhere around the globe might have joined. It will help you. It can inspire you. Initially, it was such a struggle for me to conquer this monkey mind. This monkey mind was not quiet. It was always moving, going here and there, and thousand millions of thoughts were coming into my mind. And but I was sincere to my practice of meditation. 40 days meditation practice, mandala practice, mandala. Every day I was sitting in meditation. And initial practice I was doing is 3 hours every day meditation. In 40 days time, completely, my mind completely became empty and silent. And from then onwards, there were so many beautiful experiences that started coming up. Everything that I have read or I heard in India, we keep reading books like Bhagavad Gita and many scriptures, but everything came from within me. There was a Bhagavad Gita that's coming from my soul. Your own soul will give everything to you, friends. That's what my soul did. I got all my experiences. Like I got my energy experiences, flow of energy in my body, my Kundalini. I could see the journey of my Kundalini Shakti through the chakras and awakening of my third eye, and also the opening of this petal of thousand petal lotus on my top of my head. So it was so spontaneous during meditation, all these experiences. I saw all my past lives, many lifetimes, all the negative lives as well as positive lives and spiritual lives. At least last 10 lifetimes I was in the path of spirituality. These 10 lifetimes I explored. I was into path of spirituality, and I was actually imparting this wisdom to many people, many lifetimes. So, and I've seen all the baggage also, karmic baggage. My awakened wisdom within me shown me everything that is I need to look at. So we will look at the life in a larger, bigger picture, bigger framework,
There I understood that yes, this lifetime I have a purpose, a greater purpose to fulfill. This lifetime is actually is meant to serve, meant to share, meant to spread this wisdom of the soul to everyone. That's how we were so inspired. Dr. Lakshmi is my companion along the way from many lifetimes. So we decided we going to together going to create this spiritual university called Quantum Life University. We created, and it's in the first phase now. It's going to spread more. Shastriji introduced initially about the Soul Coach program. That's what in the initial what we started doing is sharing this wisdom through designing this beautiful program like a master's program like the Soul Coach program. It's a very transformational. So friends, right now, which is coming out of you, your sincere practice of meditation, and then karuna also comes out of you. Karuna is sharing your fragrance of your soul. We can't keep quiet. Once I felt so full in meditation, I thought, now I am so full. Now I will die if I don't share. The flower feels so suffocated. The clouds will feel very, very heavy if they don't rain. If the flower is not sharing the fragrance, it feels very suffocated. The flower need to share the fragrance. That's why any awakened being starts sharing the wisdom. I'm just sharing my experiences with your friends. All of you are awakened beings. I know you are such a beautiful masters. In this present situation, don't you think Corona is teaching us about Prajna and Karuna? Because this situation has brought out so many fears in the humanity. The fear of death, the fear of what's going to happen tomorrow, the fear of not having enough food, fear of losing loved ones. We have never thought about this, but so many fears suddenly started coming up. So most of us, we don't really know anything about ourselves. We just know, we think we know everything. But this situation has brought so many things from inside, and this is such a beautiful opportunity for everyone to meditate, to go within, and to become, wise, and to find about yourself, to work on yourself. And at the same time, I strongly feel that Corona has come to teach us about Karuna. So it's also at this moment, there's so much of sharing everywhere. You want to help everybody, you want to give food, you want to teach meditation, so much of compassion everywhere. So, friends, I take this opportunity to give this message on this occasion that the humanity always thought that it is separate from nature. It is thought that the humans are the masters of the nature. No, friends. The human is only a child of the nature, not the owner of the nature. So when you always separate yourself from the nature, and when you think, what can I do for nature? Then you have separated yourself from the nature. You're part of that nature. You are an integral part of that nature. So when you suffer, when you cause suffering to others, you also suffer. So I just want to share this case study about somebody we met in Vietnam, and this person came to us, and he just was telling us that there's so many problems in my life. I'm losing all the money. There's so many health problems in my family. My children are suffering. So we just asked him, what do you do for your living? So then he said, I run a dog meat restaurant. Dog meat. Dog meat. So in that restaurant, they exclusively serve dog meat. They kill dogs and they serve dog meat. So we just told him, see what you're doing. Is it in synchronicity with the nature? Is it beneficial to the nature? Are you in alignment with the nature? He said, no. But what do? I need money. So friends, here we just need to understand that what you eat, what you do, and even your profession, it should be in alignment with the harmony. It should create
harmony, which we should coexist with the nature. So this is such a beautiful example, because whatever is doing, it's against the nature. We just can't kill animals just because we want to earn more money. We just can't kill animals just because we want food. We just can't kill animals because we want leather sofas or leather upholstery. So friends, we just need to feel. It's a matter of feeling. It's not a matter of debate or arguments, because it's not something to do with your logical mind. It is something you have to feel from your heart. So we have to just feel it in this present situation, because this present situation is really, really teaching us about that, about compassion, about caring for our mother nature, about understanding that we are integral part of this nature. Whatever is happening within will happen outside. Whatever is happening outside, we also need to reflect from within, friends. So meditation is the solution. If you meditate long enough, if you meditate deep enough, then it is impossible. It is impossible to kill anybody for food or for any other purpose. It is impossible. That's really a beautiful message from Dr. Lakshmi, that just our meditation practice itself can make us so compassionate. And really, dear friends, we need this is the time that has come, and for all of us to really create the ripple of these beautiful energies, and which can spread across the globe, and which in these uncertain moments, and which can really help. Many can become meditators, many can become vegetarians. When we say Dhyana Jagat and Sakahara Jagat, it really is possible when we really do it, when we do our dharma, whatever that we know, we can share that information to the world. And we're going to meditate for some time, Yes. for at least for 5 minutes, a guided meditation we want to conduct, dear friends. Let's sit down in a comfortable posture, with your interlocking your fingers and crossing your feet, closing your eyes, and I would like you to completely relax your body. Bring your attention, awareness to your body. Your body is a beautiful temple, a sacred temple. And feel what your body is feeling right now. Relax, adjust your body parts, give all the comfort to your body right now. Relax it fully. Reach to a deep, comfortable stage where your body is completely relaxed. From top of the head to the bottom of your feet, allow these waves of relaxation to flow down and down into your body parts. At the same moment, you can also pay attention to your breathing, your in-breath and out-breath. This is called mindful breathing, breath awareness, anapanasati meditation. Notice your in-breath, notice your out-breath. Your normal natural breath need to be observed. If the breath is long and deep, let it be long and deep. The breath is short and shallow, let it be. We don't need to try to change the rhythm of the breath. Just observe it. With each breath, allow yourself to connect to that inner silence, that inner stillness. With each breath, allow yourself to connect to your essence, your natural state. Just be totally one with your breathing.
one with your feelings that you have right now in this moment. One with whatever that's rising from within. When you're watching the breath, the mind is becoming empty and silent. Notice that empty mind, the silent mind, the mind which is becoming utterly silent, is what Buddha talked about. When we are observing the breath, first thing that we realize is the silence, void, shunya, manas shunya, mano shunya, mind becoming empty. Just embrace that emptiness of the mind. In this state of silence, allow yourself to connect to your inner wisdom, that compassion, that prajna and karuna. This is your natural state. This is your true state. Everyone is Buddha. Everyone is a master. Everyone is a divine being, a spiritual being, without exception. Only thing is, we have forgotten about it. Right now, give all the attention through this, observing the breathing and observing the great silence of the mind. Look deeply into your own self. It's as if you are journeying, crossing all the doors from the outer temple, the gate of the outer temple, entering into the inner sanctum, where you find the most compassionate and wise deity, the god, goddess, the same metaphor, the same symbolism. We also, through the silence, we make this inner journey. Go deep within through the silence and support me. We're going to awaken that wisdom within. We realize that God is not anywhere outside. So far I search for God anywhere outside of me. God is within me, and Buddha is within me, wisdom is within me. And let's completely, as we enter into the innermost chamber, like in a temple, how we enter into the inner sanctum, sanctum sanctorium, there you become that. In this divine states of consciousness, allow yourself to breathe in all that pain, all that suffering we have caused to all the animals, to all the plants, to all the minerals as human race. Just breathe in all the pain, all that suffering that we have inflicted on the Mother Earth collectively. And let this pain and suffering be completely transformed in our being, in our heart, completely be transformed into peace, love, harmony. As you awaken this inner wisdom, completely embrace all the past. Your past where you hurt someone, you caused pain to someone, with animals, or directly or indirectly you cause trouble to others. Embrace the past completely. Let the guilt be transformed into greater understanding. This guilt belongs to the past. It is not serving any purpose anymore. With this greater realization right now, in this great silence within, as we embrace this wisdom within, awaken the wisdom within, I would like you to completely now transform that past into great
compassion and love. Transform that guilt into compassion, and with each out breath, let that compassion spread everywhere, encircling the whole earth. Let this compassion reach to each and every plant, each and every animal, each and every mineral, to each and every human on this planet Earth. Just be completely centered in your inner being. In this inner being, this beautiful lotus of wisdom blooming, unfolding all its petals, and from that the fragrance, the compassion rising. There are many moments in your life when you have experienced compassion. From a stranger who supported you, who made you happy in that moment, or you have demonstrated yourself certain moments that compassion rising within your heart. And remember those beautiful moments when you have lived in your life the compassion in your heart for animals, plants, minerals, children, and the whole humanity was there in you. And let's awaken it fully and let's spread throughout the globe now. And in this higher states of consciousness, realizing that you are part of the nature and acknowledging your role as part of this Mother Earth from this moment onwards, you'll be able to live your life with compassion. You'll be able to live your life respecting all the other beings. In this moment, in this great silence, allow the deeper insights to rise. Allow the deeper insights to rise. Last 2 minutes, just be. Welcome all the insights, the deeper realizations that comes from this 0 point field, from your pure awareness. Sometimes these inner insights and inner realizations can come up in the form of a vision, images, or words coming into your head, or its feelings. It is also inner knowingness. Just invite, be in this open space. Another 1.5 minutes. Let each and every cell in your body vibrate with this compassion. Let each and every cell in your body reverberate with this feeling. Sarve Jana Sukhino Bhava. Sarve Jana Sukhino Bhava. Sarve Jana Sukhino Bhava. Sarva Prana Koti Sukhino Bhava. Sarva Prana Koti Sukhino Bhava. Sarva Prana Koti Sukhino Bhava. Let there be peace on this planet. Let there be harmony on this planet. Another 1 minute, dear friends. Just be. Let's experience this beingness, being in this moment, being still, being wise, being compassionate, being all that is. We are not separate beings, we are all connected. The entire universe is connected.
Just be that. 30 seconds left. And say thank you, thank you, thank you to all the animals, to all the plants, to all the minerals, to all the humans, to the Mother Earth for holding us, for supporting us. Thank you. Thank you. This moment, slowly you can place your hands on your eyes, and touching your eyelids with the fingertips. Few seconds, and let us open our eyes, come into waking state of consciousness with a beautiful smile, with wisdom and compassion. Ragna and Haruna. Welcome back, friends. It's wonderful, wonderful. It's wonderful that we all could meditate together. Thank you, Newton साहब and Lakshmi madam. आपने आपका पूर्व विद्वत को, आपका पूरा नॉलेज को बहुत ही संक्षिप्त में लेस देन 1 आवर बताना पड़ा है. हम जरूर मौका मिलेगा और बहुत बार हम लोगों ने ऐसा सेशंस कंडक्ट करेंगे. अभी सब लोगों को टेक्नोलॉजी पता चल गया है. हम लोगों ने बगैर घर में मूव करे बिना हाउ कैन वी डू दिस इवेंट, एंड बहुत सौभाग्य की बात है टुडे आपको लाइव में, जब आप इंग्लिश और हिंदी में बोल रहे हैं, from Tamil people are getting in Tamil. Oh. Kannada, they are getting automatically, they are getting online transfer also the local language. So PMC Tamil also people are watching, PMC Kannada also people are watching, and Telugu people are also watching, and QLU Global is also watching, PSSM Global is also watching. So we are trying to do as much reach as possible. Really, sir, the Karuna has given a Corona, we are converting into Karuna only. So it's given a great opportunity for all of us to be virtually connected across the globe. And this is the 26th day. And we have done, you are doing a fantastic job and given us an opportunity to share your knowledge once again to all the people who are watching today. And a new crowd. So every day, new people are going. We were sitting from the house. There's a Patri sir will be telling, no, sitting in the house, people, we are all doing the prachara. And thank you. Thank you, Shastri ji, for giving us this opportunity. And thank you, my dear friends. Thank you, the whole PSSM movement team. Thank you. Thank you. And please, you can absorb all the knowledge that's going to be shared from other masters today. Ilona Selke and Anand Karunesh, Hitesh and Pallavi, and I think there are a few more. Anil Bharati ji. Anil Bharati ji. Yeah. Thank you. Thank you, Shastri ji, for your really, I applaud, appreciate all your efforts. It's always, it's a very heartening, very beautiful. Thank you, sir. Namaskar. All the pyramid masters, just stay tuned. In couple of seconds, we are going to have the next speaker, Ayana Silki. Before she is going to come, our young master, Charu, is going to take over as co-host from me. Before that, I would like to make 1 or 2 announcements just to inform all of you that we are virtually connected. हम सभी virtually connected हैं. We know that PSSM is having multiple languages in multiple magazines we are having. In English, we have Spiritual India and Spiritual Science. It is Spiritual Science is a bi-monthly, and Spiritual India every day, 1 day Spiritual India, 1 day Spiritual Science will be coming 1 month. So in the similar line, people who are from Telugu, Dhyaan Jagat, in Telugu, it is a monthly magazine. Please subscribe for that. Also from those people who are from the North India, who are Hindi speaking from across, can be contributing and subscribing for Pyramid Dhyaan Jagat, because the live is happening now in Tamil. So you all know that people who are not only in Tamil Nadu, but also in other parts of India also can subscribe to Pyramid Dhyaan Prabhanjanam. The people who are from Karnataka, they can be subscribing it to Dhyana Kasturi. So all these magazines are in-house magazines
from PSSM. In addition to that, you are aware that North India, we are doing the hosting for the first time for this digital Dhyaan Yagna. So it is a new channel which is young, in around 4 to 5 months old. Please kindly subscribe by using the bell icon while you are watching. Also, you can do that. Inform all your friends. In the similar line, other channels are also there. If you are from Tamil Nadu, PMC Tamil is there. You can subscribe with by putting on to the bell icon. If it is in Pyramid Valley International, subscribe. You can put it on the bell icon. Bell icon is a must, so that whatever is the program is happening, you will automatically get the notifications. And thank you very much. I am handing over thing to Charu, and Charu, please kindly take over and continue with IRSLK. Thank you, thank you, thank you. I'll be joining at the end of the session for concluding that. Please enjoy Ayana Silky session with the hosting of Charu. Thank you, thank you, thank you. Thank you. I'm waiting for the co-host to introduce us. Yes, thank you. Thank you so much, Shasti sir, and welcome, Vilona Selki. Thank you. We are so grateful to have you here today. Before I begin your session, I'll just introduce you a little bit to our audience. And it is such a wondrous thing how these things are planned by the masters. So I had the privilege of meeting you in Bali in 2017 when Patri sir and pyramid masters from throughout the world had come to Suli Resort to soak in the energies of Bali. And that's where I met you and Don Paris. You had come there for a dinner one evening. And now again, April 2020, 3 years later, we meet like this once again. I am just grateful. So a little bit about our next speaker. Ilona Selke is an international best-selling author. She's a seminar leader, lecturer, musician, and CEO. Her books and teachings have been translated into English, German, French, Spanish, Chinese, Russian, Polish, Czechoslovakian, and Hindi. I hope I have all of these languages here. I'm not missing any out. Ilona and her husband are co-founders and directors of Living from Vision, a company committed to teaching about the holographic nature of the universe and how human consciousness can intentionally interact with the three-dimensional world. Powerful stuff. And since 1991, Ilona Selke and Don Paris have additionally studied the lives of dolphins and their natural habitats throughout the world. Through their natural skills, dolphins have exchanged telepathic messages with them, and which have formed the basis for her books, Wisdom of the Dolphins and Dolphins, Love and Destiny. Adventures and about dolphins and their key messages to humanity, about the spiritual nature of dolphins. And that is what we are here to learn from you, ma'am. So over to you now, eager to listen to what you have to share with all of us today. Thank you so much for your introduction, Charku. I don't know how to Chagru? Charu, yes. Charu. And to all the spiritual pyramid masters, and especially my gratitude goes out to Patrickji and all his longtime supporters. I'm talking to you from Bali right now. I put a background on. It's palm trees behind me in the vision, but it's actually right as I look. It just looks identical to what you see. And we are here by the ocean, and we have dolphins not too far from here. People come here to go see the dolphins. Today I'm going to talk to you about, and it was introduced and I was asked to talk about dolphins and the power of healing that dolphins have. And I will tie it in for you because Patrickji, also that's the one of the things that he introduced in one of the first magazines that there was an interview about, was my book, Wisdom of the Dolphins. And you know, I love how Patrickji says, be a master. It's not seek another master out so that you can, you know, glean information and adore them, but assume your own mastership. And really what Patrickji is doing is teaching all of us to assume the quantum truth that, and all religions really have said that, is
knock on the door of the universe, pray, express your needs, desires, and wishes, and your answers will be given. Now, in Buddhism, and a lot of meditators in the Pyramid Spiritual Society have Buddha as an icon of the meditating master, of becoming the Buddha. Probably already know how in Buddhism, they don't idealize. Hopefully, the idea was to take people away from idealizing someone else or a deity, but instead assuming the quality of the deity yourself. So if we think of Kuan Yin, a compassionate embodiment of beauty, wisdom, and such, or Lakshmi, or Saraswati, in the Buddhist idea, and that which goes along with what Patrick is saying, is be the Buddha, be Lakshmi, be Kuan Yin. And today I'm going to ask you to be the dolphin yourself and utilize one of the techniques that in Buddhism has been taught, which is, it's actually 2 steps. I'm going to guide us through a meditation where we learn, you know, the Akashic record. Yeah, you've heard of, and it's like, well, how do I read the Akashic record, right? You become the very thing that you want to have knowledge about. You become the very thing that you want to gain knowledge about. So I'm going to guide us into becoming or looking through the eyes of a dolphin. And I will ask you then to discover for yourself what you see from that perspective. And it goes along with that. Become the Lakshmi, become Saraswati, become Kuan Yin, or become the Buddha, be the quality of whatever it is that you want to maybe ask a favor of. Whereas instead of praying and begging, we need to learn that whatever we occupy within ourselves is what we become. Our consciousness and our focus turns the lens onto the very thing and then becomes that which we wish to know about. The knower and the known become one in the knowing. So today I'm going to take you on a journey that occupies 2 principles that you can find in quantum physics as well as in Buddhism. One is to become the object of the known. So you become the knowing, the informational field, the understanding, and the wisdom, and you embody that quality. And number 2, equally important in one of the scriptures in Tantric Buddhism, which is written in some sacred texts, the fastest way to enlightenment is to merge 2 into 1. Merging 2 into 1 eliminates separation, but creates overlapping unity. And the unity becomes the singular I with which we then become the entire universe. It's in the moment that you manage to merge your consciousness with another and enter the space that transcends duality, that you enter singularity and enter the dimension increasingly of all that is. So although I'm going to take you on a journey to experience the ocean as you see behind me, dolphins, I take you on a journey to encounter a dolphin. I invite you to imagine a dolphin, which is, and I'll give you a little bit of scientific background as to why dolphins are amazing creatures. The Greeks used to call them the angels of the sea, the angels of the oceans. The angels, because they have a higher capacity than what we would assume they have, thinking of them only as an animal.
Once I've explained that to you, I take you on that journey to go meet a dolphin, to merge with the dolphin, and then to look through the dolphin's eye back at yourself so that you can see the difference of what it feels like when you shift your perspective from internal to another to see back at yourself. Yeah? So, this is what we're going to talk about today. This is the journey I take you. It's experiential. You get to close your eyes, you get to go into meditation. But to tell you a little bit as to why we even pick a dolphin, I will give you a little bit of background knowledge on some of their abilities. Now, dolphins' brains also have a neocortex, the gray matter on the outside of the brain, which our current modern scientists associate with abstract thinking, and the neocortex, the newest part of the brain, even the frontal part of the brain is the abstract thinking ability, is larger. And the gray matter is what we consider the thinking brain. See, the brain stem is the primal, primitive brain, which all of us creatures that are alive, including salamanders, we have in common. It's where we fight and flight from. It's where we have wars from. It's where we say it's me first and second somebody else. It's when we contract back to that old way that we are getting angry, upset, and fight, or we leave the scene and flee. When we're there, and that happens sometimes to all of us, and we get into a situation where we get afraid or we get upset, we need to realize that the old brain is active. The next level of the brain, it's a multi-brain function, is the mammalian brain. All of us are mammals. All of us are breastfed, including the dolphins. Dolphins are mammals. They're born live underwater after being carried for, depending on the species, approximately 1 year. The babies then suck the milk from the mom and are suckled for a couple of years. They stay right with the mom and with the aunties, and they have a kindergarten, and they have aunties teaching the little ones. The moms sometimes get to take a little bit of a rest, and they develop communication skills. They each have a whistle name, a signature sound, so that dolphins know each other by name, and they develop emotional bonds. Now, that's a mammalian function. It's a bonding thing. It takes nurturing to raise the little one up. And when we, in a minute, go into the mind of a dolphin, we will become the subject and the object, and we spin around. We can equally switch. I can become a dolphin can jump into me. We can take turns. We are a very flexible universe, but we can then go into unity. And as we unify, we enter and transcend that which creates duality and enter unity, which is another aspect that's which I said Tantric Buddhism says is the shortest way to enlightenment is to bring two into one. Now, dolphins, whose brain mass is about 1,600 grams. I'm talking about the dolphin that maybe you know. We had a dolphin show when I was young. It was called Flipper, and it was about this very intelligent dolphin. The dolphin was trained by Rick O'Barry, a man that I communicate with, and he came to our dolphin research boat, which Dawn and I had for 10 years in Florida, and visited with us on our boat. He trained the dolphin, but it was actually 5 dolphins in captivity. What he learned from it was that they are so intelligent that he dedicated the rest of his life to seek liberation of captive dolphins, not using dolphins for the amusement, but to honor and respect them. And because of some of his work, and because by God's grace, India was so smart as to declare dolphins having equal to human rights and no longer is permitting swimming tanks. Now, I don't know if that is outdating and closing all of them. This was about 2 years ago. This was great worldwide news that India was so
wise as to give dolphins that rank equal to human rights. Now, I was friends with Dr. John Lilly. He was kind enough to give me also a quote for my book, Wisdom of the Dolphins. He measured their intelligence and gave them exercises. When Shauru introduced me, she said they gave me telepathic messages. I want to tell you just a little brief example. I befriended the co-researcher of Dr. John Lilly, who was a neuroscientist, and he measured brain activity. And because of him, we know how many layers of gray matter they have. They actually, when you stretch out the gray matter in a square meter, just stretch it out over an area there, the dolphins' gray matter. And I'm talking about the Tertia dolphins, the ones that look like Flipper, who have that long round snout, the one that we normally think of as being the dolphin, has more gray matter than humans. Their brain, as I said, is 1,600 grams. Did you know that humans only have 1,200 grams of brain? In my book, that's a third more. That's 30% more brain mass. That is, and people say, well, they use more acoustics. Well, they can actually send a picture that looks like a video to each other. Some of the research that was done, and I befriended Roberta Goodman, who was working with Dr. John Lilly, and she did telepathic experiments with dolphins. She taught them to come up with their own training materials. And so what dolphins have shown her I narrated it in my book, so you may want to read my book. You can get my book for free as a PDF on my website, ilonaselke.online, as well as livingfromvision.com. You can download it as for a PDF. I know it's also been in print in India, so you can also get it in India. But the essence of the research is that dolphins can mimic human language. They can even say things that are meaningful, but humans cannot mimic dolphin language, which is why I want to invite you today to enter a dolphin's mind, because if we're looking for masters, certainly dolphins will qualify. They are very telepathic. Frank Robson wrote a book, In the Dolphin's Mind, trained dolphins in dolphinariums until he also dedicated his life to release dolphins from captivity. And what he found out is that, and this will be interesting for all of you who are parents, the dolphin trainer that thought that a dolphin is dumb and it's just an animal, the dolphin would behave just like that. You said, what? Jump? I don't know. Did I get that? Maybe. They starved the dolphins to make them jump because they said, if you don't do what I want you to do, you won't get a fish. Which is, a lot of dolphin research centers have done that, different places, to make the dolphins cooperate. Because dolphins are very independent. But then, like one experiment Roberta one I will share you was doing, is she separated the dolphins into 2 tanks and taught one dolphin a trick in one tank. Then she tried to do the same trick in the other tank, and the dolphin in the other tank knew the answer without being trained, because the other one told him, hey, if you do this, you get a fish, Frank Robson then also worked with very highly intelligent people who projected their thoughts. What he did is he set pictures in the dolphin's mind. Instead of training with a fish, he just gave them love. Remember, parents? So what he envisioned is the end result of what he wanted them to do. I'm going to give you, this is a quantum technique of creating reality. You envision the end result of what you want to experience. If you want to have the knowledge of something, be the knowledge. If you want the enlightenment, move into that state. If you want to become a new aspect of yourself, move into that every day for 5 minutes, whether it's better health, better finances, or more enlightenment, whatever it is. Move
into the space of what you wish to become. And Frank Robson did that in his book. He describes how he just visualized a red ball above the water and said, jump and touch the red ball to the dolphin in their minds. And instead of giving them fish as a reward, he gave them love. So he just visualized what he wanted them to do. So if you want your children to be nice and you be nice to your children, just try that for a month. Visualize yourself being harmonious with your beloved children or your spouse or your family. Pre-create the blueprint of your reality first inside, because that's what you will see outside, which is essentially the main message that dolphins shared with me. When I went swimming with them, I was very afraid. And it was like, no, no, no. And they said that I had to be in the end result picture. And then I said, okay, I can do this. And I visualized having them come close to me, yeah? But my limit of close was actually a little bit over a meter. Whereas my husband, a man, he's like, oh, I think 20 centimeters is far enough. So they would come 20 centimeters close to him and 1 meter far away from me. Well, they honor, and all of life honors what we feel and anticipate and expect. I want you to remember this. Whoever and whatever is outside of you reacts and responds to your unconscious request of meeting your needs. We not always have positive expectations. We also have insecurities, unconscious negative expectations. So we need to learn how to elevate our experience into a fulfilled future. So Dr. John Lilly worked with Roberta Goodman, and I worked with her for decades. We were neighbors. Then I moved to Hawaii just to be closer. Swim with dolphins. Don and I lived there for 12 years. We had a dolphin boat in Florida and swam with dolphins, I would say 1,000 hours at least underwater. And I experimented with telepathy. And the message I want to have you experiment on your own right now is one I want to guide you in a meditation to discover some of that yourself. And remember, a dolphin, an angel, Kuan Yin, Lakshmi, any deity has a quality that we can become. We can become the Buddha, like Patriji says, become the Buddha and enter into the field of the fulfillment of that which you are looking for. And when the universe gives you an answer, learn from the feedback. After I saw that the dolphins were 1 meter away from me, but 20 centimeters away from my husband, I asked, well, what is the problem with me? And they said, well, you're afraid. And I'm like, yes, that's true. Because, underwater, they are 3 meters long, and that is very big underwater. It looks bigger. 3 meters is like a very big being. So I worked with my fear, and I learned to calm my fear, reduced the erratic energy that comes out of us when we are having that fear energy, and calmed myself and visualized feeling comfortable when they were closer. Now, I want all of you who have husbands and wives or beloveds, I want you to think about how comfortable are you with your partner, in which distance? Is it here for you? Are you comfortable when they're here? Do you want them here? Are you saying, like I did, I want the dolphins here, but in my energy body, subconsciously, I said, please don't come any closer than this, because otherwise I might be afraid. You understand? Take responsibility for whatever you are going to. There is somebody waiting. I don't know how to admit. Okay. When we have a partner, when we have children, we co-create reality. Of course, they are their own person as we are, but there is a resonance. And when whatever we experience, it is fitting with what our subconscious expresses. The moment
I reduced my anxiety or fear about the dolphins coming closer, even though I was saying to the dolphins, please come closer. The moment I realized that I was afraid if they are too close, they might bite me or something, the moment I handled my fear and allowed in my feeling body to have them come closer, they came this close. They came this close. And every year I wrote about it in my books. I wrote the experiments I did, and I said, I want 5 of them from the front, and they came. I said 1 to each side. I said 12 from the back. I said in the middle of them every time I set up different parameters, and they responded, but only to the degree that I was ready to receive. Now, for all of us who have relationships with our mates, partners, children, we reflect what we expect. So if you want to change the world around you, start changing the world within. The principle of be a Buddha is saying be what you want to see, and that's what you will then experience. So let me, on that note, take us into a guided meditation. I will turn on some music, and then you can, I hope that works. Charu, you can come in if the music, because we're talking Bali to India and the internet is whatever it is, if the music is interfering, can you text me? Sure. Chat, I will check. Okay, or you can just come in with an audio and say, Ilona, please turn up the music, and I'll do that. Yeah? Yeah. Okay. All right, thank you. So what I'd like to have us all do to encounter the union with another being that has the quality of being a higher than actual human developed consciousness. They don't play with bombs. They don't build things. They used to have 5 fingers. They reduced all that, and they created the capacity in their consciousness rather than in the fingers. And they live in a world that is higher vibrating and no longer polluting the earth as that, right? Which is what we can get to. Entering into a virtual world, which is what we'll do now. Okay, I will start sharing the screen. Hold on 1 second, and I will start the music. Oops, nope, that wasn't the stop share, that one. It's on this one. Okay, hold on. Okay, now we go share screen, and that should be the YouTube one. Okay, there it goes, and I will turn on the music. And if this doesn't work, then Charo lets me. Yeah. I do. Advertisement. Sorry, guys. Skip ads. All right. All right. Can you hear that? All right. Can you hear some music, Charu? Not on my end right now. Okay. Maybe the volume. Okay. 1 second. Share computer sound. I have to click that on. Okay. I'm going to just ask you if the volume is okay. It should be okay at about right now. Is that okay? Or is the music too loud? It's okay? It's okay. Okay. All right. Well, I'd like you, even though you're seeing beautiful pictures, I'd like you to close your eyes. These are Tibetan healing music sounds. I'd like you to close your eyes. I'm going to take you on a journey into the ocean. So let's start out by doing a yogic breath for a minute. And you can do that by closing one nostril, breathing in, holding the breath, bringing light into your third eye, switching your finger and breathing out. All of you, I think, know the yogic breath because you're in India. In the West, I need to explain it. Okay? All right. I'll be quiet, and each one of us just breathes in light into your third eye, connecting with the breath and calmness of your breath. Bringing in light, strength, and calmness.
And you can breathe and do the yogic breath as long as you wish. And when you feel like you've had enough of the yogic breath, you can rest your hands in your lap. And in your mind, you can go to a beautiful, peaceful place in nature or in your mind. You can make it up. We will go to the beach in a little while, but wherever your place of peace takes you right now, it is something you can take with you every day. A place of peace and calm around you. So for a moment, just imagine your favorite place of peace. As you do, just notice the colors that surround you. Or if you're not as visual, maybe you just know where you are and you feel the wonderful feelings of this beautiful, peaceful place around you. As you walk deeper into your place of peace, let your feet touch the ground and notice what you feel beneath your feet. As you enter your peaceful place, just notice how wonderfully calm and soothing everything feels. And how your heart feels elated and grateful. The energy in your place of peace be even more brilliant or more soothing, more beautiful, more radiant, and step in even deeper than it already was before. And as we do, collectively, we're creating a radiant field of light that spreads around the planet. In India and all the states, other parts maybe around the world, we start, all of us, meeting in that great work of light, where we raise our presence, our consciousness to a level that brings more light into the noosphere around the planet. Your beauty, your peace is emanating into the sphere around the planet together as we are in this luminous sharing of calm. And we're helping that peace to emanate around the planet so that other souls that would like to be reminded of the beauty of their soul can now pick up on that vibration of yours and of ours. Finding their way home.
gridwork of light stabilizes and emanates continuously throughout our meditation. Let us now go on a journey to meet the dolphins. In your mind, you can go to a beautiful beach. Maybe the beach just like you saw before when I started talking, with white sand and water, palm trees. Into a cove of calm water. And as you go into the cove of calm water, you feel the sand underneath your feet and just notice how wonderful it feels to put your feet into the sand. And as you keep going, there is a flat stone, like a little tiny platform in the water. And you wade through the water onto that platform. And you sit on that flat stone, watching out over the beautiful water that surrounds you. And from a distance, you see there are dolphins coming straight towards you. Coming, swimming, straight to where you are sitting on the flat rock in the water. And the flat rock is your haven right now, and the dolphins are coming closer, and you feel like you want to stretch out your foot and stick one of your toes into the water. And one dolphin comes close to you, and with his big nose touches your toe in the water, and you touch back his rostrum, his nose. And in that moment, there is an energy current that comes from the dolphin up through your toe, up through your leg, up through your spine, into your head, into your mind, out into the universe, bringing wisdom and knowledge with that current. Just take a moment to allow that light, that current of information to come into you. How does the wisdom touch all of your cells, bursting through like a radiant energy beam, up through the center column of yourself, into the base of your brain, and out. And let the current of information touch all of your DNA. Let the current of the dolphin touch all of your cells and ignite an awakening of the DNA within you. How does it feel like when the DNA inside you opens its antenna to the cosmos? Like a mountain reaching into the sky, receiving the wisdom of the higher dimensions.
As you feel your dolphin, you feel the dolphin beckoning, wanting you to join the group, and you slide into the gentle water. And whether you know how to swim or not, it doesn't matter, because in this guided meditation, you are beyond the limits of time and space, and you can go on a journey with your dolphin underwater and join your group and have your dolphin friend side by side with you. And you dive down and imagine what it would be like if you swam right next to your dolphin friend in the blue turquoise water with the white sand underneath of you. What would you do? What would the dolphins do with you? And to your heart's desire, I want you to just take a moment and imagine playing underwater as imaginatively as you can. Do exactly or experiment with exactly what you would like to experiment with. And let the energy of the joy of the dolphins around you fill your heart, and let them meet you in exactly the way you would like to be met. And I'd like you to have your dolphins take you for a moment on a little excursion. Let them and let your dolphin friend swim next to you and let you see the world as he or she sees the world. And for a moment, just imagine letting your dolphin friend guide you. Is there something that he or she would like to let you know or show you? Take a moment in your own inner silence to go on a journey to something that your dolphin friend would like to let you see through his or her eyes. Something that is valuable for you to know, or that he or she would like to share. Go ahead and ask him or her to show you. How does he or she see the world? And let that wisdom, whatever it is, as a feeling, as an image, come to you and stay with you as something that guides you in your life or helps you to understand something.
And now, I'd like you to swim with your dolphin friend a little bit further, just you and your dolphin friend, just side by side. And as you do, you look at his or her one eye from one side as he or she looks at you. And then, as you feel the length and strength of your dolphin friend swimming beside you, also feel your own energy, how you're moving next to him or her. And for a moment, I'd like you to ask your dolphin friend if you, for a moment, could switch and slip into his or her mind and see the world through his or her eyes. Asking for his or her permission to join his or her consciousness. As you may be getting your permission accepted, I'd like you to just slip in your attention over into your dolphin friend, settling into how he or she feels swimming in the ocean. As you feel yourself being the dolphin yourself, I'd like you to look over to where you were swimming, so to speak, looking through the dolphin's eyes at yourself. As if you could feel or see or know, whichever way you appear to yourself. Just notice how it feels like, or it looks like, to look through the dolphin's eyes at yourself, swimming right next to the dolphin. You notice the energy that this human is emanating. Her hopes or his hopes. And maybe there are some areas around the body of yours that you're looking at which are brighter, which are already very luminous, radiating. Just take a look at which areas those are right now in this part of your life. Maybe there are some areas that are not as luminous, not as bright or brilliant or vibrant or energized. Just looking through your dolphin's eyes at yourself, at your energy body. Just notice
which areas around you, your body, are not as luminous or not as vibrant or not as brilliant. For some of you, you will see it in your mind's eye. For some, you will just know it or have a feeling for it. Is there something that this person needs? The person that you are swimming next to the dolphin, looking at that energy field. What would that person best need right now? Maybe a word comes to your mind, or maybe a feeling, an understanding, or maybe you just see a color. What does the human part of you need through the dolphin's eyes? And then I'd like you to imagine that the human part of you that is swimming next to the dolphin, and that the energy field is starting to develop exactly that, those qualities, that energy, that light that is still needed right now. Just feel the beauty of that fulfillment, if that were already coming about. In the presence of the dolphin, let yourself become exactly that energy that is needed right now, and let it fill your heart, energy, body, colors, feelings, symbols. And as you allow that to happen, I'd like you to slip back into your own being, swimming next to your dolphin, and feel what it feels like from the inside as you allow yourself to feel that completion that was still needed. As if you can allow that completion to now fill you from the inside out. What would that be like? Let that fulfillment touch every cell of your being and the DNA in every cell. Let the DNA change. Let your mental body, your emotional body adjust. Let your spiritual current adjust to that new expression of you. Whatever that you saw still needed to evolve when you were looking through your dolphin's eyes.
Are you willing to take this on every day? Are you willing to allow this energy into your life now? And are you willing to do whatever it takes in your inner self so that you indeed are going to express this energy in your daily life? Are you willing? Maybe you can make up a symbol, or you see a color or a shape in your mind, or if you don't, you can make something up that would represent this energy, this knowing, whatever it is for you. And as you embody this energy, I'd like you to open your eyes and look at your dolphin with this new energy inside of you now. And as if both of you are now raising your heads up, like almost as if your dolphin friend was with a tail down, with the head pointing up towards the stars, and you in the same position. Can you send your gratitude and feel the awe of having such a divine being with you right now? And I'd like to have you imagine both of you sending the ray of your consciousness up towards the center of creation, as if there's an inner pull towards the one center of all of creation. Both of you having that attraction or light streaming towards that singular central point of all that is. And as both of you are drawn towards that center, into the very core of all that is, notice how you're shifting from being a human to ever more just being that which is. And your dolphin friend is also raising his or her energy, rising, raising, as both of you are intrinsically drawn on that journey to the center of creation. Your wisdom, your dolphin's friend's wisdom, both your wisdom and luminosity start intermingling and dancing in the spiral ascension towards the one. In your own way and form, I want you to just take a minute of silence, of allowing yourself to connect into and through that which then is beyond time and space. Entering
the field that is beyond the journey of you and the dolphin. In your own way, connect with the source and become in your own way one. Pure center core of your essence and that of the dolphins now appear in the pure field of isness. No longer separate entities, but the one that is. If there is a form of prayer or wish, just ask in your own way to be guided, guarded, and protected, and always at the right place in the right time, and inspired to do the right thing in the form of a human directed from this immense inner source. And allow this field of oneness, of the divine, to operate within you always, and keeping the channels open whether you're conscious of it or not. And bring today's wisdom into all of your cells. And gently take your goodbyes from this unified field of consciousness, always knowing that you're always part of it, now descending back into your individuation as the human that has begun this journey earlier. And let also find yourself back in the cosmos, back on that stream of light, descending with you, your dolphin, cosmic traveler. Descend back into the ocean of stars, back to planet Earth, the waters, the mountains and the lakes, the oceans. Gently coming back to the place where you started your journey, in the cove with your dolphin friends. Thanking the dolphin that has accompanied you and wishing him farewell.
thanking him or her for the wisdom that you've gained today through his or her presence. Angels of the seas. And as you find yourself starting to breathe deeper, I'd like you to come back to that ocean water, swimming towards the ocean beach. Coming into that soft edge where the sand is greeting you. And you can lay in that sand and water for a moment, looking at the sky. Bring with you that memory of what you had seen through your dolphin eyes, the aspect that you wanted to strengthen in you. Maybe there was a symbol that could represent that, or you have just had a feeling or a knowing. And bring that wisdom, that new form of energy with you in your daily life. And remember it maybe every day for a few minutes in the mornings before you start your day. Go into your meditation and call up on that aspect of you that you would like to strengthen, that you saw through your dolphin friend's eyes. And in gratitude, say goodbye to your dolphins, maybe folding your hands in namaste. Breathing in deeper, letting them swim back into their world, and you coming back into yours. I'd like you to then gently stretch, breathing in deeply your namaste, going to the heavens or whatever way you wish. Bringing with you that nice energy, the beautiful new understanding, so that you can start living a new aspect of the information that you got through your dolphin friend's eyes. Namaste. All right, over to you, Charu. Thank you so much, Ilona Sarki, for this beautiful experience that you gave all of us today. What a true spiritual scientist. You said, put your intentions out there in the universe, experiment, experience, and learn from the feedback. Is that not the essence of spirituality? Is that not the essence of what we are all here to do today? So I thank you so much for helping us communicate with the angels of the seas, with our dolphin friends today. And thank you so much for this beautiful session that we had. Thank you so much for your time. Thank you so much. With that, dear friends, now it is time to interact with the next speaker, with the next master, Anil Bharti sir. I request the moderators to just, yes, he's here. Sir is here. I'll just introduce sir quickly, and then we'll head over to hear what he has to say, what he has to share with us today. Sri Anil Bharti is a senior pyramid master. He's the founder of Swami Vivekanand Dhyaan Pyramid in Ludhiana. It's a beautiful pyramid, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर pyramid है Ludhiana में. He's the president of Pyramid Spiritual Society Ludhiana, and he himself is a seasoned master. जिन्होंने खुद ध्यान किया, खुद ध्यान के अनुभव लिए, फिर उन्होंने संकल्प लिया कि वो ध्यान ऊर्जा, पिरामिड ऊर्जा को पूरे पंजाब में और पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे. So he has constructed 40 by 40 fully AC pyramids in Ludhiana. He has started multiple meditation sessions for the people.
He's an instrument to spread vegetarianism, pyramid energy, meditation, and spiritual science to all the people of Punjab. And interestingly, जो pyramid है पंजाब में, जो लुधियाना में pyramid है, this is the first ध्यान pyramid of North India. And he has organized Karuna Yatra for invoking compassion into people's hearts for animals. बहुत लगाव है इनका इस cause से. And he has also organized 2 meditation fests in Ludhiana so that the people of Punjab can be benefited with meditation. He has been giving sessions of meditation to schools, colleges, government bodies, universities, offices, clubs, to the police people to change their life. And through his efforts, thousands of people are now doing meditation in Punjab. Sir के बारे में जितना बोलो उतना कम है. तो इसी नोट पर मैं खुद का वार्तालाप थोड़ा आवाज धीमी करके सर से रिक्वेस्ट करूंगी. सर आप प्लीज अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटें. ओवर टू यू सर. PSSM के तमाम मास्टर्स को मेरी ओर से और विवेक परिवार की ओर से, विवेक मैत्रेय संघ की ओर से, रूहानी मिलन की ओर से, उसके तमाम सदस्यों की ओर से ध्यान भरा और बड़ा नमस्कार. द आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का विज्ञान और खुशियों को पाने की कला. दोस्तों, आप जानते हो कि मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि हम खुश रहने के लिए दुखी हैं. हमारे तमाम दुखों का जो कारण है, कहीं ना कहीं वो सुखों की हमारी चाह है, सुखों की हमारी एक तड़फ है. सुख पाने के लिए जो हमारी बेचैनियां हैं, वो ही कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख का कारण है. आज हम इसी सूत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे. दोस्तों, आपके लिए आज मेरे पास 2 खबरें हैं. पहली खबर यह है कि सुख तक पहुंचने की, खुशी तक पहुंचने की कोई चाबी नहीं है. लेकिन दूसरी और अच्छी खबर यह है कि वहां पर कोई ताला ही नहीं है. दरअसल द्वार ही सतत खुला रहता है. हम उन रास्तों की चर्चा करेंगे जो खुशियों के उस द्वार तक पहुंचते हैं, जो सुख के उस दरवाजे तक पहुंचते हैं. दोस्तों, प्रसन्नता मनुष्य के सहज और सरल स्वभाव का मूलभूत तत्व है, एक अभिन्न अंग है. बिना किसी प्रयत्न के प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये जो काबिलियत है, ये मनुष्य के स्वभाव का एक हिस्सा है. ये मनुष्य के का एक आत्म गुण है. सृष्टि की शुरुआत में वर्षों तक लोग इसी स्वभाव में जीते थे. पुरातन काल में हमारे ऋषि मुनि इसी अवस्था को जीते थे और इसी अवस्था में रहते थे. आत्ममस्त होते थे और परमानंद में रहते थे. जैसे जैसे मनुष्य बहिर्मुख हुआ, एक्सट्रोवर्ट हुआ, उसके भीतर भौतिक विकास की आकांक्षाएं बढ़ने लगी. जीवन में दौड़ भाग बढ़ गई, प्राथमिकताएं बदलने लगी और मनुष्य के जीवन में तनाव, अवसाद, दुख, कष्ट, पीड़ाएं, ये सब घर कर गई. और धीरे धीरे सरलता, सहजता और प्रसन्नता, ये तमाम गुण विदा होने लगे. अब मनुष्य ने भौतिक जगत से खुशियां पाने के उद्देश्य से नई नई तकनीकें ईजाद करी. इंद्रियों के विषयों का सुख भोगने के लिए
नए नए भोगों के तरीके इजाद किए गए। अभी करीब 7 वर्ष पहले, वर्ष 2013 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगोष्ठी हुई जिसमें यह विचार किया गया कि लोगों को खुशी का कॉन्सेप्ट समझाया जाए, यानी खुशी या हैप्पीनेस एक फैक्टर बन के रह गई। जो खुशी हमारे भीतर से स्वतः ही पैदा होती थी, जो हमारे स्वभाव का एक अंग थी, जो हमारा एक खुद का खजाना था, उसे पाने के लिए तरह तरह के आयोजन शुरू हो गए। 20 मार्च का दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में घोषित कर दिया गया। अपने खुद के खुशियों के खजाने को भूलकर मनुष्य बाहर भौतिक जगत में, व्यक्तियों में और वस्तुओं में खुशियों को खोजने लगा। खुशियों के इन्हीं भ्रामक साधनों का आज हम एक डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा क्या है? इंसान की सबसे बड़ी चाहत क्या है? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हर हाल में सुख पाना, आनंद पाना, खुशी पाना, यही मानव की जो है एक सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ी चाहत है, सबसे बड़ी कामना है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, हर व्यक्ति हर हाल में प्रसन्नता पाना चाहता है, खुश रहना चाहता है। हमारे इस तमाम कामों का, कर्मों का, कृत्यों का जो मूल मकसद है, जो लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं प्रसन्नता पाना है। यहां तक कि एक चोर अगर चोरी करता है, नशाखोर अगर नशा करता है, तो उसके इस काम का जो आधार है, उसके जो इस काम का लक्ष्य है, जो इसका प्रेरक तत्व है, वो भी कहीं ना कहीं खुशी पाने की, आनंद पाने की आकांक्षा ही है। अब ऐसा क्यों है? क्यों हर इंसान हर हाल में खुशी पाना चाहता है? इस बात को जरा गहराई से समझेंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, वो सब अपने मूल स्रोत की ओर जाना चाहते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसमें ही लय हो जाना चाहते हैं। अगर आप किसी ठोस वस्तु को ऊपर उछालते हैं, वो एकदम से वापस पृथ्वी की ओर आती है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व का ही एक अंश है, उसी की ओर आकर्षित होती है, उसी से मिलना चाहती है। सूर्य जल समुद्र से लेकर, सूर्य अपनी किरणों के ताप के बल पर, सूर्य अपनी किरणों के ताप के बल पर वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा समंदर से जल के कण लेकर ऊपर बादलों के माध्यम से पहाड़ों तक, पर्वतों तक पहुंचाता है। वो बादल जब पहाड़ों से टकराते हैं तो वर्षा के रूप में वही जल की बूंदें वापस पृथ्वी पे आती हैं, धरती पे आती हैं, और वो जल की बूंदें तब तक निरंतर बहती रहती हैं नदियों नालों के माध्यम से, जब तक कि वो वापस उस समंदर में नहीं मिल जाती जहां से उनकी उत्पत्ति हुई। अग्नि तत्व को ले। अग्नि तत्व जो है, अग्नि की जो लो है, अग्नि की जो लपटें हैं, वो निरंतर ऊपर की ओर उठती हैं, क्योंकि अग्नि का मूल स्रोत सूरज है। अग्नि तत्व का जो अंशी है वो सूरज है, और अंश हर हाल में अपने अंशी से मिलने के लिए बेताब है। इसी तरह दोस्तों, मानव मात्र जो है, जो प्राणी है, उसकी भी मूलभूत इच्छा यही है कि वो अपने मूल स्रोत में मिल जाए,
उससे एक हो जाए। इसीलिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, सुख की चाहना रखता है, सुख भी ऐसा जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा बना रहे, जो कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, माने सच्चा सुख, सत सुख। और दूसरे, वो सुख भी ज्ञान होशपूर्वक चाहता है। अब बेहोशी में माला कौन पहनना चाहेगा? यानी वो ऐसा सुख चाहता है, ऐसा आनंद चाहता है जो हमेशा बना रहे और जिसको वो होशपूर्वक, ज्ञानपूर्वक महसूस भी कर सके। हमारे वेद के ऋषियों ने परमात्मा को एक बहुत खूबसूरत नाम दिया, सच्चिदानंद। सत प्लस चित्त प्लस आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद। सत मायने जो हमेशा रहता है, जो कल था, आज है, कल भी रहेगा। नानक कहते हैं, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जो तीनों कालों में रहता है। और चित्त मायने चेतन, चैतन्य, ज्ञान स्वरूप, आनंद। ऐसा आनंद जो तीनों कालों में बना रहता है और जो ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए हर एक व्यक्ति सच्चिदानंद को पाना चाहता है, उस परमात्मा को पाना चाहता है। भारतीय दर्शन डंके की चोट पर यह घोषणा करता है कि मानव मात्र का जो चरम लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। ये परमात्मा ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं है, ये आपका अपना स्वभाव है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आपका साक्षात्कार होता है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा तो वह अवस्था है जहां तक आप पहुंचते हैं और अनंत से अभिभूत हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए ये जो यूनिवर्सल लॉ है कि हर एक तत्व अपने मूल स्रोत की ओर आकर्षित होता है, उसी से मिल जाना चाहता है। इसलिए हम, हर व्यक्ति, हर प्राणी हमेशा आनंद चाहता है, खुशी चाहता है, प्रसन्नता चाहता है। अब थोड़ी देर के लिए हम खुशियों के विज्ञान की चर्चा करते हैं और जो खुशियों के तथाकथित आधार हैं, जो तथाकथित खुशियों के साधन हैं, उनका एक डीएनए टेस्ट करते हैं। दोस्तों, सरल, सहज और कामना रहित मनुष्य का जो चित्त है वो हर वक्त आत्म आनंद से आह्लादित रहता है, अभिभूत रहता है, परिपूर्ण रहता है, लबरेज रहता है। एक कामना आती है, एक तृष्णा आती है। उस कामना का, उस तृष्णा का आवरण उस चित्त के भीतर उठ रही आनंद की तरंगों को ढक लेता है और मनुष्य को आनंद की अनुभूति कम हो जाती है और साथ ही साथ उस कामना को पूरा करने की जो इच्छा है उसकी वेदना भी शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे कामना को पूरा करने की तीव्रता बढ़ती है, उस आवरण की परत मोटी होती जाती है और मनुष्य के दुख बढ़ते जाते हैं। कभी समय से, संजोग से या प्रारब्ध से जब वो कामना, वो इच्छा, वो तृष्णा पूरी हो जाती है तो यकायक उस कामना का आवरण जिसने अंतस को, अंतःकरण को ढक रखा था, वो हट जाता है और भीतर से आनंद की लहरियां आती हैं, आनंद की एक प्रकार की
अनुभूति होती है फिर से। अब वो व्यक्ति ये समझता है कि मुझे इस कामना पूर्ति से या इस व्यक्ति से या इस वस्तु से आनंद मिला, सुख मिला। वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये तो उसका स्वयं का खोया हुआ सुख था जो अवरोधित हो गया था, वो पुनः उसको मिल गया है, बाहर से कुछ नहीं आया। इसको ऐसे समझें, एक श्वान अपने मुंह में एक हड्डी लिए हुए है और उस हड्डी को चूस रहा है। हड्डी का एक तीखा नुकीला हिस्सा उसके मुख में हल्का सा घाव कर देता है, वहां से खून रिसता है और वो श्वान उस खून का पान करता है, उसका रसपान करता है। श्वान ये समझता है कि ये रस हड्डी से आ रहा है, जबकि वास्तव में ये उसके खुद अपने खून का ही रस है जिसको वो अनुभव कर रहा है। और दोस्तों, यही विडंबना मानव के साथ भी है। आप देखिए कि हम अपने खुद के खुशियों के खजाने को भूलकर बाहर व्यक्तियों में और वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। एक महात्मा ने बहुत खूब कहा कि ये जो कामना है, ये जो वासना है, ये तृष्णा जो है, ये जो चाह है, ये ही हमारे दुखों का मूल कारण है और यही हमें अपने आत्म स्वरूप से दूर रखती है। हमें ऐसा आभास होता है कि हम अपने आत्म स्वरूप से दूर हैं इसी चाह के कारण। उन्होंने कहा कि चाह जो है, चाह चूड़ी चाह चमारी, चाह चूड़ी चाह चमारी, चाह नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। यानी प्राणी माइनस चाह इक्वल टू परमात्मा ब्रह्म। चाह माइनस प्राणी माइनस चाह इक्वल टू ब्रह्म। अब जैसे ही दोस्तों एक कामना पूरी होती है, फिर से आनंद की अनुभूति होती है, थोड़े समय के बाद फिर नई कामना पैदा हो जाती है, फिर उसका आवरण अंतःकरण पर पड़ता है, फिर समय पाकर वो आवरण हटता है, फिर पड़ता है। ये एक दुष्चक्र चल जाता है जो जन्मों जन्मों से चल रहा है। जब तक हम नहीं जागेंगे दोस्तों, ये दुष्चक्र चलता रहेगा। हम जब तक व्यक्तियों में और वस्तुओं में सुख ढूंढते रहेंगे, ये चक्कर हमेशा चलता ही रहेगा। इसको हम अपने दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ व्यवहारिक घटनाओं से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, ठंडे कमरे में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, आपकी डोरबेल बजती है, आप बाहर जाते हैं, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, बाहर तपती दोपहरी है, तपती धूप है, वो व्यक्ति पैदल चलकर आपके पास आया है। आप उसको अंदर लेके जाते हैं और आप देखते हैं कि ये व्यक्ति प्यासा होगा। आप उसके लिए शरबत लेके आते हैं, आप शरबत उसको भी पीने के लिए देते हैं, स्वयं भी शरबत पीते हैं। अब शरबत मेहमान ने भी पिया और हमने भी पिया। अब ये बताइए कि शरबत का सुख किसको ज्यादा मिलेगा, उस मेहमान को या हमें? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि उस मेहमान को, क्योंकि वो तपती दोपहरी में गर्मी में बाहर से आ रहा है, मैं तो पहले ही अंदर आराम से बैठा हुआ था। दोस्तों, ये कारण क्या है? एक जैसी वस्तु, एक जैसी क्वालिटी, एक जैसी मात्रा दोनों ने कंज्यूम की, लेकिन दोनों की सुख की मात्रा में, आनंद अनुभूति की मात्रा में ये अंतर क्यों?
अगर हम गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि उसकी प्यास ज्यादा थी और मेरी प्यास कम थी। जिसकी जितनी बड़ी प्यास उसको उतना बड़ा सुख। अब ये दोस्तों प्यास क्या है? प्यास एक प्रकार का दुख ही है ना, कष्ट है ना। इसका मतलब है जिसका जितना बड़ा दुख उसको उतना ज्यादा सुख, जिसका कम दुख उसको कम सुख। माने जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो प्यास जितनी मात्रा में दूर हुई उतनी मात्रा में उसको सुख अनुभव हुआ। तो यहां पे जो सुख का आधार है वो शरबत है या प्यास है? निश्चित रूप से प्यास है, क्योंकि जितनी बड़ी प्यास उतना बड़ा सुख। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक कच्चे मकान में रहने वाला व्यक्ति, झोंपड़े में रहने वाला व्यक्ति ये सपना देखता है कि उसका एक पक्का घर बन जाए, और एक चाल में रहने वाला व्यक्ति ये सपना लेता है कि उसको एक फ्लैट मिल जाए। वाला व्यक्ति ये सपना देखता है कि उसका एक बंगला बन जाए। अब ये तीनों की जो इच्छा है, तीनों की जो कामना है, जब तक ये कामना पूरी नहीं होती तो उन व्यक्तियों को सुख दे रही है या दुख? निश्चित रूप से दुख दे रही है। कामना उनको दुख दे रही है। अब जब तीनों का सपना पूरा हो गया, तीनों को अपने अपनी चाहत के घर मिल गए, तो उन तीनों के सुख में फर्क होगा या तीनों का सुख एक जैसा होगा? एक जैसा होगा। घर पाने की इच्छा और मेहनत की पीड़ा एक जैसी होने की वजह से पीड़ा के शमन, शांत होने का आनंद भी एक जैसा। जितनी पीड़ा उतना आनंद। तीनों की पीड़ा एक जैसी थी और तीनों की पीड़ा का शमन हुआ, तीनों की कामना पूरी हुई, तो उन तीनों को एक जैसा सुख मिला। यानी यहां पर देखिए कि घर की क्वालिटी में अंतर, घर की कीमत में अंतर, पर सुख एक जैसा, क्योंकि कामना की पीड़ा एक जैसी थी। तो यहां पे सुख का आधार घर या कामना की पूर्ति? कामना की पीड़ा। जितनी बड़ी पीड़ा उतना बड़ा सुख। यहां पीड़ा एक जैसी थी, सुख भी एक जैसा मिला। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़का लड़की कहीं बाग में मिलते हैं, बगीचे में मिलते हैं, आपस में मोहब्बत हो जाती है, कस्में खाई जाती हैं कि जीवन इकट्ठे बताएंगे। दोनों को लगता है कि हमें तो जन्नत मिल गई। शादी होती है, लड़की घर में आती है, घर में मंगल गीत गाए जाते हैं, सारा परिवार बहुत प्रसन्न, बहुत खुश, बहुत अच्छी बहू मिली है। 2 महीने पड़े, 4 महीने पड़े, सास को लगा कि ये बहू तो घर का काम नहीं करती। कहीं ना कहीं सास के माथे पे बल पड़ने शुरू हो गए। 2-4 महीने और पड़े, घर के बाकी सदस्य भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करने लगे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है। साल, 2 साल, 3 साल होते होते अब हस्बैंड को लगने लगा कि यार वाइफ में कहीं कमी है, वाइफ को लगा कि हस्बैंड में कहीं कमी है। अब वो हस्बैंड वाइफ को कहता है कि तूने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। जो 2 साल पहले ये कह रहा था कि हमें जन्नत मिल गई है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी जिंदगी नरक बन गई। अब देखिए, व्यक्ति वही, एक्टिविटीज भी सेम, लेकिन जैसे ही मन बदला सुख बदल गया। इसका मतलब सुख व्यक्ति में तो था नहीं, अगर व्यक्ति में होता तो बना रहता। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक 3,000 रुपये महीने
कमाने वाला व्यक्ति, उसकी लॉटरी निकलती है 50,000 रुपए, और एक 10,000 रुपए 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, उसकी लॉटरी निकलती है 1 लाख। अब इन दोनों में से खुशी ज्यादा किसको मिलेगी? जिसकी लॉटरी 50,000 की निकली है या जिसकी लाख रुपए की निकली है? निश्चित रूप से जो व्यक्ति 3,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसकी लॉटरी 50,000 रुपए की निकली है, वो ज्यादा सुख महसूस करेगा, वो ज्यादा खुशी महसूस करेगा, क्योंकि 50,000 रुपया कमाने के लिए उसे बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, इसलिए उसका सुख बड़ा होगा। दूसरा व्यक्ति जिसको हालांकि रुपया 1 लाख रुपया मिला, लेकिन उसको खुशी कम महसूस होगी, क्योंकि 1 लाख रुपया जो है उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो कामना है, पाने की जो इच्छा है, उसकी जो पीड़ा है, उससे वो बहुत कम है। उसको तो शायद 50 लाख रुपया अगर मिले तो उसका सुख उस व्यक्ति के बराबर होगा जो 3,000 रुपए कमा के 50,000 की लॉटरी जिसकी निकली है। अब यहां देखिए, साधन बड़ा और सुख छोटा, और साधन छोटा और सुख बड़ा, कैसी विसंगति है। अगर साधन में सुख होता तो जिसके पास बड़ा साधन था उसको बड़ा सुख मिलता, जिसको 1 लाख रुपया मिला उसको सुख ज्यादा मिलता, 4,000 वाले को कम मिलता। लेकिन साधन में तो सुख है ही नहीं। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, खासतौर पे रसगुल्ले। उसको रसगुल्ले खाने के लिए दिए जाते हैं, वो पहला रसगुल्ला खाता है, वाह जन्नत मिल गई, आनंद आ गया। दूसरा खाता है, थोड़ा कम सुख। तीसरा खाता है और कम सुख। चौथा खाता है और कम सुख। पांचवा खाता है, सुख खत्म हो गया। छठा खाता है, दुख शुरू हो गया। अब तो लगता है कि उल्टी आ जाएगी अगर एक और खाया तो। अब अगर रसगुल्ले में सुख था तो पहले से भी मिलता, दूसरे से भी उतना ही मिलता, तीसरे से भी मिलता जाता। लेकिन सुख रसगुल्ले में था नहीं। जो तृष्णा थी उसमें सुख था। जैसे जैसे उस तृष्णा की पूर्ति होती चली गई, तृष्णा का दर्द कम होता चला गया, सुख कम होता चला गया। और जब उसकी रसगुल्ले खाने की जो इच्छा थी, जो तृष्णा थी, वो खत्म हो गई, सुख भी आना बंद हो गया। और जब उसके बाद रसगुल्ला खाया तो सुख की बजाय दुख शुरू हो गया। अब आप देखिए कि इन तमाम अवस्थाओं में आपको कहीं व्यक्ति में या वस्तु में सुख नजर आया? जितना ज्यादा किसी का दर्द, उतना बड़ा उसको दर्द के शमन से सुख मिला। सही मायनों में पेन रिलीफ का प्रोसेस ही दुख बनकर रह गया है। सो एवरी मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट इज एक्चुअली अ पेन किलर रेमेडी। जितना हमारा दर्द कम होता जाता है, हमारी वासना कम होती जाती है, उतना हमें सुख मिलता है। अगर पेन किलर रेमेडी कोई हमने एंजॉयमेंट बोलना है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी की वजह से दवा लेने जाते हैं, या हमें कोई जख्म हो जाता है, हम मरहम पट्टी कराने जाते हैं, तो उसको भी फिर एंजॉयमेंट ही बोलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि सारे सुख व्यक्ति आधारित या वस्तु आधारित नहीं, बल्कि दुख आधारित होते हैं। अगर भौतिक सुखों को पाना है तो पहले दुखों को जमा करना पड़ता है, प्यास और तमन्नाओं से जूझना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसको हल्का करने का प्रोसेस खुशी बन पाएगा। ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है।
अब आप ये देखिए कि जब बचपन में छोटा बच्चा होता है तो खिलौने अच्छे लगते हैं, उसको लगता है कि खिलौनों में सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी खुशी है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो दोस्त अच्छे लगते हैं, दोस्तों में सुख नजर आता है। थोड़ा सा होश संभालता है तो नजरिया बदल जाता है। तब लगता है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है लाइफ की, वो सबसे बड़ा सुख है। डिग्री पाना, नौकरी पाना, बिजनेस को फैलाना, शादी करना, पत्नी बच्चे पैदा करना, तब इसी चीज में उसको सुख नजर आता है। थोड़ा और मैच्योर होता है तो लगता है कि नहीं, सोशल स्टेटस अच्छा हो, समाज में नाम हो, उसी में सुख है। ऐसा करते 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 जिंदगी बीत जाती है, उसके लिए सुख की परिभाषा बदलती रहती है। और जब बुजुर्ग होकर ऐसी अवस्था में आ जाता है, चलने फिरने लायक भी नहीं रहता, तब वो समझता है कि अब सच्चा सुख मुझे अपने परिवार में मिलेगा। और तब तक परिवार के सदस्य सुख पाने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चुके होते हैं, उनके पास समय नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों जिंदगी बीत जाती है। सारे भौतिक सुख दुख से इतने गहरे कनेक्टेड हैं कि जैसे ही दुख गायब होता है, सुख ऑटोमेटिकली दुख में कन्वर्ट हो जाता है। कितने संघर्षों के बाद क्षण भर का सुख और सहनी पड़ती है युगों की यातना। बार बार लगातार जीवन और मृत्यु की पीड़ा, कीड़े मकोड़े घास फूस बनकर पैरों तले रौंदे जाते हैं। पेड़ पौधे बनकर वर्षों वर्षों धूप में बारिश में खड़े रहते हैं। कुत्ते बिल्लियां बनकर, जंगली जानवर बनकर, पशु बनकर अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऐसा सुख कहां का सुख। और जिंदगी भर सुख के मायने बदलते रहे। ऐसा सुख डेंजरस नहीं है जिसके लिए आप जन्मों जन्मों से पीड़ा सहन कर रहे हैं, और सुख भी वो क्षण भर का। कैसा हो यदि सुख किसी व्यक्ति या वस्तु आधारित ना हो, हमारे अंदर से उभरता हो। कैसा हो यदि सुख काम, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाओं की प्रमाणाओं से आधार पर न हो, सच्चा हो, सहज हो, बिना किसी प्रयास के हो। कैसा हो कि सच्चा सुख क्षणिक न होकर सतत हो, निरंतर हो। ऐसा सुख मिले जिससे हम ऊब न जाएं। हमारी आत्मा में ऐसा सुख है दोस्त, जिससे कभी जी नहीं भरता। वो सुख हमारा स्वयं का है, वो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। और जिस दिन व्यक्तियों में और वस्तुओं में सुख का हमारा भ्रम टूट जाता है, उस दिन हमारा अपने अंतस में जाने का, अपने भीतर में जाने का रास्ता खुल जाता है। उस दिन कोई सदगुरु हमारे जीवन में आ जाता है। जैसे प्रातः स्मरणीय पूजनीय ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी पूरे विश्व भर में अपनी प्रेम और करुणा के संकल्प को विस्तार देते हुए संपूर्ण विश्व में ध्यान की ज्योति जगाए हुए हैं। उन्होंने ध्यान जगत की स्थापना का एक अभियान छेड़ रखा है। हमें प्रसन्नता है कि हम सब इस अभियान का हिस्सा है। पत्री सर का वरदस्त हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि हमें वो मार्ग उन्होंने दिखा दिया जहां से हमें सच्चा सुख मिल सकता है, जहां से हमें सच्ची खुशियां मिल सकती हैं। अपने इस कामिल मुर्शिद की शान में अपने कृतज्ञता के भाव व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा
कि जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने अपने आप को पहले मुकाम पर पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, खुदा खुद दोस्त बनकर चला आया। मेरी हर रात के चांद पर है नूर आपसे, मेरी हर सुबह की ओस का है गरूर आपसे। आपकी वजह से ही जिंदगी में जिंदगी है, लम्हे लम्हे में है मस्ती और सरूर आपसे। और आपके बिना जिंदगी की कल्पना ही नामुमकिन है। आपके बिना जिंदगी की कल्पना ही नामुमकिन है। बे इंतहा मोहब्बतें करते हैं हम हजूर आपसे। और जब कामिल मुर्शिद जिंदगी में आता है तो अपने भीतर उतरने का रास्ता बता देता है, साधना बता देता है, ध्यान समझा देता है। और फिर यात्रा शुरू होती है अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश को लांघते हुए आनंदमय कोश। तुरीयावस्था की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। आत्म रस जो है, आत्मा का जो आनंद है, उसके सामने दुनिया के तमाम रस फीके हैं। और तब व्यक्ति को समझ में आता है कि सुख और खुशी कामना की पूर्ति में, वासना की पूर्ति में, इच्छा की पूर्ति में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है। असली सुख स्वयं मेरे भीतर है और मैं उसको ध्यान के रास्ते से, ध्यान के माध्यम से पा सकता हूं। हमारे जीवन में हमें कई बार आत्म रस की, आत्म आनंद की हल्की हल्की झलकियां देखने को मिलती हैं। जब कभी सुबह हम उठते हैं तो बाहर अपनी खिड़की पे किसी सुंदर से पक्षी को पाते हैं। जब कोई नन्हा सा बच्चा हमें टच करके हमें जगाता है, या हम कहीं से आते हैं, कोई बच्चा हमें एकदम से हमारे साथ ऐसे लिपट जाता है, या कभी हम किसी की अचानक ऐसी सुंदर हंसी देखते हैं, सुंदर मुस्कुराहट देखते हैं, कोई अपनी मर्जी का गीत सुनते हैं, जब हम अकेले नृत्य कर रहे होते हैं, जब कोई हमें हमारा पुराना दोस्त, कोई पुराना साथी अचानक मिल जाता है, या जब हम रात में छत में बैठकर आसमान में, आकाश में तारों को फैला देखते हैं, या सुबह सूरज को उगते हुए, सूरज की लालिमा, अरुणिमा उसको देखते हैं, तो हमें कुछ क्षणों के लिए वो खुशी, वो आनंद महसूस होता है। उसका कारण भी ये है कि उस समय हमारा मन ठहर जाता है, स्तब्ध हो जाता है, विचार थम जाते हैं, रुक जाते हैं, और हम अपने आत्म स्वरूप के नजदीक हो जाते हैं। इसी वजह से हम उस समय आत्म आनंद की अनुभूति कर पाते हैं, आत्म रस को हम उस समय चख पाते हैं दोस्तों। यानी कि सुख जब भी आपको मिलेगा, आपके भीतर से मिलेगा, बाहर से कभी नहीं मिल सकता। इन घटनाओं में जब हमने किसी पक्षी को देखा, जब तारों को देखा, उस समय भी जो सुख हमें मिला वो हमारा सुख था, वो हमारे भीतर से हमें मिला। अब सही मायनों में दोस्तों, जो सुख है वो क्या है, इसको अब हम समझ चुके हैं। और जो भी हमें आनंद और सुख जो भी हमें जीवन में मिल रहा है, अगर हम उसकी विवेचना करें, उसको हम ध्यान से देखें, तो हम ये पाएंगे ये एक रहमत है हमारे ऊपर, एक वरदान है हमारे लिए जो हमें मिल रहा है। और इसलिए दोस्तों, खुशियों को हमेशा जीते रहें, खुशियों के पलों को ढूंढते रहें। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज से खुश रहो।
जो लौट के नहीं आने वाले, उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार क्यों, दूसरों की मुस्कान और ऊंची परवाज में खुश रहो। जिधर से गुजरो खुशियां बांटते चलो, आपकी राहों में उदास चेहरे भी मुस्कुरा उठे। दोस्तों, ऐसे खूबसूरत अंदाज में खुश रहो। कभी ये ना पूछना कि खुशी कब मिलती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें सब मिलता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, दरअसल खुश रहना ही रास्ता है। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं, अलबत्ता खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लिया करते हैं। जिंदगी हमें सारे गामा सुनाकर गुदगुदाती रहती है और हम कम वक्त उसे सारे गम समझकर कोसते रहते हैं। दोस्तों, पूरी शिद्दत से जियो, भरपूर जियो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मोहब्बत और मस्ती के जुनून से अपनी जिंदगी को सराबोर कर दो। मौज लो, हर रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। तो जिंदगी से आज कहीं ना कहीं जिंदगी का जज्बा नाराज है। जिंदगी को जिंदगी से लवरेज कर दो, जिंदगी को जिंदगी से लबालब भर दो। जिंदगी नाचने लगेगी, गाने लगेगी, झूमने लगेगी, मुस्कुराने लगेगी, हंसने हंसाने लगेगी, आपकी राहों में खुशियां बिछाने लगेगी और ऐसे मुकाम पर ले जाएगी जहां भीतर बाहर बहार होगी, मस्ती की बयार होगी, आनंद की फुहार होगी और कदम कदम पे खुशियों की बौछार होगी। यही खुशियों का फलसफा है दोस्तों, यही खुशियों का फलसफा है। दर्द को हंस हंस के निभाया जाए, गम के साए में भी मुस्कुराया जाए, और मौत जब तक न इजाजत मांगे, जश्न हर लम्हे का मनाया जाए। एक जलेबी ने मेरे कान में कहा कि खुद अपनी जिंदगी में जितना मर्जी उलझे रहो, पर दूसरों को खुशियां बांटते रहो। दोस्तों, मस्ती सीखनी है तो प्रेशर कुकर से सीखिए। ऊपर प्रेशर, नीचे आग, फिर भी मस्ती से सीटी बजाता है। वाकई दोस्तों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। सच में दोस्तों, हंसना भक्ति है, हंसाना मुक्ति है, मुस्कुराना तप है, खिलखिलाना जप है। मैं अक्सर अपने आप से कहता हूं कि अनिल, जब तुम रोते हो तो कितने कच्चे लगते हो, जब मुस्कुराते हो तो एक खूबसूरत से बच्चे लगते हो, जब हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब दूसरों को हंसाते हो तो दिल के एकदम सच्चे लगते हो। इसलिए खूब मुस्कुराइए, दिल खोलकर हंसिए, दिल पर अपने कोई बोझ मत रखिए, क्योंकि यही वो लम्हे हैं जो आपकी जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं, वरना बाकी वक्त तो हम सब बस जीने की रस्म निभाते हैं। दोस्तों, हमें जीने की रस्म नहीं निभानी, हमें ये समझना है कि अपनी खुशियों के जो जनक हैं वो हम खुद ही हैं। खुशियों को पैदा करने वाले हम खुद ही हैं, खुशियां हमारे भीतर ही हैं। खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, अरे आप ही तो हो अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। और आखिर में दोस्तों, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना, ये एक वरदान है हमारे जीवन में, एक बहुत बड़ी रहमत है हमारे जीवन में। ये फुर्सत के पल फिर नहीं मिलने वाले। ये एक समय है कि हम अपने साथ रह सकते हैं, अपनों के साथ रह सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने भीतर उतर सकते हैं, मौन का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, भीतर की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा दोस्तों, हमें इस अवसर का फायदा उठाना होगा। ये स्वर्ण अवसर है हमारे लिए। बाद में ये फुर्सत के लम्हे बहुत याद आएंगे। याद रखिएगा दोस्तों,
गुजर जाएगा ये दौरे तन्हाई, गुजर जाएगा ये दौरे तन्हाई, फिर इसी तन्हाई को तरस जाओगे। अभी शोर की तलब में हो, अभी शोर की तलब में हो, फिर सुकून को तड़प जाओगे। बेसब्र हो फुर्सत से आज, बेसब्र हो फुर्सत से आज, कल फुर्सत ही ना ढूंढ पाओगे। झांक लो अंदर अंधेरा है, झांक लो अंदर अंधेरा है, कल रोशनी में भटक जाओगे। ढूंढ लो खुद को मौका है, ढूंढ लो खुद को मौका है, फिर उस जहां में खो जाओगे। जागो जियो यही वक्त है, जागो जियो यही वक्त है, फिर अपने ख्वाबों में सो जाओगे। वो कल आएगा तो जरूर, वो कल आएगा तो जरूर, पर उस कल को फिर नहीं सुधार पाओगे। और मेरे दोस्त, घर गुजर गया या दौरे तन्हाई, घर गुजर गया या दौरे तन्हाई, तो ये मौका कहां से लाओगे। इसलिए इन पलों को जी लो, भरपूर जी लो मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, प्रेम करते रहिए, गीत गाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, उनकी सुनिए, कुछ अपने सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे शिकायतों के लम्हों को, छोटे छोटी खुशियों के मोती आप लुटाते रहिए। सांसों के साथ मस्ती करते रहिए, सांसों के साथ दोस्ती निभाते रहिए। ध्यान के समंदर में गहरे, बहुत गहरे उतर जाते रहिए। अपनी मंजिल की ओर बिंदास कदम बढ़ाते रहिए, अपने जीवन के हर पल को उत्सव बनाते रहिए। आपका दिन बहुत 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 शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतनी सारी चीजों के बारे में हम सबको एनलाइटन किया। आपने बताया सच्चा सुख वही है जो क्षणिक ना हो, तृष्णा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सत्य क्या है, और इस सब की खोज हम ध्यान के माध्यम से, सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती के माध्यम से हम कैसे ढूंढ सकते हैं उस सच्चे सुख को, उस आंतरिक सुख को। आज आपने हम सबको ये बताया। और आपने जो सबसे बेहतरीन बात आज कही वो है, एवरी मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट इज अ पेन किलर रेमेडी। ये बात तो हम गांठ बांध के सब याद कर लेंगे अब से, और अब से जब भी पेन किलर की जरूरत पड़ी हम सांसों की तरफ जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम अपने अगले स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे, मास्टर पल्लवी, जो यहाँ पर इंतजार कर रही हैं हमारा। मास्टर पल्लवी के बारे में 2 लाइनें बोलूंगी। मॉडरेटर्स से अनुरोध है कि उनको ऑनलाइन कर दें। मास्टर पल्लवी एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। वो पिछले 14 साल से ऊपर से ध्यान कर रही हैं। मेडिटेशन, वेजिटेरियनिज्म, स्पिरिचुअलिटी, सबको इसके माध्यम से एनलाइटन कर रही हैं। She is the author of the internationally best-selling book Conversations with महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है वो उन्होंने इस किताब के माध्यम से सबके साथ शेयर किया है, और ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है फिलहाल। She is the founder of Mad Buddhas. Mad Buddhas has had the privilege of bringing this event together today. So she's the founder of Mad Buddhas. It is a collective aimed at spreading right spirituality to the youth in creative ways through animation, design, and illustrations. She's also the managing director at MB Publishing House, India's first self-publishing platform dedicated to spread holistic living. She encourages people to engage in Swadhyay. स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व एंड अध्याय. So swa means self and adhyay means to study. So swadhyay means to study the self. And how do you study the self? By reading books by various spiritual masters, by various spiritual authors. That is swadhyay. So she encourages people to engage in swadhyay, reading right spiritual books, to dive deeper into the world of knowledge and spirituality. She regularly takes sessions in Gurgaon, Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh, Hyderabad, Pune, and other cities all over India. And she has become a beacon of hope for the youth, a beacon of inspiration for the youth.
to go ahead, to barge ahead, and to go for your higher soul calling. And that is something that she will be engaged in to speak with us here today. वो हमें कुछ equations of life के बारे में थोड़ा बताएंगी, because her background is actually in mathematics. She has a degree in mathematics. तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, and then she entered spirituality. I hope Master Pallavi is online, and we are just waiting for her. जैसे ही वो तैयार होंगी, माफी चाहती हूँ आप सबसे, आज हमें लंच ब्रेक को थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ा, काटना पड़ा बीच में, बिकॉज आगे के जो स्पीकर्स हैं ताकि सब टाइमली हो जाए. पर खैर अब ऑनलाइन का जमाना है, अब ये डिजिटल ध्यान यज्ञ है, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपना फोन, अपना डिजिटल डिवाइस, अपना आईपैड, लैपटॉप अपने सामने रख करके अपने लंच के साथ मास्टर पल्लवी के साथ आज आप लंच एंजॉय करें. आज उनके साथ बातचीत करें लंच के दौरान. हमेशा तो हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते हैं या लंच करते वक्त कुछ टीवी में देख लेते हैं, तो आज हम मास्टर पल्लवी के साथ एंगेज रहें, आज उनके साथ लंच करें, उनके साथ और थोड़ा ध्यान में, अनुभव में आंतरिक रूप से जाएं. और एक और रिक्वेस्ट है सबको, आप किसी भी स्पीकर के साथ अगर कोई क्वेश्चन है, आप किसी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स में, अगर आप जूम के द्वारा ऑनलाइन हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. हम सारे कमेंट्स कंपाइल कर रहे हैं. अगर वक्त की इजाजत हो तो हम जरूर अपने स्पीकर से वो क्वेश्चंस पूछेंगे, वरना हम उनको वो पहुंचा देंगे. एंड उनके कई सेशन होते हैं, सो वो आप उन स्पीकर्स को फॉलो कर सकते हैं और उन सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे. ये बोलते वक्त मैं एक बार बस अनुरोध करूंगी कि मास्टर पल्लवी अगर ऑनलाइन है तो मुझे एक संकेत दे दें, ताकि हम जो बागडोर है इस सेशन की उनको सौंप दे और वो आगे Hello, बात. Charu. हेलो मास्टर Hope पल्लवी. I'm audible. Yes, you are audible, Master Pallavi. We are all here waiting for you. And मैंने बहुत बोल लिया है, I will pass on the mic to you. Please share with us what you have to say. Over to you, ma'am. Thank you so much, Charu, for introduction. Hello, everyone, and very good afternoon. So today, let's have a lunch. And the speaker, I think we have a lot of beautiful speakers and the topics. And I feel, like Patriji says, जब तक प्याला खाली नहीं होगा, तब तक उसके अंदर कुछ पानी नहीं जाएगा. So let's meditate for 2 minutes so that I feel whatever I'm going to share my personal journey and the wisdom. So you can, put it well, and let's do it for 2 minutes. So please close your eyes wherever you are, even if you are doing a lunch, just for 2 minutes. Let's do Anapanasati, being with your breath. Let's make our mind empty for 2 minutes.
Last 10 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Slowly you can come out of meditation. Keep your hands on your eyes. So, hello friends. Today here I'm with one of the topics to share about the spiritual maths, the spiritual equations. Let me share the thought why I would like to have a session on this topic. Before coming into meditation, I was studying engineering in Chennai. And definitely I was having a more interest towards math. So that it led me to study engineering. But somehow after entering into the spirituality or meditation, it made me realize that is what not I'm here to do it. And I left my engineering and proceed as not living any physical terms, but proceed with some other degrees. So I proceeded with BSc and then MSc Math. So here, what happens into the process, at least it happened in case of me, and I feel many can vibrate. Before meditation, when we are into the completely physical terms, when we don't know what really the spirituality is, we always strive to attain something inside. And when the time comes, we get introduced to the spirituality. So where we call it as the law of karma, or the time has come for us to get enlightened or self-realized. So it happens in case of everyone. But before the process, there is a small gap when it happens, like when you are into the deep down process of self-realization, which drags you towards spirituality. So in that process, you're so much confused. You don't know what is right, what is wrong, what to do, what not to do. And in those confusions, inside me, I started hating my physical life, not liking my physical life, and not liking what I'm studying, what not liking what my people around me they do with me. So everything is altogether was disliking towards the life. And then I started feeling whatever the subject I study in my course or around me. So those are just has no meaning towards that. And it led me completely to have a calling towards more spiritual knowledge. And I got introduced to one of the pyramid master and got into PSSM. But in this journey, when I got introduced to PSSM and more knowledge about what is our soul plan, Akashic records, third eye experiences, so through that, I understood that the physical life is not something to dislike, or physical life is not something to hate for. So then I started seeing, for example, maths in every spiritual terms. How the equation of spirituality is always walked with the mathematical equations. So here, today I want to introduce the spiritual science, seeing towards how divine equations are made for us. So here, I would like to share some presentation where it can give a more simplified version of what I want to say. I think I request Charu if I can share the presentation. I think for that,
the moderator need to make me the co-host. Then only I can share the presentation. Is that possible? Okay, fine. Maybe they take some time. So let me proceed with the things. Like the first thing is that the spirituality means everything. So the student, I see students in the school or the +2 +1 classes. So they have different subjects. So when we introduce them the spirituality, so the first question they have from their angle is that how it will help in the studies. Because most of the people, when they get into spirituality or more introduction towards the spirituality, they may lose interest into the physical term. And I feel it may happen more or less in case of everyone, but later it get balanced as we get more understanding about the subject. So here spirituality means everything. So it may be maths or it may be science or it may be whatever exists right now on earth. It is born out of spirituality. So there are different equations we lead into the terms of maths. Like there are, we know the laws of spirituality. So how it exists into the spiritual mathematical equation. We know the thinking process. We know how we think. Hello, hello. Hope I'm audible. There's a disconnection into the network. Yes. So here, I would again request to the moderator to please allow me to be a co-host so that I can share the presentation on the screen. Thank you.
It's not allowing the screen. Okay, no issues. I'll continue. Yes. So where I was like, yeah. Let's move to the another point about maths equation. So math is an inevitable part of the spirituality and the universe, because we see maths into different terms, like even if we see the different shapes and different patterns into our body. So it includes the mathematical equations. So many math concepts surprisingly can map to the spiritual concepts. For example, the derivatives represent the spirit, and integrals sum up your spiritual travels into the soul. The eigenvalues can reveal the archetypes. The fractals represent the patterns of living. So this is the different equation, but there are so many connections exist into the spiritual maths. Maths is a model, but it is not the life itself. It is a part of it. Definitely powerful. We can map the world with it. It may not map out the joy, but it can give us the insight into how to find ourselves. For example, even when we lead the life, day-to-day issues. So everywhere we use the maths. But here I want to focus more on when we experience maths into different terms. So here one need to apply the spiritual science. So now how maths is moving toward the spiritual science, where I call it as a divine equations. So the simple divine equations of the spiritual math are like, suppose I'll just tell you one equation like minus plus minus is equal to minus. We know this when we add the minus minus, more negative energy. No amount of negative added to the negativity can ever produce the positive results. If we do bad things, bad will come back to us. We know these laws of the universe. So minus plus minus is always equal to minus. So when we go on adding the negative energy from the surroundings, so it will always result into the negative results. So then we have another equation is plus 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 is equal to always plus. So when we learn to stop focusing on the negative and begin instead to focus on the God and everything we are thankful for. So here, always we talk about to think positive, to be positive, to have a positive thoughts. So here, when we start being positive, the positive impacts always result into the positive terms and the positive result. And the more like, hope I'm audible. Yeah, the maths in a relationship. Now, how maths is helping us into the relationships? What are the mathematical, spiritual mathematical equation in terms of relationship? So the relationship uses the multiplication rule. Here we have a multiplication rule. So let's see how it exists. When we have 0 into 0 is equal to always 0. It means that you don't get something from nothing, right? And let's move to the next is that 1 into 0 is equal to always 0. So I'm just sharing the very simple terms. You definitely would have forgotten the maths, but these are the very fundamentals of maths, which are I'm correlating with the spiritual terms. So 1 into 0 is equal to 0. That means if one person is not present, then there is no relationship. So 1 by 2 into 1 is always equal to 1 by 2. So when one person is not present into the relationship, then the result of that relationship is always falls down. Ma'am, Miss Hope, Pallavi, sorry hope to I'm interrupt. audible. You are audible, ma'am, but your video is stuck. Okay, Yes, okay. yes. Now we can see you clearly. Please carry on. Actually, the presentation is not getting shared. Okay. Uh, Yeah, I think I'm there are getting. some issues because of that, but this is great. Please continue. So am I audible right now? You It's are audible. visible. You are visible now. Yes.
Okay, okay, fine. So let's move to the another equations. Is that the relationships? And now the next relationships, like you cannot find the wholeness by being with another person who is as a whole. That means 1 by 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 4. So when you cannot have that wholeness by being with another person who is already the whole. So when both people are only partially in the relationship, it falls apart very quickly. So strangely, we need the percentage or the relationship equation is at least 75% to 80% connection in our relationship for a bond to be strong enough to last. So these are different relationship equations when we see in day-to-day lives. We start judging a person, uh, to your wife or a husband or children. You start judging them, you start blaming them, and we also result into many of the actions which disrespect them. So this is how the para of equation moves around always into the multiplication. So now we will move to the next divine equations of spiritual math. So here we solve the spiritual math equations every day, so to understand the spiritual science. So now there are many people or students who are solving equations, but they are not able to vibrate with the thing that which universe is trying to give them a message. So I feel we really need to see these equation terms, and then we'll understand why it is not working in your case. In most of the time we feel always disrespected or not fairly enough treated. So these are all negative terms or a negative energy when we carry within ourselves, then we always get into the negative terms. So the every equation, every divine equation always includes the spiritual laws. So now I'll give you, I would like to share another equation which I feel is very important in order to understand the spiritual equations of maths or about the life, is that we see that we think miraculously. We always say to the people that always think miraculous. But many won't understand that it is still not helping me to just thinking miraculously. So where we are lacking? So we are lacking into the faith. So we need here another part is this faith. Miraculous thinking plus faith. When you have a faith in something, for example, you are keeping an intent of certain about particular thing to happen miraculously. So you are just carrying a thought. But if you don't have a faith into that particular thing to happen, so your faith works actually like an energy. It's like a driven energy to which push your thought to make it manifest. So another term which is very important in order to manifest the spiritual term is that when we have a miraculous thinking plus faith and plus the understanding of the spiritual laws. When we are not aware about the spiritual laws, we won't understand that why certain thought or a certain intent is not happening, from your end or in case of you. So I feel this is the equation of to make it the manifestation equation, you may call it as, or the miracles. So the equation is the miraculous thinking plus faith plus the understanding of the spiritual laws. So we know, I won't go right now into those terms of spiritual laws. So we know the laws of karma, we know the law of non-interference, we know the law of vibration, we know the law of attraction. So we need to deeply study all spiritual laws in order to manifest our miraculous thinking. So this is the divine equation I feel about when you would really like to have miracles in your life. So please follow the miraculous thinking patterns plus added is the faith and also the understanding of the spiritual laws. So these are the most I have extracted
to explain the spiritually how maths works, or how the universe is very well organized in terms of specifying certain patterns. Or even if we see the galaxy has also the part of spiritual maths, and everything. So everything which is there, which we introduce as a spirituality, is always comes with the knowledge and the wisdom of whatever the earth would like to give us into the gifts, in the form of gifts. So we really need to, specifically if we say about this difficult time which is globally getting faced, so we need to understand the value of time, the concept of time, which also falls into the divine equations of math. So when we are able to understand the value of time, like we are the spiritual seekers, so by sitting at home and understanding more, so last 21 days, more than 21 days, so I'm trying to focus that how I can utilize this time for myself. More and more meditation, more and more readings, and also enjoying some of the spiritual movies. So in any way, now we are definitely gifted with this time to understand the value of it, and more understand the equation value of this spiritual mathematical equation which is divine. And I feel every one of us is able to understand more because we are meditating, and everybody is trying to give the same message to the people around us, that meditation is the last call which we can have to tackle any situation in the life. So I feel we have more speakers coming up, and not to scatter their schedule with this time. So I request, if anybody has any questions to put forth, I would like to conclude my session and hand over to Hitesh, who is a wonderful speaker and a wonderful friend, who will come with a wonderful topic with the animals, the messages from animals. So please, everyone, hope you had done with your lunch, and now refresh to join his topic and his sessions. Thank you very much for joining me. Thank you so much, Master Pallavi, for this beautiful session. You spoke about the manifestation equation, about miraculous thinking, understanding of spiritual laws and faith. यहाँ पर मैं बड़ी संक्षिप्त रूप में ये मिराकुलस थिंकिंग को थोड़ा सा बताऊंगी, और जो आपने एक्सप्लेन किया है, ये तुलसी दल जो बुक है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उसमें ये कॉन्सेप्ट है, which is there are 4 types of thinking: disastrous thinking, negative thinking, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मिराकुलस थिंकिंग. जैसे हम सब सोचते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो हम एपेक्स पे हैं, हम पहुंच चुके हैं, हमें वो मिल गया है जो हम चाह रहे हैं, बट नो, देयर इज मिराकुलस थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग आल्सो, ऐसा सर ने हमें बताया है. एंड ही हैज सेड, एज इज योर थिंकिंग सो इज द रिजल्ट. सो अगर डिजास्टर्स थिंकिंग करोगे तो डिजास्टर्स रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर नेगेटिव थिंकिंग करोगे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, अगर पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट करोगे, और अगर मिराकुलस थिंकिंग करोगे तो मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे. तो आज पल्लवी मैम ने हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे मिराकुलस थिंकिंग को यूज करके हम अपनी लाइफ में मिराकुलस रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कंसिडरेट अबाउट द टाइम. And we move on to the next speaker now. So जैसे ये आज का DDY इवेंट है, ये भी जीवन की तरह एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, ये एक रिले रेस है, जिसमें हम आगे तभी पहुंच पाएंगे जब एक दूसरे का साथ लेंगे. तो मेरा साथ आप लोगों के साथ यहीं तक था. मैं अब बुलाना चाहूंगी शीना जी को, जो इसके बाद होस्टिंग करेंगे, बाकी स्पीकर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे. आशा करती हूँ अभी तक का सेशन आप सब ने एंजॉय किया, आप सब के लिए एक पेन किलर था, आप सब के लिए एक हाई लेवल ऑफ एंजॉयमेंट पे आपको ले गया, आपको एनलाइटन किया इसने. एंड आई विल हैंड ओवर टू शीना राइट नाउ, जो आपको बाकी स्पीकर्स के साथ मुखामुखी कराएंगी. तो शीना जी, अगर आप ऑनलाइन हैं तो एक बार इत्तला कर दे मुझे किसी तरह,
ताकि मैं हैंड ओवर आपको कर सकूं। एंड जो अगला सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। हितेश वशिष्ठ का सेशन है, हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं उस सेशन के लिए, बहुत ही उत्सुक हैं। एंड कहते हैं ना कि जितनी जैसे सर ने आज सुबह अपने सेशन में बताया कि फिजिकल बॉडी से आप ऊपर उठेंगे तभी आप अपने सोल लेवल पर जा पाएंगे, तो आज भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है इस सेशन को मॉडरेट करते हुए। मैं सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर हूँ और ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, बस ये जो ज्ञान गंगा है, जो ज्ञान सागर है, इसमें गोते लगा रहे हैं आप सबके साथ, बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग हियर सिंस द मॉर्निंग। अगर आप सुबह 9 बजे से यहाँ पर हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपने कुछ देर पहले ज्वाइन किया है, सो वेलकम वेलकम एवरीबडी। आज ये डिजिटल ध्यान यज्ञ का सेशन है जो हम सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक हमने ऑर्गेनाइज किया है आप सबके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। इसमें अलग अलग स्पीकर्स ने अभी तक आकर अपनी नॉलेज शेयर की है। सुबह पत्री सर का सेशन था, उन्होंने हमें ध्यान सागर के बारे में थोड़ा बताया, कुछ ध्यान मोती, कुछ ज्ञान मोती हमारे साथ बांटे। उसके बाद हमारा सेशन था डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ, जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स हैं। एंड उन्होंने हमारे साथ शेयर किया करुणा के बारे में, प्रज्ञा के बारे में। उसके बाद हमारा सेशन हुआ था जो कि प्रसिद्ध इंटरनेशनल मास्टर हैं इलोना सेल्की के साथ, जिन्होंने हमें डॉल्फिन्स के बारे में और बताया। वो एंजल्स ऑफ द सीज उन्होंने कहा डॉल्फिन्स को। उन्होंने गाइडेड मेडिटेशन रखवाई जिसमें हमने डॉल्फिन्स के साथ गोते लगाए अनंत सागर में। आशा करती हूँ सबको बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंसेस आए होंगे उस ध्यान के साथ। प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस, आपको आज हर स्पीकर ने चाहे 5 मिनट चाहे 2 मिनट पर ध्यान में जरूर बिठाया है। हम चाहते हैं आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आप YouTube पर ये इवेंट देख रहे हैं तो प्लीज YouTube पर शेयर करिए अपने कमेंट्स लाइव चैट पर। अगर आप Zoom में ये सेशन देख रहे हैं तो प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम औरों के साथ भी इनको बांट सके, ताकि हम और एक दूसरे से सीख सकें। इसके बाद जो सेशन हुआ था इलोना सेल्की मैम के बाद, वो था अनिल भारती जी का, जो लुधियाना में जो पिरामिड है, तो उनके कठिन परिश्रम की वजह से, उनके विजन की वजह से ये पंजाब में इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है PSSM का, जिसमें बहुत सारे और मास्टर्स ने साथ दिया है। तो अनिल जी का सेशन था, उन्होंने हमें सुख के बारे में कुछ बताया, सुख, तृष्णा, दुख क्या है, उन्होंने हमें ये बताया। उसके बाद अभी मास्टर पल्लवी का सेशन था। आशा करती हूँ तकनीकी खराबियों की वजह से आपको सेशन में जो ज्ञान प्राप्त करना था उस पर कुछ इशू नहीं आया। सो मैम ने हमें थोड़ा बताया इक्वेशंस ऑफ लाइफ के बारे में। इक्वेशंस तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, 1 + 1 = 2, पर ये स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे इक्वेशंस को उतार सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे इन इक्वेशंस को उतार सकते हैं, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से मैम ने हमें ये बताया। बहुत अच्छा लगा मैम को सुन करके। कई लोग आप में से लंच कर रहे थे मैम को सुनते वक्त, तो आज पल्लवी मैम के साथ आपने लंच किया, आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। अभी जो नेक्स्ट स्पीकर है हितेश वशिष्ठ जी, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी क्योंकि शीना जी को थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे लगता है आने में। तो स्पीकर के बारे में जरा सा आपको बताऊंगी। आई विल हैंड ओवर टू शीना एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो मेरे पास ये है, बल्कि यहाँ पर सुंदरम स्पीक्स, ये किताब है लिखी गई मास्टर हितेश के द्वारा। सो इस किताब में जो लिखा है अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा आपको बताऊंगी हितेश जी के बारे में, उनके लाइफ के काम के बारे में, उनकी ध्यान साधना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। So Hitesh Vashisht is the founder of Life Here and Now. He's an award-winning coach, has dedicated the last 12 years of his life to mind-body energy connection work. He, along with his wife Shubhangi, hold meetings, workshops, and private one-on-one sessions on different healing modalities and soul science, both nationally and internationally. He brings forth the compassionate energy of Sundaram in his sessions that guides his subjects to find deeper meanings of life. He is a certified consciousness coach from a recognized program of International Coach Federation, ICF, and a member of the Certified Coaches Alliance, CCA, Canada.
He has coached thousands of people from all walks of life, including CEOs, bureaucrats, doctors, and teachers. With an intention to help his clients access the field of infinite possibilities and enter a space of joyous living, he complements his coaching with healing modalities like past life regression, soul regression, inner child work, family constellation and ancestral healing, trauma release work, couples coaching, rebirthing, reworking, breath work, and abundance block clearings. He holds an MBA in Human Resources Management and has worked in the apparel, fashions, real estate, education, automotive, and telecom sectors. His rich and varied experiences in the corporate world, coupled with his immense personal experience, enable him to provide a holistic approach to his coachees. He currently offers his services as a trainer at the Quantum Life University, Hyderabad. He also serves as a board member for Association for Regression and Reincarnation Research, a body that works in promoting the healing effects of past life regression to masses. He lives with his wife and parents in Gurgaon. तो जैसा कि आपने सुना अभी, हमारे एक मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा दिमाग में होता है कि फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एरियाज हैं जिनमें कोई बीच में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता. तो ये जो अगले स्पीकर हैं हमारे, ही इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दिस वेरी इंटरसेक्शन. ही इज एन MBA ग्रेजुएट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इनकी ट्रेनिंग है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज में ये काम कर चुके हैं और अब ये ध्यान के बारे में प्रचार कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में प्रचार कर रहे हैं पिछले 12 साल से अपनी वाइफ शुभांगी के साथ. So we are very excited to hear from him what he has to say. I think Sheena ji is not here for now, but I request the moderators to put Master Hitesh online ताकि ज़्यादा समय ना गवाते हुए जो मास्टर हितेश से हमें सीखना है वो हम सीख सकें, हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ सकें. आई रिक्वेस्ट द मॉडरेटर्स कि आप मास्टर हितेश को ऑनलाइन ले आएं प्लीज. अगर आप में से किसी को भी ऑडियो या वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताते रहिए, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन है. यही आज की सबसे बड़ी बात है, यही आज का एक यूएसपी है इस सेशन का, कि हम अपने अपने घरों पर बैठते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं है, एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं. तो आई थिंक मास्टर हितेश इज हियर नाउ, सो मैं और वक्त नहीं जाया करूंगी. Please, Master Hitesh, over to you. Namaste, very good afternoon. Hello, Charu. So, very happy to be here. मुझे बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है आप सबके साथ यहाँ पर बातचीत करते हुए और अपने थॉट्स का, अपने एक्सप्रेशन का एक्सचेंज करते हुए. आज सुबह से हम सब बहुत मज़ा ले रहे हैं, बहुत आनंद कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठकर एंजॉय भी कर रहे हैं और जो ज्ञान गंगा बह रही है उसको भी ले रहे हैं. इट इज़ लाइक कि हमारी 10 की 10 उंगलियां घी में है. माय टॉपिक फॉर यू इज अबाउट मैसेजेस फ्रॉम द एनिमल गॉड्स. आज सुबह डॉक्टर न्यूटन ने भी करुणा का संदेश दिया, जिसके अंदर उन्होंने जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति करुणा होना और करुणा के भाव को होना, उसके बारे में बताया. तो उसी चीज़ को आगे रखते हुए हम जानवरों को, पशु पक्षियों को, जो हमारे भाई बहन के समान है क्योंकि हम एक ही माता से जन्म लिए हैं, उनके बारे में और उनके साथ रिश्ता, कनेक्शन बनाने में हम इस सेशन का इस्तेमाल करेंगे. दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग शामन मास्टर ने कहा है that if you try to talk to the animal will talk to you. And if you don't try to talk to the animal will never talk to you. And if you will never talk to the animal, you will fear of the animal. And what you fear of, you will always try to destroy. इसका तात्पर्य है
कि अगर आप किसी पशु से, किसी पक्षी से बात करेंगे तो वो भी आपसे बात करेगा। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो भी आपसे बात नहीं करेगा। और जिससे आप बात नहीं करेंगे उसके बारे में आप सदैव डर रखेंगे, और जिसके बारे में आप डर रखेंगे आप हमेशा उसे नष्ट करने का सोचेंगे। So dear friends, I think this is what is happening right now in the world. हमारे विश्व में क्या हो रहा है कि हम एक एनिमल किंगडम पर जो संकट आया और जिसके कारण ये कोरोना वायरस बना, that is what is our own fear trying to destroy us. हमारा खुद का fear, हमारे खुद के selfish motives हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है मैं 5 वर्ष का था एक बार, और हमारे जिस शहर में मैं रहता था उस शहर में एक बार मदारी आया, उस गली में एक मदारी आया, और वो मदारी के पास 2 बंदर थे, और वो खेल दिखाने के प्रयास में उन सबको लेके आया और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। और खेल का सीन ऐसा था कि जो फीमेल मंकी है वो अपने ससुराल जाएगी और मेल मंकी को पीछे छोड़ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। मदारी नाटक की कमेंट्री कर रहा था और उसने ऐसे शब्द कहे कि देखो, फीमेल मंकी तो चली गई है, बंदरिया तो चली गई है, और ये बंदर पीछे रह गया है अकेला। देखो कितना दुखी है, देखो कितना परेशान है। पर जब हम सब बंदर को देख रहे थे छोटे छोटे, तो हमें बंदर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो परेशान है, क्योंकि वो बंदर खुद की अपनी ही दुनिया में अपनी ही एक चीज को पकड़कर एक एक्सप्लोर करने की, टटोलने की कोशिश कर रहा था। तो मदारी ने फिर से कहा कि देखो ये बंदर कितना परेशान है। उसको था कि शायद बंदर ने सुना नहीं और वो उसी तरीके से जैसे सिखाया है वैसे बोल नहीं रहा है। उसने फिर से कहा और बंदर ने फिर से नहीं सुना और वो अपने अंदर ही मस्त रहा। वो इधर से फुदक कर उधर जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू हॉप अराउंड। अल्टीमेटली क्या हुआ, मदारी को गुस्सा आया और उसने गुस्से में बंदर को गर्दन से पकड़ा और उसको जमीन में डाला, जमीन में एक तरह से पुश करा। और जैसे ही उसने जमीन में पुश करा, वो बंदर इतना डर गया कि वो एक बच्चे के समान रोने लगा। और उस एक्सट्रीम फियर में ये भी हुआ कि he urinated, he peed there, कि उसका मलमूत्र भी वहीं निकल गया। इतना डर उस बंदर के बीच में से निकला। जब मैंने उस बंदर को ऐसे देखा तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शौक की भावना आई और मुझे ये समझने को मिला कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही जानवरों में भाव होते हैं, वैसे ही वो हम सब जैसे हैं। दोस्तों, आज जब मैं इस कहानी को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि जो हमसे कम बलशाली है, जो हमसे कम शक्तिशाली है, उसको हमारी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप उसके सामने अपनी शक्ति दिखाकर उसे बड़ा नहीं बन सकते। आप हमेशा अपनी करुणा दिखाकर उसको अपने साथ कर सकते हैं। So the one who is less powerful than you doesn't need your power. He needs the taste of your compassion. So that is what animals need from us. और फ्रेंड्स, अगर आप उपनिषद्स, हमारे शास्त्रों को, उपनिषद्स को, बाइबल को, बुद्ध के ज्ञान को पढ़ने की सबको कोशिश करते हैं, आप जानेंगे कि उन सब के कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जानवरों के साथ हो चुके हैं। जैसे आप सबको पता होगा वो पहला इंसिडेंट्स बुद्ध का, जब उसने एक तीर लगते देखा एक नन्हे से पिजन को, कैसे उसके अंदर करुणा जागी। आई थिंक वो एक बुद्ध का सबसे बड़ा एक पॉइंट था जिससे
उसके अंदर सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। हम जीसस को सब जानते हैं, पर जीसस को सब एक भेड़ चराने वाला भी जानते हैं। He was a shepherd. हम कृष्ण को जानते हैं, पर कृष्ण को एक गवाला भी जानते हैं। एंड नॉट ओनली जस्ट दिस, आप अगर सारे भगवानों को देखेंगे, उन सब के साथ एक न एक जानवर जरूर होता है। सो डियर फ्रेंड्स, इट एक्चुअली टेल्स अस कि भगवान के हृदय में भी एक जानवर के लिए कितना प्रेम और कितनी करुणा है। आप किसी भी भगवान को ले, आप शिव को ले, दुर्गा को ले, आप मुर्गस्वामी को ले, आप लक्ष्मी को ले, हर जन का, हर भगवान का एक पशु है, एक जानवर उनके साथ है, जो हमेशा उनकी क्वालिटीज को एक्सेंचुएट करता है, उनकी क्वालिटीज को बढ़ाता है। अगर आप शिव परिवार को देखें, शिव परिवार में 4 जन हैं, शंकर भगवान, लक्ष्मी, पार्वती माँ, मुर्गस्वामी और गणेश। इन सब के वाहन देखें। शंकर भगवान का वाहन है बुल, ऑफ कोर्स स्नेक भी है, बुल। और दूसरा देवी माँ का वाहन है शेर, गणेश का वाहन है मूषक और मुर्गस्वामी का वाहन है मोर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन सब जानवरों को इकट्ठे कर देखें, शेर, बुल, मोर, सांप भी ले लेते हैं और मूषक, ये सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। देखिए, सांप मूषक को खाता है, सांप को मोर खाता है, शेर बुल को खाता है। तो एक दूसरे को खाने के बावजूद भी देखिए कैसे परिवार में इकट्ठे रहकर ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये एक पहली लर्निंग है हमारे एनिमल किंगडम से, कि बिना वजह किसी को तंग नहीं करना। That is what is the first learning from the animal kingdom. I am sure आप सबने गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना होगा। वो गजेंद्र मोक्ष जिसके अंदर एक एलिफेंट ने, जब वो एक क्रोकोडाइल के चंगुल में फंस गया, तो खुद को बचाने के लिए उसने लॉर्ड विष्णु का आह्वान किया, और विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर उस एलिफेंट को बचाने के लिए आए। उससे ही उस प्रार्थना से ही गजेंद्र मोक्ष की रचना, गजेंद्र मोक्ष की क्रिएशन हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, विष्णु के 9 अवतार जो अभी तक हो चुके हैं, उनमें से 3 अवतार जानवरों से प्रेरित है, विच इज मत्स्य, कुर्म और वराह, विच इज अ फिश, अ टॉर्टोइज एंड अ बोर और अ पिग। तो देखिए हमारे गॉड्स भी कितने प्यार से इन एनिमल्स को अपने दिल के साथ रखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे कर्मास को रिलीज करने का, जो हमारे बैड कर्मास हैं, उनको रिलीज करने का सबसे अच्छा साधन है। जब हम अपने किसी वीक पर अपना कंपैशन दिखाते हैं, तो हमारे बुरे कर्म खुद ब खुद नष्ट होने लगते हैं। That is what we can use our animals for. Not that we decorate our plates with them, we decorate our wardrobes and closets with them. It is not for them. They have their own world. They are from the same mother that we've come from. हम सब भाई बहन हैं। So इसी चीज को आगे रखते हुए आज मैं आपको अपने एनिमल गॉड्स से मिलवाने के लिए एक यात्रा पर लेकर जाऊंगा। जैसे लक्ष्मी, जैसे सरस्वती, जैसे ब्रह्मा, जैसे शिवा, इन सब के पास अपने एनिमल गॉड्स हैं, वैसे ही हम सब के साथ भी एक या दो या कुछ ज्यादा भी एनिमल गॉड्स हम सबके साथ रहते हैं। तो चलिए आज हम इस यात्रा में अपने एनिमल गॉड से अपना वार्तालाप, अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। So I would like you to close your eyes. Just allow yourself to relax.
Find a comfortable sitting position. खुद को एक सुखद आसन में लेकर जाएं एंड अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपनी आंखें बंद कर लें. अपनी आंखें बंद करके एक गहरा लंबा सांस लीजिए. नाक के द्वारा लेकर एक क्षण के लिए अपने भीतर रोककर अपने मुंह से बाहर जाने दें. Just allow yourself to relax. Relax more and more. एक बार फिर से एक गहरी लंबी सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर उसे मुंह के रास्ते से बाहर जाने दें और खुद को डीपली रिलैक्स होने दें. रिलैक्स, रिलैक्स मोर एंड मोर. अब अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर केंद्रित करें. Bring your attention to your normal, natural breath. हर अंदर आती सांस, हर बाहर जाती सांस आपको एक गहरी लंबी शांति में प्रवेश करवा रही है. Allow yourself to relax. Relax. Relax more and more. अपनी सांसों के साथ बने रहें. हर अंदर आती सांस ला रही है खूब सारी ताजगी, खूब सारी शांति, और हर बाहर जाती सांस आपसे बाहर लेकर जा रही है सारा तनाव, सारे अनचाहे विचार. आप रिलैक्स और डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं. अब इस समय महसूस करें आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रकाश की गेंद है. यह प्रकाश की गेंद किसी भी रंग की हो सकती है. This ball of light which is right above your head can be of any color. पर यह प्रकाश आपको शांति और सुकून देने वाला है. This light which is right above you, the presence of this light is going to offer you health and healing and peace. Allow the light from this ball to come down and enter your body from the top of your head. अनुमति दें इस प्रकाश को इस गेंद में से छलक कर नीचे की ओर आने की और आपके शरीर में प्रवेश करने की. सबसे पहले यह प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र, आपके सर की चोटी को टच करता है और धीरे धीरे उस ब्रह्मरंध्र से यह प्रकाश आपके सर में प्रवेश करता है. सर के सभी अंग, पार्ट्स शांत हो रहे हैं.
धीरे धीरे यह प्रकाश फैलकर आपके चेहरे में जा रहा है। चेहरे की सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं। अगर कोई टाइटनेस, अगर कोई सिकुड़न आंखों के आसपास या आपके जॉ में है, अलाउ इट टू रिलैक्स, लेट इट लूज, इसको रिलैक्स और ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे इस प्रकाश को अपनी गर्दन के भीतर प्रवेश करने दें। अगर गर्दन में, आपके गले के भीतर कोई भी हिचकिचाहट है, यह प्रकाश उसे हील कर रहा है, उसे काम कर रहा है और अपने प्राकृतिक प्रवाह से दूसरे शरीर के अंगों में जा रहा है। गले से बहता हुआ यह प्रकाश आपके घुटनों, आपके कंधों, आपके हाथों और बाजुओं में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी छाती में प्रवेश कर रहा है। आती जाती सांस आपकी छाती में एकदम शांत और धीमी हो रही है और आप एक गहरी, लंबी, पीसफुल स्टेट में, शांतिमय स्टेट में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रकाश धीरे धीरे आपकी पीठ में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश फैलकर आपके पेट के भीतर जा रहा है। पेट के अंदर के सभी अंग इस प्रकाश से भरते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पेट से होकर आपके योनि क्षेत्र में जा रहा है। It is entering in your pelvic region. धीरे धीरे यह प्रकाश आपके थाइज में, आपके जांघों में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी घुटनों और घुटनों से नीचे की टांगों में जा रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पांव में प्रवेश कर रहा है। पांव से जाता हुआ आपकी एड़ियों तक पहुंच गया है। आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। Your whole body is filled with this healing, relaxing, peaceful light. Allow this light to also cover you up from the outside like a warm and a comforting blanket. अनुमति दें इस प्रकाश को आपको बाहर से भी ओढ़ने के लिए। ऐसा महसूस करते हुए कि इस प्रकाश से भरी हुई चादर में आप खुद को समाये हुए हैं। भीतर और बाहर सब जगह शांतिमय प्रकाश भर चुका है। Inside and outside of you, there is only one thing, which is this peaceful light.
इस शांति की अवस्था में आपका मन और आपका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, पर आपका ध्यान मेरी आवाज के साथ एकत्रित है। इस समय खुद को अनुमति दें कि आप अपनी चेतना को एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में लेकर जाएं। हमारा उद्देश्य इस जंगल में जाने का हमारे एनिमल गॉड से मिलने का है। पशु के रूप में जो हमारे ईश्वर हैं, उनसे मिलने का है। तो खुद को अनुमति दें इस जंगल में पूरी तरह खुद को महसूस करते हुए, सोचते हुए कि आप अभी अभी इस जंगल में प्रवेश करे हैं। You have just entered this forest. इस जंगल में प्रवेश करते हुए आप पहुंचते हैं इस जंगल के इंफॉर्मेशन बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर इस जंगल का एक मैप, एक नक्शा लगा है। आप उस जंगल के मैप को, उस नक्शे को देख रहे हैं। देख रहे हैं कि जंगल कितना घना और क्या क्या है, कैसे कैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, फल फूल, पेड़ वृक्ष, किन सब चीजों से भरा हुआ है। यह सब सूचना पे मैप में बताया गया है। आप इस मैप में ये भी देख रहे हैं कि इस जंगल, घने जंगल के बीच में एक खाली स्थान भी है। Right in the middle of this deep, dense forest, there is a clearing. There is a wide open space. And this space is not a normal space. It is that space where you can connect with your personal animal god. ये रिक्त स्थान साधारण रिक्त स्थान नहीं है। यह वो स्थान है जहां आप अपने पर्सनल एनिमल गॉड से रूबरू हो सकते हैं। मैप को देखकर आप धीरे धीरे खुद को इस यात्रा में लेकर जा रहे हैं, मानते हुए कि आप घने रास्तों से होते हुए आपका उद्देश्य उस खाली जगह पर पहुंचना है जहां आप अपने पर्सनल एनिमल गॉड से मिल सकते हैं। आपको ये बहुत पता है कि जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे, आप अपने एनिमल गॉड को साक्षात्कार, महसूस, देख, सुन, फील कर पाएंगे, जान पाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी यात्रा से चलते जा रहे हैं और आसपास के पशु पक्षियों की आवाजें सुनते जा रहे हैं, वृक्षों को महसूस करते जा रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं
कि आपकी इंट्यूशन खुद ब खुद जाग रही है। आप हर वृक्ष का आभा मंडल देख पा रहे हैं। आप हर फिजिकल चीज को उसकी फिजिकलिटी से बढ़कर महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अलाउ योरसेल्फ टू वॉक। खुद को अनुमति दें इस गहरे जंगल से निकलकर उस रिक्त स्थान में पहुंचने की, जहां आपके पर्सनल एनिमल गॉड आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप इस रिक्त स्थान में पहुंचते हैं, इस खाली मैदान में पहुंचते हैं, खुद ब खुद आपके एनिमल गाइड आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखते हुए देखिए कौन सा पर्सनल एनिमल गाइड आपको वहां मिलने के लिए आया है। कौन सा पर्सनल एनिमल गाइड आपको यहाँ ग्रीट करने के लिए आया है। आपका पर्सनल एनिमल गाइड आपको वहां देखकर बहुत प्रसन्न है। देखें कि आपके पर्सनल एनिमल गाइड की क्या ध्वनि है। What is the sound of your personal animal guide? Trust the sound that you receive. अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने एनिमल गाइड को उसकी ध्वनि से और जानने का प्रयास करें। अपनी ध्वनि के माध्यम से आपका एनिमल गाइड आपको वहां आने के लिए थैंक यू कह रहा है। एंड एट दिस टाइम, अब इस समय आपका एनिमल गाइड पूरी तरह से साक्षात रूप में आपके सामने आ चुका है। See what you see, feel what you feel. अपने एनिमल गाइड को पूरी तरह से महसूस करें अपने सामने। क्या मैसेज देना चाहता है आपका एनिमल गाइड आपको? उससे वो मैसेज लें। Receive this message from your animal guide. आपके जीवन में कैसी क्वालिटीज ये एनिमल गाइड, आपका एनिमल गॉड लाना चाहता है? कैसे आपके जीवन में आपको प्रगति करने के लिए आपका पर्सनल गॉड आपकी सहायता कर रहा है? पूरी तरह से इस वार्तालाप को जिए। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, अगर आपके भीतर भी जीवन के इस समय की कोई भी दुविधा है, आप उस दुविधा को भी अपने एनिमल गॉड के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपका एनिमल गॉड आपको उसके बारे में गाइड कर सके। अब इस समय आपका एनिमल गाइड आपको एक गिफ्ट दे रहा है, एक उपहार दे रहा है। इस उपहार को स्वीकार करें। देखें कि इस उपहार का क्या अर्थ है आपके जीवन में। कैसे आप यह उपहार अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
Trust the gift that you receive from your animal guide. Trust करें, खुद पर भरोसा रखें. जो भी अनुभव आ रहा हो वो आपसे ही संबंधित है. अब इस समय अपने एनिमल गाइड को थैंक यू कहें. कृतज्ञता का भाव अपने एनिमल गाइड को प्रस्तुत करें और कहें, धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए. धन्यवाद जीवन के इस मोड़ पर मेरे साथ होने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए. यह जानते हुए कि आप किसी भी समय अपने एनिमल गाइड से यहाँ आकर मिल सकते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं. धीरे धीरे अपने एनिमल गाइड से थैंक यू कहकर इस स्थान से बाहर आते हुए, जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से बाहर आना है और धीरे धीरे उस जंगल से होते हुए अपनी चेतना को पूरी तरह से वर्तमान में लेकर आना है. खुद को पूरी तरह से अपने शरीर में महसूस करते हुए और अपने साथ अपने एनिमल गाइड की एनर्जी को भी लेकर आते हुए एक गहरी लंबी सांस के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे. Wonderful, dear friends. Namaste. Welcome back once again. So मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप खुद का कनेक्शन अपने एनिमल गाइड से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एनिमल गाइड आपके जीवन में कितने उपहार, कितनी क्वालिटीज, कितना कुछ आपके भीतर से एक खजाने के समान निकाल सकता है. आप एक एनिमल गाइड को अपने साथ काम करने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जीवन के छोर में आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आप ज़्यादातर लॉइन को अपने साथ इनकरेज कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं. पर्सनल एनिमल गॉड को इनवाइट कर सकते हैं एज अ लॉइन, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपको टीचिंग करना है और आप एक टीचर एनिमल गॉड को अपने साथ बुलाना चाहते हैं तो आप डॉग्स को बुला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप हील करना चाहते हैं, खुद की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप कैट्स को, आप स्नेक्स को इनवाइट कर सकते हैं, स्कॉर्पियंस को इनवाइट कर सकते हैं. तो जिस तरीके का आप काम करना चाहते हैं आप उसी प्रकार से उस क्वालिटी के हिसाब से भी अपने एनिमल गॉड को आमंत्रित कर सकते हैं खुद के साथ. इसके अलावा बहुत और भी साधन है जिससे आप अपने एनिमल गाइड को पहचान सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोने से पहले आप एक इंटेंट दीजिए कि आज मैं स्वप्न में अपने एनिमल गाइड से मिलूंगा और देखिए कि आपका एनिमल गाइड आपको स्वप्न में मिलने आएंगे. शायद वो एक बार में नहीं हो, पर अगर आप 2-3 बार रिपीट कर इस इंटेंशन को रात को सोने से पहले डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एनिमल गाइड आपको स्वप्न में जरूर मिलने आएगा. दूसरी चीज, आप कैसे जान सकते हैं कि आपका एनिमल गाइड कौन है? जिस एनिमल से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वो भी आपका पर्सनल एनिमल गॉड है. तीसरी चीज,
बचपन में आप किस एनिमल से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड थे, वो भी आपका पर्सनल एनिमल गॉड है. जैसे एज अ चाइल्ड मुझे स्नेक से बहुत ज्यादा प्यार था. So over the period of time, what I have realized that they are my personal gods. Snakes are very well, teaching me in so many ways. और एक चीज हमें ये याद रखनी है कि हमारे पर्सनल एनिमल गॉड्स हमारी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं. जैसे भूगोल का सब्जेक्ट एक एक संस्कृत पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं लेता, उसी प्रकार से क्वालिटीज के हिसाब से एनिमल गाइड्स भी आपको गाइड करने के लिए आते रहते हैं. आई रिमेम्बर जब मैं सुंदरम स्पीक्स लिख रहा था, तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं हर दिन मकड़ियों को अपने साथ महसूस करता. जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां भी बैठा हूँ वहां पे मकड़ी दिखती थी, एक स्पाइडर दिखते थे. और जैसे हम किसी के घर गए, उन्होंने हमें एक फ्लावर प्लांट गिफ्ट किया, उस प्लांट का नाम था स्पाइडर प्लांट. Right? So these are the signs that your animal gods are trying to give you. ये साइन से वो बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं. फिर धीरे धीरे बाद में जब मेरे को लगा कि हाँ स्पाइडर्स बहुत सारे मेरे को मैसेजेस दे रहे हैं, मैंने वो मैसेज चेक करने का कोशिश करा और मुझे पता चला इंट्यूटिवली, साइकोसोमेटिकली और सिंबॉलिकली जो स्पाइडर्स हैं वो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन को रिपिक्ट करते हैं. और आप देखेंगे यही चीज मुझे चाहिए थी अपनी बुक को लिखने के लिए. आई नीडेड क्रिएटिविटी, आई नीडेड कम्युनिकेशन, एंड दैट इज व्हाट दे ब्लेस्ड मी as far as the Sundaram Speaks is concerned. So friends, these days Sundaram Speaks is speaking about so many messages, right from the plant kingdom to the animal kingdom and to the mineral kingdom. It is speaking about हम कैसे इंसान रहकर कैसे अपने उत्थान की तरफ जा सकते हैं, जबकि हमारे कई चीजें हमने ऐसे करी हैं जिससे हम अपनी सृष्टि को एक पतन की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो अगर आप भी उन सब संदेशों को सुनना चाहते हैं, आई वुड इनवाइट कि आप सुंदरम स्पीक्स के मैसेजेस सुनने के लिए लाइव हियर एंड नाउ यूट्यूब चैनल पर जाएं और इन मैसेजेस को सुनें. आई एम श्योर आपका प्यार अपने और एनिमल किंगडम के जनों के लिए, प्लांट किंगडम के लिए, धरती माता के लिए और बढ़ कर आएगा. सो ऑन दिस नोट आई थैंक यू ऑल. Thank you for joining me. May you all be blessed by your personal animal gods in humongous heaps, full joyful ways. Thank you so much. Thank you so much, Hitesh ji, for your wonderful session. Thank you. कितना कुछ सीखने को मिला आपसे. There are many stray cats and dogs हमारे घर के बाहर भी. So and I just read the book, The Power of Communication with Animals. I think Bill Shull की वो book है. So I will definitely experiment and try out. आपने जितना हमें अच्छे से guided meditation से आप ले गए. Thank you so much for contributing to this energy. There's just one question which I will answer. Please. This question is, which is the animal god for prosperity? So if you want to encourage, अगर आप बरकत के साथ, धन के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हाथी means big, हाथी के साथ, हाथी के animal god को, owl brings wisdom, prosperity through wisdom, right? That is what you can work with. So thank you so much for having me. Thank you so much. चलिए जाते जाते एक और nugget of wisdom मिल गया आपसे. Thank you so much. तो जैसा मैंने पहले कहा था सभी दर्शकों से, अभी ये एक मैराथन है, एक रिले रेस है. So मैं आगे चाहूंगी अब नंदिनी जी ने. She's going to take over. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah. शुभांगी नहीं आई?
सर शुभांगी है, उसका मौन था, तो अभी थोड़े दिन हुए हैं उसका मौन खत्म हुआ है. शी वॉज ऑन मोना फॉर 14 तो days. देखना था ना हमें. मैं सर अभी बुलाता हूँ उसको. आई विल जस्ट कॉल हर अप. So I guess she's here. She's coming. Yeah. Hi. Hello, sir. Everything is okay? Namaste. Everything is okay? Yes, sir. Perfect. You are in Mon? Yes, I had moon for 14 days, sir. Okay. So amazing experience I had during that time, sir. And I read Untold Story of Sita. Very good. So it took me more deeper into Mona. So I had a wonderful experience. Oh. Yes, sir. Then you have to speak on Untold Story of Sita. Yes, sure, sir. Definitely. Yeah? Yes, sir. You must give the message out of the Untold Story of Sita. Absolutely, sir. And I connected to Tara energy also, sir. So I'm speaking on Tara that Asha ji has initiated, the women mystic goddesses. Yes. So I'm speaking on Mother Tara. Very good, very good. Yes, sir. Thank you, sir. I just wanted to see you, Baba. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. Next program. Thank you. Next is for the Thank you, Charu. Thank you for being such a wonderful host. Hello, sir. Hello. Now, and I would like to thank all the masters who have been sharing their wisdom and helping us being so energized and uplifting our energies from since morning. Now, you are not on the white screen. I'm not coming on your screen. White screen. White screen. Yeah, now it's okay. Okay. Nice to see you. Nice. Always wonderful to see you. Now, I would like to invite Mrs. Poonam ma'am, who is a dynamic master from Kolkata. She's a great master who has been spreading spirituality and meditation and helping souls to know themselves. Today, she'll be conducting this session with Brahmrishi Pitama Patriji. It's gonna be an interactive session. It's a mukha session. So yes, ma'am, I would mukha session. थोड़ा आपके बारे में बताइए दुनिया को. नमस्ते टू ऑल. मेरा नाम नंदिनी है. मेरा ध्यान से अनुभव कुछ 10 साल पहले हुआ था. मैं अपने एक लाइफ में जिनको हम चैलेंजेस को परेशानी मान के अपनी लाइफ को उसी में खोते रहते हैं. मैं भी काफी खोई थी. But the moment I got to know that there's something which will help you go deeper into yourself and which will make you love yourself, I just grabbed that moment and I sat in meditation. And that was a full night meditation. I went to a center that was in Green Park, Delhi, and it was wonderful. It was like a space where I met myself, and I got to know about spirituality, about my own divinity, also about pyramid energy, which was very unique and new for me. I really thank Sir for bringing this knowledge to us. And
today that I'm speaking in front of all of you, it's just because of meditation, as it has helped me bring all the confidence and all the self knowledge in me. So that's about it. आपके घर परिवार के बारे में थोड़ा बताइए. मेरा सभी लोग करते हैं ध्यान? बिल्कुल, मेरा पूरा का पूरा परिवार ध्यान से जुड़ा है, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज काफी हेल्प होता है जब इवन फैमिली मेंबर्स आर अ पार्ट ऑफ सच, यू नो, दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स इट. I got into spirituality because of my Mausis, my mother's sister, and she got me into because she was experiencing such huge changes in her life. She asked everyone in her family that everyone should experience this, and hence we got this wonderful gift of meditation. My mother, my father, my all masis, I have 3 masis. They all are into meditation and they all are spreading meditation. So it's really wonderful to be born to such parents and such family. I'm great that I chose them. I'm happy. Thank you, Baba. Poonam ji, namaskar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Nandini. नमस्कार सर. और क्या? हम फिर हाजिर हो गए सर आपके सामने. एक दिन गया सर, लेकिन बहुत बड़ा गया. रोज देख रहे थे आपको, बहुत मजा आ रहा था हमें. एनीवेज सर, कुछ है फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आज मुखामुखी में. सबसे पहले मैं ईशा को लाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके कहने से उसने 1 वीक मौन किया और वो अभी ही खत्म हुआ है उसका. तो ईशा हैंड रेज किया. और क्या? 1 मिनट सर, ईशा को दे रही हूँ. हाँ ईशा. हेलो सर. क्या हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है. अभी आपसे बात करते हुए मेरा मौन कंप्लीट हुआ सर. 1 वीक का संडे को लिया था, आज संडे है सर. मौन का एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा सर. मैं अपने आप को जान रही थी, अपनी फैमिली को जानने का मौका मिला सर. हमेशा क्या होता है, जब हम बोलते रहते हैं तो हम एनालाइज करते हैं और वही बोल देते हैं सर. पता भी नहीं चलता कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं सर. चुप रहकर सर मैंने सबसे ज्यादा अपने परिवार वालों को समझा सर. मेरे को सबके भीतर मैं ही दिखाई दे रही थी. बस सर मुझे ये समझ में आया कि हम कितना एनालाइज करते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं. तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा आजीवन भी हम चुप रह सकते हैं. इट्स सो इजी एंड इट्स सो वंडरफुल. योर एनर्जी लेवल इंक्रीज सो मच सर. आजीवन भी चुप रहने में कोई दिक्कत नहीं है. मुंह का इस्तेमाल सिर्फ सच बोलने के लिए हमें करना है सर. ध्यान प्रचार के लिए करना है सर, और कोई जरूरत ही नहीं है सर. मैं अपने 8 साल के बच्चा, जो मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी सर. अभी ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हो गया है तो उसका होमवर्क कराना सर. ही इज क्वाइट नॉटी. तो सर मुझे उसमें भगवान दिखाई दे रहा था. द वे ही वाज टीचिंग मी टू बी पेशेंट सर. आई कांट टेल यू सर. मतलब सर देयर वर सो मेनी लेसन्स आई लर्नड. सो मेनी लेसन्स सर. द बेस्ट लेसन आई लर्नड वाज we just have to decide once what we have to do. Then you are not the person doing anything sir. The astral masters, they are always there to help you. You just have to take one step and it's done sir. I have it's giving me goosebumps sir. हमेशा लगता था कि कैसे हो रहा है सर. अभी पता चला कि कैसे हो रहा है सर. It's not only me, it's not only you sir. All the ascended masters, they help us in every way सर. ये सब पॉसिबल है जब हम शून्यता में पहुंच जाते हैं. तो सर हम फील कर पाते हैं. वी आर गेट सर. बिना ध्यान के भी ध्यान के स्टेट में थी पूरे टाइम सर. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर. एक्चुअली the sir, Mona is actually a feeling. It's beautiful sir. It's beautiful. It's beautiful sir. Thank you.
थैंक यू सर। मैं पूरा मतलब हमेशा मौन में ही रहना चाहूंगी। मर्जी आपकी। यस सर, यस सर। So with this note, I have one question, sir, with you. Sir, since it's a question answer round, so sir, I need to ask you one question. Sir, Shiva is always connected with Bhang. Sir, okay. Sir, is there any connection between Bhang and spirituality? You know, meditation states can be induced into a man even through material things. You got a samadhi state can be induced in you through a matter also. The LSD, the ayahuasca, all those things. Similarly, bhang also. It will take you into a higher state of affairs. Yes. Altered state of mind. But that should not be overdone. Okay. कभी-कभी भंग से भी हम मस्ती कर सकते हैं. Okay, sir. अल्प मात्रा में, ज्यादा नहीं. Okay. You should also taste that. It's not against spirituality. It also adds to a little of spirituality. That's why bhang bhi hoti hai. Okay. In Patanjali Yoga Shastras, he said the samadhi state can be obtained by oshadhi. Oshadhi means some plant product. Yes. Okay. So through certain plant products, you can go into altered state of consciousness. Yes. To indicate that bhang is there, that's all. But don't have bhang every day. Yes. अब कर रहे क्या? नहीं, no, sir. Actually, I had one experience with bhang. Sir, the moment I entered into spirituality, sir, I never had bhang any day. Sir, all of a sudden, my husband gave me something. I didn't even knew what was that, and I never tried anything. And sir, I had it. Sir, after 1 hour, sir, it was a beautiful experience. I witnessed Shiva in front of me. And sir, you know, actually physical enlightenment I received. So sir, that was a question within me since 3 years. Sir, how is bhang connected to spirituality? Sir, I got the answer. You got the answer. Very good. Yes, sir. Carlos Castaneda's guru, Don Juan, introduced Carlos Castaneda only through these aushadhis. Okay. Peyote. If you read Carlos Castaneda's literature, he starts with this peyote buttons. That is aushadhi. That is akin to bhang. ठीक है ना? वो अच्छा ही है, परंतु ज्यादा मात्रा में उसके ऊपर निर्भर करेंगे तो गलती है. Yes, sir. बस उतना ही बात है. Okay. Thank you, sir. Thank you for putting a good question. Yeah. Thank you, ईशा. तुम्हारा एक क्वेश्चन और था ईशा. Anyways, सर बचपन से यही सुना है कि भांग मत लेना. मैंने कभी भांग ट्राई नहीं की है. करो ना, ट्राई करो अभी. सर अब करूंगी. जब भी होली आती थी तो भांग के लिए सब बोलते थे भांग लो. नहीं, मम्मी पापा बोलते नहीं मत लेना, इसलिए नशा है, इसमें कुछ हो जाएगा, मत लेना. हम डर जाते थे कि हाँ नहीं लेंगे. साल में एक बार होली आती है तो साल में एक दिन भंग भी ले सकते हैं आप. ठीक है जी. बाकी दिन ध्यान करो, एक दिन भंग ले सकते हैं आप. ठीक है. होली एक दिन आती है साल में. ठीक है सर, एक बार लेंगे साल में. नेक्स्ट है सर रिंकू. हाँ रिंकू, आपका हाथ हटाइए. नमस्ते सर, प्रणाम सर. और क्या हो रहा है? सर बस पूरे घर का काम कोरोना में. You speak with your mic on your mouth. घर का काम, ध्यान का काम. या सॉरी सर. यस सर, अभी कोरोना के टाइम में सर घर का काम, ध्यान का काम दोनों बराबर इक्वल चल रहा है सर. ओके सर, एक क्वेश्चन था आपसे पूछना है. आज मुखामुखी सेशन है तो एक क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा खुद का नहीं है, बट मुझे किसी ने पूछा था तो मुझे भी ये आंसर नहीं पता सर. तो मुझे मैं भी ये आंसर जानना चाहती हूँ सर. जैसे कहते हैं वॉक-इन्स, तो वॉक-इन्स जो होते हैं, क्या मेल वॉक-इन्स फीमेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में मेल बॉडी में फीमेल वॉक-इन्स भी होते हैं सर?
अरे वॉकिंग होता है आत्मा, आत्मा का ना मेल होती है ना फीमेल होती है। हाँ सर। तो सर जब देखते हैं कि जैसे फीमेल बॉडी में अगर कोई वॉकिंस हैं तो वो मेल की तरह बिहेव करते हैं, और मेल बॉडी में अगर फीमेल कोई पर्सन फीमेल जैसे बिहेवियर होता है उनका, तो सर वो क्या है फिर? वो क्या है, बस इसी इस फिजिकल बॉडी, एनी सोल कैन कम एंड एवरी द इनकमिंग सोल हैज गॉट इट्स ओन पर्सनालिटी. Okay. If it is more young, it is male. If it is more yin, it is female personality. Yes. More young or more yin, it depends upon the personality choice. So Yes, sir. whatever may be the physical body, the incoming personality can be yang or yin. Yin. Yin ho to more feminine dominated, और yang हो तो more male dominated. ऐसा होता है personalities. Okay, So what is the sir. question? So it's about yin and yang energy. It's not about male or female soul, because Yes, soul की yes. कोई होती ही नहीं है. हाँ. There are two energies, yin energy and yang energy. हाँ. Yang energy हाँ, is sir. aggressive, yin energy is submissive, accepting. Okay, More sir. enlightened हाँ. way, the more accommodative Yes. way. Okay. So a walk-in can come with a yang personality or yin personality, depend upon the fellow's choice. ठीक है ना? सर वॉकिंस, यस सर, वॉकिंस चेंज भी होते रहते हैं क्या? क्या? टाइम टू टाइम, मैंने डिफरेंट वॉकिंस भी हो सकते हैं कि परमानेंट ओनली वन वॉकिंस होते हैं? Only one. Only one walk-ins. Okay. Only one walk-in. Yeah. 80% Thank of you, pyramid sir. masters, they're all walk-ins. 80%. 80%. Yes. Of all pyramid masters, Wow. they're all walk-ins. Wow, sir. Maybe you are a walk-in. Yes, sir. Thank you, Papa. Thank you so much, sir. Thank you. सुबह से देख रहे थे क्या? मॉर्निंग में देखा, फिर मैंने डॉक्टर न्यूटन का देखा, फिर थोड़ा घर का काम था, 12 बजे एक ध्यान का सेशन भी था, मेरे रिलेटिव्स हैं, अच्छा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उनको ऑनलाइन करा रही हूँ, तो 12 बजे उनको ध्यान कराया, फिर 1 बजे तक उनको करा के सर, फिर थोड़ा सा काम वाम करके वाइंड अप करके फिर अभी आपको ज्वाइन किया सर. वेरी गुड बाबा, वेरी गुड. चलो, थैंक यू रिंकू, थैंक यू सर. नेक्स्ट मैं सर बुला रही हूँ किशन पोद्दार. स्वामी जी, आपका संदेशा क्या है दुनिया के लिए? सर नमस्ते. सर मेरा संदेशा सर यही है कि जो मैंने इन दिनों में जब से ये कोरोना है और जूम पे अपने कर रहे हैं, आपके संग रोज मिलना हो रहा है, रोज करना हो रहा है, और इससे मैंने ये पाया है कि 4 दिन मैंने भी ध्यान सिखाने का मेरे को मौका मिला, और इससे मैंने जाना सर कि ध्यान से स्वतः जो चेंजेस हमको चाहिए होते हैं वो ध्यान से स्वतः मिलते हैं, और उससे जो हमारा जो ज्ञान जो पकता है वो हमारे जीवन में बहुत तरह की खुशियां, बहुत तरह के ठहराव, एक स्थिरता लेके आता है सर. तो ध्यान के संग ज्ञान, और ज्ञान के संग जो वेजिटेरियनिज्म की जो बात आती है, शाकाहार की, सर वो बहुत जरूरी है, क्योंकि शाकाहार के बिना जो आपकी जो बात आती है कि हम आध्यात्म में उतर ही नहीं सकते, ये मेरे को इन दिनों में बहुत ज्यादा फील हुआ सर. और अभी 3 दिन पहले आदित्य ने एक वीडियो हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप किया था, हमारी फैमिली ग्रुप में. तो सर जो आपको मालूम है कि जो मैं फूड का काम भी करता हूँ, तो उसके भीतर सर पहले भी क्या है कि मेरे पास काफी ऑफर आए थे, बट मैंने कभी नॉनवेज का काम नहीं किया सर. बट जो रेंज होती है उसमें 1-2 फ्लेवर, 1-2 आइटम के थे, बट वो मैंने निश्चय कर लिया, वो भी मैंने पूरे बंद कर दिए हैं, भले ही वो काम मेरे को मिले न मिले मेरे को. बट अभी मैंने ऑर्डर दिए हैं पार्टी को सर, मैंने उसको एकदम भी ऑर्डर नहीं दिया. उनकी बहुत प्रेशर रहता है, बट मैंने उनको लिख के दिया कि मेरे को ये नहीं मंगाना है तो नहीं मंगाना है, आपको करना है आप करो, नहीं करना है आपकी मर्जी है. एंड आई एम वेरी फर्म ऑन दिस टाइम सर. वेरी गुड.
पहले भी सर मैं आपको बताऊं कि आज से 8 साल पहले एक ब्रांड आई थी मेरे पास। मैंने उसको ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, उसका काफी सारा काम करता हूँ। उसके भीतर नॉन-वेज आइटम थे, मैंने कहा नहीं करूंगा, तो उसने मुझे वेज आइटम दिए और फिर उसने किसी और को ढूंढा, बोला आपका वेज भी उसको देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम होगा, लौट कर जरूर आएगा, नहीं है तो मेरे को चाहिए नहीं। सर 8 साल बाद वो काम मेरे पास आ गया, ओनली फॉर वेज। अच्छा, तो सर ये एक मैंने इन दिनों में मेरे को ये बहुत ज्यादा इस चीज की पॉजिटिविटी मिली कि नहीं, जो मन में थोड़ा रहता है कि नहीं थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, व्यापार है, बट इस बार मेरे मन में ये बहुत निश्चय हो गया कि नहीं, इवन सिंगल फ्लेवर भी हमको कोई काम नहीं करना, चाहे उसके भीतर इतनी सी मात्रा क्यों ना हो, 0.01% भी है तो मेरे को वो नहीं करना है, वो मेरा काम नहीं है। बिल्कुल तो मेरा काम, हाँ, तो ये मेरे को सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शूट ए क्वेश्चन। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो हम ध्यान करते हैं सर, और ध्यान में भी प्राय रोज ऑलमोस्ट मैं मॉर्निंग में उठ के करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में 4, 4:30, 5 बजे मेरी आंख खुलती है, तब 1 घंटा सर। और ये एक मैसेज मेरा सबके लिए जरूर मैं देना चाहूंगा कि सर जो आपका जो ध्यान की जो विधि जो आप हिंदी में बताते हैं कि आनापानसति ध्यान का जो काफी साल पहले का आपका बनाया हुआ 1 घंटे का, सर उसके भीतर आप जो बताते हैं सर, इतना अच्छा आप बताते हैं, मेरे को लगता है कि हर ध्यानी को अक्रॉस द ग्लोब वो ध्यान 1 घंटा आपका वीडियो लेके कि मेडिटेशन विद गाइडेड मेडिटेशन इन हिंदी विद पत्री जी, सर जरूर करना चाहिए। उसमें आपने पूरे जीवन का जो मूल तत्व है इतने साधारण भाषा में सर आपने समझाया है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता सर। मैं रोज उसको सुनता हूँ 1 घंटा और बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को वो। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सब इसको रोज करे, रोज करे, रोज करे, बहुत आनंद आएगा सर इसमें। थैंक यू बाबा। और सर मेरा प्रश्न ये है कि जो हम ध्यान करते हैं सर, 1 घंटा 2 घंटा जो मेडिटेशन करते हैं सर, जैसे आपको मालूम है कि मैं 10 साल से सत्संग भी जा रहा हूँ, वहां भी क्या है सर, हमेशा ये बताया जाता है, हमारे गुरु बोलते हैं कि तुम हर समय ध्यान में रहो, ऑल द टाइम यू शुड बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट। 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करना अलग बात है, पर हर समय मेरा वो ध्यान लगा रहे परमात्मा में कि मैं नहीं करने वाला, जो हो रहा है वो करा रहा है। तो इस पर सर मेरे को कुछ और गाइडेंस दीजिए ना। जब आप ध्यान में रहते हैं, when you are closing your eyes, yes, you must be in meditation. There should be no thoughts in the mind. Okay sir. But जब आप आंखें खुलते हैं, हाँ, खोल लेते हैं, दुनियादारी में हैं आप, हाँ then sir, you are not in a meditative state. That's wrong. You are in a mindfulness state. यानी आप जागरूक अवस्था में हैं, अत्यंत जागरूक अवस्था। mindfulness, it is not called a meditation. But थोड़े लोग दोनों को भी मेडिटेशन करते बोलते हैं, ये गलत बात है। अच्छा सर। Meditation happens only when you are closed eyes, when you are not doing any other work. Okay sir. When you are doing any other work, you must be aware of that work. अगर awareness is there. अगर आप सब्जी काट रहे हैं, तो your mind also should be there. That's why Buddha said, walk while you are walking, eat while you are eating. Yes sir. That is mindfulness. Okay sir. Mindfulness is एक ही मन का होना, तन मन का एक जगह होना. So when you are doing your day-to-day course, you have to be mindful. That is not called a meditation. Meditation is when you close your eyes, sit and close your eyes. So these two are different things. And जितना आप ज्यादा meditation में रहोगे, उतना ही आप mindful बनोगे. Mindfulness आएगी उसके. Understand? Yes sir. Both are generally called as meditation. That's the wrong thing. That's why the confusion arises. Okay sir. When you differentiate these two words, there is no confusion. जब हम आंख बंद कर रहे हैं तो वो हमारा मेडिटेटिव स्टेट हुआ, और बाकी जो हम जो भी कर रहे हैं आंख खोल के, उसमें हमको बी अवेयर और माइंडफुलनेस की स्थिति हुई हमारी. In meditation, mind emptiness. Emptiness. In aware state, mindfulness. Mindfulness. Not absent-mindedness. Not absent-mindedness. That's the best word to explain. That's the mind emptiness and the mindfulness. Yeah. ठीक है ना? Yes sir. Absolutely fine. Thank you sir. Thank you Baba. Thank you so much sir. Yeah.
थैंक यू किशन जी, थैंक यू सर। आज पता चला मुझे भी कि माइंडफुलनेस, जागरूकता के साथ हम एक ही काम जो करते रहते हैं वो माइंडफुलनेस हुआ, और जो आंख बंद करके हम सांसों के साथ रहते हैं वो ध्यान हुआ। थैंक यू सर। माइंड एम्प्टीनेस, माइंड एम्प्टीनेस। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं बुला रही हूँ रीटा जी को। रीटा जी अपना क्वेश्चन बताएं। हाँ प्रणाम सर। बोलो बोलो। हाँ सर, सर नहीं दिख रहे हैं मतलब। हाँ प्रणाम सर। सर मैं एक एक्सपीरियंस सर शेयर पहले करना चाहूंगी कि सर 2 दिन पहले पत्री मैडम आई थी और उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, क्योंकि सर ये जब से लॉकडाउन हुआ है मैं घर में रोज खाना बनाती थी सर, और ये लॉकडाउन पीरियड जब शुरू हुआ तो सर पता नहीं इतना ज्यादा सर मैं जैसा बनाती थी वैसे ही खाना बनाती थी, और सर जितना बनाती थी उतना बच जाता था, और रोज मेरे हस्बैंड हमको बोलते थे कि तुम कैसी हो, इतने साल से बना रही हो, इतना खाना बच जाता है। मैं भी समझ नहीं पा रही थी सर कि ये हो क्या रहा है, और ये कैसे मैं इतनी नॉनसेंस हो गई कि मैं इतना खाना बना लेती हूँ सर। फिर मैंने अंदर ही अंदर रिक्वेस्ट किया कि हमको पता चले ये हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो 2 days बैक पत्री मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि 100 जन का उन्होंने खाना बनाया था और वो 700 लोगों ने खाया। देन आई गॉट कि ये खाना बढ़ जाता है सर, और मेरे को ये पता है कि घर में मैं अब सबको बोलूंगी तो सब मेरे को पागल बोलेंगे सर, बट सर इट हैपेंस सर, ये रोज का काम हो गया सर कि मैं जितना खाना बनाती हूँ उतना बच जाता है सर। व्हाट टू डू सर? दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एम सर, जो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ रोज सर, एवरी डे। और सर हाँ, प्रश्न क्या है? और सर मेरा प्रश्न ये है सर रिगार्डिंग रिलेशनशिप, क्या सर हम लोगों को सर कहा जाता है कि हम आए अकेले हैं जाएंगे अकेले सर, अकेले की यात्रा है और जन्मों जन्मों की यात्रा है, हम जब बार बार जन्मते हैं और एक्सपीरियंस के लिए हम पैदा होते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सर हमें रिश्ते नातों की जरूरत है सर? ये मेरा एक क्वेश्चन पहले है सर, फिर इसके आगे मैं आपसे पूछूंगी सर, क्या रिश्ते नाते चाहिए सर? रिश्ते नाते चाहिए, इसलिए तो हम आते हैं इधर। ऊपर भी होते हैं रिश्ते नाते, क्यों नहीं होते हैं? हर जगह होते हैं, और वक्त वक्त पर हम उनको तोड़ते हैं, एकांत में रहने के लिए, ध्यान में रहने के लिए। फिर बाद में फिर रिश्ते नाते होते हैं। तो रिश्ते नाते भी ठीक है, एकांत भी ठीक है, दोनों भी ठीक है ना। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर इफ इट इज इम्पोर्टेंट कि आगे ऊपर भी होते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी होते हैं सर, मैंने भी बुक्स में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा सर, तो सर फिर हिमालय में योगीज व्हाई दे प्रेफर टू स्टे इन हिमालयाज, व्हाई दे गो? अरे बाबा, एक आत्मा की यात्रा में एक जन्म तो एकांत में होना ही है। ये पूरा जन्म 400 जन्म में एक जन्म एकांत में नहीं होगी क्या? वो हिमालय में होगा या जंगल में होगा, उनकी मर्जी है। अच्छा, परंतु एक जन्म तो एकांत में होना ही है हर एक आत्मा को। अच्छा, चाहे वो गुफा में हो, चाहे या जंगल में हो, चाहे वो हिमालय में हो और आल्प्स में हो, कहीं भी हो, समंदर के बीच में हो। अरे अपने अपने मर्जी की बात है। क्यों नहीं जाएंगे हिमालय, क्यों नहीं जाएंगे जंगल? हाँ, आपको जाने का है क्या? जाइए सर मेरे को तो आपसे यही पूछना है सर, मेडिटेशन के पहले सर ये रिश्ते तो इतने सारे बना लिए सर, और सर इनके बीच में रहते हैं, अब सर कोई ध्यान में तो आता नहीं है सर, बोलने से भी नहीं आता है, तो सर बहुत कैसे मैनेज करे सर? थोड़ा तो बताइए ना सर प्लीज। क्या बताने का, आप तो सब कुछ जानती हैं, आप तो पहुंचे हुए हंसी में, आपको क्या बताऊं? नहीं सर, थोड़ा सा बताइए तो नहीं, सर, आपके थोड़ा लिए सा तो कुछ, आपके लिए कुछ भी बताने के लिए नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू रीटा जी, थैंक यू रीटा जी। सर नेक्स्ट है कांता जी कटक से। हेलो कांता जी, कांता दुग्गड़।
करण 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 प्लीज आओ, क्या हो गया? जल्दी से बेटा मेरा नाम आ गया। बोलो बाबा। कोटि कोटि प्रणाम सर। बोलो। कोटि प्रणाम सर। सर अब मेरा क्वेश्चन है, कुछ मास्टर्स कहते हैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए संकल्प कीजिए, पर कुछ मास्टर्स कहते हैं संकल्प मत कीजिए। मेरी आपसे विनती है, आप इस विषय पर प्रकाश डालिए। किस स्थिति में संकल्प करना चाहिए और किस स्थिति में संकल्प नहीं करना? ये अपनी अपनी मन की बातें हैं। जब आप करना चाहते हैं करिए, जब नहीं करना चाहते मत करिए। दोनों का अभ्यास होना चाहिए। संकल्प करने का भी अभ्यास होना चाहिए, ना संकल्प को छोड़ देना भी, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। पर संकल्प करते हैं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। आपका संदेश क्या है दुनिया के लिए, बताइए। सर लॉकडाउन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को जानूं, खुद को पहचानूं और खुद के अंदर, स्वयं के अंदर डूबूं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं मौन में रहती थी और मैंने देखा कि जब मैं खुद मौन में रहती हूँ तो मेरे अंदर भी जो भी अवगुण है या कमियां हैं उनको मतलब देख रही थी, और उनको दूर करने से मैंने अपने विचारों को, भावों को मतलब प्योर किया, थॉट्स को अपने प्योर किया। तो मुझे सबके अंदर वो ही आत्मा दिखाई दे रही थी कि सभी कोई आत्म स्वरूप है, तो सभी को प्यार करे, प्रकृति को प्यार करे, मैंने नेचर को प्यार करने के लिए, देखने के लिए हर समय पेड़ों के पास खड़े होकर लव एनर्जी भेजना, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी के लिए एक प्रेम का ही संदेश है कि सब सभी को प्रेम करें, प्रेम से रहें। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू कांता जी, आपके संदेश के लिए और आपका प्रश्न के लिए। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट है इंदिरा। इंदिरा गर्ग फ्रॉम कोलकाता। यस, नमस्ते सर। और प्रणाम। बहुत एंजॉयमेंट, आनापानासती और एंजॉयमेंट साथ साथ सर। सर पहले एक एक्सपीरियंस, आज जो मैम आपका तो मैं सुबह से देख रही हूँ, लेकिन जो मैम ने डॉल्फिन वाला करवाया था तो मैं सुन रही थी कि वो क्या करवा रहे हैं। तो सर करीबन 2.5 years बैक मुझे ना पानी का म्यूजिक अच्छा नहीं लगता था, तो मैं बोली नहीं, मुझे जो अच्छा नहीं लगता अब मुझे उससे भी प्रेम करना है। इसलिए मैंने वो पानी का म्यूजिक सुनने के लिए मतलब आनापानासती ध्यान और पानी का म्यूजिक लगाई थी। सर पूरा बॉडी पानी से भर गया यहाँ तक। फिर मैं एक सी में चली गई और सी में स्विम करते करते एक बड़ी फिश के साथ मैं पूरा वाटर मतलब पूरा सी और ओशन उस दिन स्विम करके वापस आई थी सर। लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन वश्चन नहीं पूछा था, लेकिन बस उनके साथ बहुत इंजॉयमेंट किया सर उस फिश के साथ। तो इसलिए आनापानासती करने के बाद कुछ भी और कुछ करने का जरूरत नहीं है सर, अगर गाइडेड भी कुछ भी नहीं। अगर आप आनापानासती is the answer for all the questions you have. You are right. Yes sir. सर मेरा क्वेश्चन है, अगर हम जिस जीवन में रह रहे हैं तो ये इल्यूजन है। अब मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलती हूँ, ये इल्यूजन का नाम ही नहीं लेना आप। अच्छा, अगर इल्यूजन है तो आप जन्म लेते ही नहीं। ओके। कोई इल्यूजन में जन्म लेता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। ये इसको इल्यूजन करना, माया करना है, ये गुस्ताखी है। ओके सर। ऐसा गलती कभी भी नहीं करना। ओके सर। ये परम सच है, इसलिए यहाँ परम पाठ मिलते हैं आपको। यस सर। यहाँ आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं। ओके सर। So that's why you come to the airplane, not because if it was illusion you would never come here. ओके सर। तो फिर बाकी का भी आंसर मिल गया सर। बाकी कुछ पूछने को नहीं है,
क्योंकि मैं बोल रही थी परसेप्शन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है। आप तो बोल दिया अगर इल्यूजन नहीं है परसेप्शन ही है, वी हैव परसीव आवरसेल्फ, देन इट इज द आंसर सर। यू आर राइट, यू आर राइट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी का पहचान पूरा दुनिया को दीजिए अपने तरफ से। यस सर, मैं अपना कोशिश कर रही हूँ सर। लेकिन सर ठीक है, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन सर, मैं बहुत लोग को बोलती हूँ लेकिन उसमें से हार्डली 2 या 3 ही आते हैं सर। उस वक्त मुझे लगता है कि क्यों नहीं कर ले रहे हैं। काफी है ना? एक आए तो भी काफी है जिंदगी भर के लिए। यस सर, अगर एक भी आता मैं उसे 40 डे करवा दी और ग्रुप में भी होने से मैं उसे 40 डे ध्यान जरूर करवा। बस ये काफी, एक आदमी काफी है, एक बुद्धा काफी है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और कुछ मेरे लिए आपकी तरफ से बस संदेश? और मस्ती करो बस। वो तो मैं करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, लव यू सर। राइट हो बाबा। थैंक यू इंदिरा। धीरे धीरे सब भेद खुल रहे हैं। कईयों के प्रश्न थे ऐसे जो आज सबको पता चल रहे हैं। सर नेक्स्ट है श्वेता अग्रवाल कोलकाता से। श्वेता। नमस्ते सर। और क्या बात है बाबा? सर बस आपको देख के, आपसे मिलकर सब सवाल भी चला जाता है, सब कुछ नहीं रहता फिर बाकी। आपका संदेशा दीजिए दुनिया के लिए। सर संदेशा भी मैं दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं पिछले 12 सालों से ध्यान में जुड़ी हूँ और 8 सालों से हर साल पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु में जा रही हूँ। आपसे मिलती हूँ, वो मुझे जन्नत लगता है। हर साल मैं उसको मिस नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए। और वहां पर एक बार आपने कहा था कि बुद्धा के जो जी टीवी में बुद्धा एपिसोड्स है, 55 एपिसोड्स आपने 1 हफ्ते में देखा था और वहां पर आपने एक एपिसोड दिखाया भी था कबीर भवन में। तो वो इतना इंस्पायर किया था और आपने सबसे इंसिस्ट किया था कि वो जरूर देखे। और मैं आके मुझे लगा कि जब पत्री सर पूरे दुनिया में घूमते हैं और वो 1 हफ्ते में 55 एपिसोड देख सकते हैं, मैं क्यों नहीं। और मैंने भी 10 दिनों में वो पूरा 55 एपिसोड देखा था। बुद्धा वो देखकर सोच विचार जीवन पूरा परिवर्तन हुआ। और मैं जितने भी लोगों से, मतलब जो ध्यानी हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, मैं उनसे जरूर बोलती हूँ कि बुद्धा जरूर देखे। तो आज जितने लोग आज यहाँ भी सुन रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पत्री सर की तरफ से मैं कहती हूँ कि जरूर देखें। ये पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एपिसोड्स है। और सर जो लोग उसे नहीं देखे ना, वो बुद्धू लोग हैं। बुद्धू लोग हैं, तो जरूर देखिए। और जितने भी लोग देखते हैं वो भी मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको भी बहुत ज्यादा चेंजेस लगा और वो ध्यान में और ज्यादा जुड़ गए हैं। तो सर मेरा सवाल ये था कि मैं जैसे ध्यान कर रही हूँ और जैसा आप बताते हैं कि अपना काम है लर्निंग, टीचिंग एंड स्प्रेडिंग मेडिटेशन, जो मैं भी कर रही हूँ पिछले 2-2.5 सालों से पूनम दी के साथ PSSM से जुड़कर, जिसमें बहुत आनंद आ रहा है। लगता है जीवन में बस यही तो चाहिए। और ध्यान सिखा के जब किसी को अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जब किसी का जीवन बदलता है, तो लगता है कि ऐसा खुशी, ऐसा आनंद तो फिर कोई भी पैसे किसी भी चीज से हम नहीं खरीद सकते। जब किसी के जीवन में बदलाव आया है, चाहे अगर कारण मैं बनी हूँ या ध्यान बना हो, या मैं चैनल बनी कि ध्यान सिखा सकूं, उस लायक बन सकी, तो इसका भी सारा श्रेय मैं आपको देती हूँ, पूनम दी को देती हूँ, आनापानासती ध्यान को देती हूँ। सर क्या हुआ था, जब मैं ध्यान सिखाना शुरू करी लोगों को, बच्चों को, 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के जवान, सब मेरे ग्रुप में हैं जो ध्यान सीखते हैं। और उस बीच में ऐसा होने लगा था कि मुझे खुद का ध्यान करने का समय कम मिल रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ना होता था, पढ़ाना होता था, या क्या सिखाना है। अरे खुद को थोड़ा कम करो और उनको ज्यादा करो बाबा। आपने मुझे मेरे ध्यान में इसका जवाब दिया। यही आप मुझसे ये बोले कि श्वेता, अगर तुम ध्यान सीख करा रही हो और पढ़ रही हो तो तुम ध्यान से ही जुड़ी हो, इसलिए अपने मन में ये मत लाओ कि तुम ध्यान नहीं कर रही हो। आपने मुझे मेरे ध्यान में ये जवाब दिया जैसा भी आपने कहा, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि ठीक है, अगर मैं शायद इसी चीज के लिए बनी हूँ, अगर कारण बनी हूँ, तो बस मैं खुश हूँ। अब ये था कि लॉकडाउन में मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिला है फिर से ध्यान में जुड़ने का, और मैं जूम में ध्यान करवा भी रही हूँ बच्चों को, बड़ों को, हफ्ते में 4 दिन, लेकिन फिर भी मैं दिन भर, मुझे बहुत टाइम मिलता है ध्यान करने का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो एक्सपीरियंसेस या जहां मैं डीप मेडिटेशन में पहुंच पाती थी, अभी ऐसा नहीं पहुंच पा रही हूँ। उतना डीप एक्सपीरियंसेस या फिर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ध्यान की गहराई तक वापस से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो इसका जवाब मुझे दीजिए ना, मार्गदर्शन करिए। अरे बाबा, जब आप ब्याह किए हैं, आर यू मैरिड?
यस सर। ओके, आप शुरू में जब आपकी ब्याह हुई, योर फुल अटेंशन वाज ऑन योर हस्बैंड। यस सर। बट जैसे बच्चे हो गए, आपके बच्चे हैं क्या? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो जैसे ही बच्चे हो जाते हैं, आपका अटेंशन हस्बैंड से आधा कट हो जाता है। सर राइट, हाँ। देन योर अटेंशन इज ऑन योर चिल्ड्रन, और जैसे आगे बढ़ते हैं आपका हस्बैंड से पूरा अटेंशन निकल जाती है। हाँ सर। जब बेचारा किशन रोते हुए बैठता हुआ है। तो कहने का मतलब है, when you are practicing meditation in the beginning, you are totally attending to your own meditation. But जैसे ही आप ध्यान सिखाना शुरू किए, वो लोग आपके बच्चे हो गए, तो आपके बच्चे के ऊपर आपकी श्रद्धा चलेगी, तो आपके प्रति जो श्रद्धा है वो बीच में आतंक आ गया ना, तो ऐसा ही होगा। आपका ध्यान ऐसा नहीं लगेगा जो पहला था। हाँ आपका सर। पति के साथ आपका ऐसा नहीं होगा जो पहला था, पहले दिनों में था। हाँ सर। ये तो नेचुरल फिनोमेना है। वही सर, मुझे लग रहा था कुछ मैं गलत कर रही हूँ। नहीं बाबा, नेचुरल फिनोमेना। अभी आपको पति से लड़ भी सकते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। हाँ सर। नो गिल्ट इन फाइटिंग विद योर हस्बैंड। मुझे जवाब मिल गया सर। थैंक यू सो मच। मिल गया पूनम जी, आपको भी मिल गया। सर एकदम सर इतने अच्छे से आपने समझाया है कि जोर ही नहीं लग रहा है समझने में। एकदम फैंटास्टिक सर। ये तो है, आपने एकदम सही बताया। जब शादी हो के आए तब सिर्फ पति परमेश्वर और कुछ नहीं, फिर बच्चे होते हैं तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब ठीक है, अब सब कुछ तो ठीक है। सर मैं सही जा रही हूँ ना? जो कर रही हूँ बस ध्यान सिखाना, इसी में ध्यान देना और कुछ नहीं। और अब नहीं सोचना। बस थैंक यू सर, थैंक यू। आप जिनको ध्यान सिखाना वो आपके बच्चे हैं, अभी स्पिरिचुअल बच्चे हैं। बिल्कुल, वो मेरा फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है। मैं तो वो लोग जो कहते हैं या अपना कुछ भी शेयर करते हैं तो मैं पूरी तरह उसमें डूब जाती हूँ, उसमें खो जाती हूँ। मेरे को लगता है हाँ इसका क्या जवाब देना है, उनके लिए क्या करना है। देखो तो फिर बस सर वही चल रहा है। आपके दो परिवार में, एक तो तन के परिवार, दूसरा तो आत्मा के परिवार। दो परिवार हैं आपके, दोनों का देखभाल करना आपका फर्ज है। हाँ सर, कोशिश कर रही हूँ वही। थैंक यू सो मच, राइट हो बाबा। हाँ सर। सर ये आज बता रही थी कि इसने सारी ज्वेलरी अपनी सास को दे दी है और सारे पैसे अपने पति को दे दिया है। मतलब मुझे क्या करना है अब? मैं ऐसे ही, मुझे ध्यान मिल गया, आनापाना सती मिल गया, मुझे और क्या चाहिए? और कोई भाई है क्या अभी? हाँ सर है ना। सर नेक्स्ट है साहिल। अच्छा साहिल। मेरा वीडियो आपने शायद बंद किया है भाभी। अलेख्या। हाँ, it's back. तो नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। अपना तो सर द क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत अच्छे से हुआ था सर, जिसमें आपने बहुत कुछ शेयर किया सर। वो वीडियो हमने यूट्यूब में भी डाला है, बहुत लोग देख रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लगा। एंड तो सर मेरे को प्रश्न ये था कि सर अभी जिस तरीके से श्वेता ने कहा सर, जो सीरीज है बुद्धा बोल के, जो सीरीज है जो आजकल नेटफ्लिक्स में भी आया हुआ है और सर यूट्यूब में भी है सर, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो सबको देखना चाहिए सर। उसमें पूरा जर्नी ऑफ बुद्धा फ्रॉम बिकमिंग अ किंग टू हैविंग दिस क्यूरियोसिटी टू नो मोर, टू हैविंग नॉन वायलेंट थॉट्स एंड नॉन वायलेंस पे उसका विश्वास से लेके, उसका जिज्ञासा से लेके, उसका घर छोड़ने से लेके, everything, his enlightenment, his meditation, all his gurus, learning in astral worlds, everything, मतलब इतने अच्छे से डिपिक्ट किया गया है सर। I would really say कि सर आप सबको बोलिए वो देखने के लिए। It is so beautiful, मतलब एकदम लगता है कि आप बुद्ध के साथ रह रहे हो। एंड सर उसको देख के ये लगता है कि आप जिस रास्ते पे हम सबको चलाए हैं, the path that we are walking right now is exactly what Buddha taught 2005 years or 100 years ago. Exactly, in every bit of detailing. Sangham, Swadhyay and Dhyanam. Matlab, this is the three elements that he promoted. He said all three is important, and that's exactly what you say. So my question, because I have been, मैं भी वो सीरीज देख रहा हूँ, तो बुद्धा के साथ इतना मेरे को वो फीलिंग आ रहा है, तो मैं पूछना चाहता था कि सर आपका, we have known that you've had lifetimes with Buddha, you've spent a lot of time with Buddha. So if you could share one of your most significant experience or memory with Buddha himself. मुझे शर्मिंदा मत करिए आप, पहला बात। क्यों सर? क्योंकि
मैं बेशर्म हूँ। वो तो सर हम सब है। नहीं, I don't know any of my past lifetimes directly. और उनसे बताया गया ज्ञान से मैं अपने आप को मानता हूँ। जितना आपका अनुभव आपके लिए सच है, आपका अनुभव मेरे प्रति वो भी सच है। अच्छा। So I don't remember any episode from that lifetime. Okay. There are 4 eyes. Okay. Physical eyes, mental eye, spiritual eye, and wisdom eye. This lifetime is not meant for spiritual eye, it is meant for wisdom eye. ज्ञान चक्षु कहते हैं. So I read books and I understand the whole truth. I read Buddha, I see Buddha serial and then I understand. Okay, then I listen to your experience, then I understand. So my wisdom comes from Swadhyaya and Sajjan Sangat. Not much from my own personal experience, 0 marks. For me, my personal experience in this lifetime is 0 marks. But मैं बेशर्म हूँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. अरे सर तो अच्छी बात है सर. तो सर मैं उसके बाद मैं ये पूछना चाहता था. So I can't tell any experience about from my past lives, Baba, including whatever maybe with the Buddha. So मुझे माफ कर दीजिए आप, क्षमा कर दीजिए. अच्छा अच्छा. नहीं सर, मेरे को लगा आपने कई बार बोला था कि आपने देखा है अपना लाइफ टाइम एंड ऑल दैट. वो ऐसे बोलना पड़ता है, धंधा बनाने के लिए वैसे बोलना पड़ता है, वो अलग बात है. अच्छा. 100 एक झूठा बोलकर 100 शादी भी कर सकते हैं. 100 झूठा बोलकर एक शादी भी करना चाहिए बाबा. शादी के लिए हम झूठ अवश्य हैं. अच्छा. I will tell you, अभी माइक में बोलता हूँ, 1000 लोग हैं, उसको मैं बोलता हूँ, मैं I know all my past life, मैं बोलता हूँ ऐसा. पर तो ये बोलने के लिए है, ये मार्केटिंग मेथड है. All right, sir. So the next question might be also irrelevant, sir. मतलब लेकिन सर मैं ये बोलना चाहता था कि सर बुद्ध जैसे ने कहा कि वो जब बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा तो वो बोले थे कि मैं 2500 साल बाद वापस आऊंगा. तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में तो वही है. Every member of pyramid spiritual society is the future Buddha for that Buddha. We are all one and same. He clearly told, because he had a wonderful third eye. He could see the future. Okay. मैं ऐसा मानता हूँ, देखो इसको जोक मत समझिए आप. जी सर. Buddha was doing meditation at that time. He didn't know anything. How to teach meditation, how to spread meditation, he didn't know. He was only doing meditation by trial and error method. किसी हाल में वो सांसों के ऊपर आ गया है, उसकी तीसरी आंख फट गई है, वो भविष्य में चले गया है, 2500 साल के भविष्य में चले गया है, और वहां देखा कोई दाढ़ी वाला सब ध्यान प्रचार कर रहा है, तो अपने से सीखा वो खुद. अरे अच्छा. Oh my God, that is amazing. You go to the future, you learn from the future and change the present. So Gautam Buddha learned from PSSM masters like Sahil. My God, sir, what are you Then saying? he implemented his life. कैसा है कथा? My God, sir. मैं ऐसा सोचता हूँ मैं. Wow. Unbelievable, sir, unbelievable. तो उससे आपको साफ मालूम होना कि हम गौतम बुद्ध के बाप हैं. क्या बात है स्वामी जी, क्या. मैं नेक्स्ट ये पूछने वाला था, कहीं आप तो गौतम बुद्ध नहीं, लेकिन आपने कह दिया हम उनके बाप. This is the height of arrogance. So we can reach the heights of our arrogance. Yes, because we know when we are anchored in the truth, we can believe in it with this conviction, with this clarity. That ठीक है ना, Buddha. The third eye, you can go into the future, isn't it? Yes. All future and past, they're all parallel lifetimes. True, so you can go to any parallel lifetime. You go to a future parallel lifetime and learn there and implement it in the current lifetime. ऐसा ही होता है, तीसरी अंक से ऐसा ही होता है बाबा. Oh my God! So you're saying that is a possibility, yeah? That is what is happening. Grave possibility. अब जब कभी आप गौतम बुद्ध से मिलते हैं ना, ये पूछना. अरे बाप रे. तो सर, पर्सनल क्वेश्चन टू हिम.
So, sir, then where is our inspiration for learning Anapanasati or discovering Anapanasati and sharing Anapanasati? अपने को कहाँ से पता चला या अपने को ये ज्ञान कहाँ से मिला फिर? अरे बाबा, अपने को इंस्पिरेशन मिलता है पास्ट से, उनको इंस्पिरेशन मिलता है फ्यूचर से. ठीक है सर. I guess it's a great clarity, sir. I mean, this is something we have never thought this. ठीक है बाबा, और मत तंग करो, मैं और हाईलाइट कर जाऊंगा. ठीक है सर. Thank you very much, sir. Thank you. जय हो. पूनम जी, इनसे छुटकारा. थैंक यू सर. इनसे छुटकारा दिलाओ मुझे. सर यू आर ऑसम. छाला 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 मागुंदी. बहुत मजा आया सर. सर बुलाना नहीं आप. सर इसको तो बुलाना ही है. आप इतना खुश होते हैं, इतना हंसते हैं. हम लोग सब पागल है. सर नेक्स्ट है अर्चना अग्रवाल. इन्होंने भी 7 दिन मौन किया था, आपसे बात करना चाहते हैं. अर्चना अग्रवाल कोलकाता से हैं. देखो अपना टाइम हो गया क्या? नहीं सर अभी आधा घंटा से ऊपर टाइम है, आराम से. अच्छा ठीक, बहुत टाइम है. आप देख लेना. हाँ जी मैं देख लूँ. नमस्कार सर. बताइए बाबा. सर आज मेरा 7वां दिन है मौन का, 7th डे. अच्छा सर, आपसे इंस्पिरेशन मिला सर कि अपने मन का कर सकूं. सर ध्यान में आने से पहले तो यही नहीं पता था कि मन में क्या है, खुद को करना क्या है, और अब जो मन में आता है उसको पूरा करती हूँ सर. वेरी गुड. सर 7 दिन का मौन कर सकूं सर, दिस वॉज समथिंग वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी. लेकिन आपका सुनते ही मन में किया कि नहीं मुझे करना है. सर घर में सर वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, अ बिग जॉइंट फैमिली. उसमें मैं छोटी बहू हूँ. उसमें भी मैंने 7 दिन का मौन पूरा किया और घर के सारे अपने काम करते हुए सब की हूँ सर. सर पहले जिस दिन अपने सास को बोली कि मैं 7 दिन मौन करूंगी कल से, तो वो कुछ नहीं बोली. जब दूसरे दिन सुबह मैंने शुरू किया, मैंने मम्मी को ऐसे करके कुछ बोला, तो वो इतना गुस्सा हो गई एक बार के लिए. शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल सर. बस उनको इतना गुस्सा आया मेरा मौन सुनकर कि बोले कि तुम जा ध्यानी बन जा तुम सन्यासन बन जा, अपने पति सर के साथ जाके रह ले, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है. सर वो गुस्से में बोली, लेकिन मैं उनको कुछ भी जवाब नहीं दी, ना ही अपने मन में कोई इल फीलिंग्स लाई उनके लिए, क्योंकि सर ये ऐसा कुछ उन्होंने कभी सुना ही नहीं था अपने घर पर कि कोई ऐसा कर सकता है. लेकिन सर मैंने उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया इन 7 दिनों में. पूरा काम की अपना और अपना मौन भी रखी. अरे वाह. हाँ सर मेरे को कोई बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंसेस या ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत कम ही बोलती हूँ घर पे भी, और मौन में अच्छा लगता था. और मैं ऐसे भी रोज सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में छत पे जाके ध्यान करती हूँ, और बहुत ज्यादा नेचर से बॉन्डिंग है मेरा. सन मून स्टार्स ये सब से मैं बातें करती हूँ. पिजन्स और ना क्रोज कबूतर ये सब से बहुत सुंदर बॉन्डिंग है मेरा सर. नेचर से बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग रखती हूँ मैं. मौन अपने आप में एक खूबसूरत चीज है. टू गो इनटू द मौन इटसेल्फ इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी. यस सर इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सबको करना चाहिए. और ऐसे भी जो ध्यान. यस सर. और सर अपने तो ध्यानी को तो जरूर करना चाहिए. हर एक को करना चाहिए बाबा. महात्मा गांधी हफ्ते में 1 दिन रहते थे मौन. मुंह के ऊपर पट्टी लगाना बाबा. हर एक को, राजा हो या प्रजा हो, संसारी हो या निर्वाणी हो, योगी हो, हिमालय का हो या कोलकाता का हो, सभी के, बच्चा हो या बूढ़ी हो, सभी के लिए चाहिए. ये तो अत्यंत आवश्यक है अपने आप के ऊपर काबू पाने के लिए. एनी क्वेश्चन? हाँ पूरा कोशिश था. हाँ यस सर. सर क्वेश्चन ये है सर, जैसे ध्यान करती हूँ मैं, 3 साल से ऊपर हो गया मुझे, और ना सर मैं मेडिसिन ये सब छोड़ दी, लेकिन अब भूख कम हो गया है, नींद कम हो गई है, सब कुछ कम हो गया है. तो सब रिलेटिव सब मेरे पति को बोल रहे हैं कि इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसको क्या हो गया है. ऐसे मैं पूरे एनर्जेटिक हूँ, सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन लोगों को सिर्फ वो फिजिकल दिखता है कि इसका वेट कम हो गया है,
क्यों हो रहा है इसका वेट कम, इसको अरे कहीं बाबा, वो बीमारी तो नहीं। लोग बेवकूफ हैं बाबा, उनके बातें मत सुनिए आप। सर तो मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े हैं कि एक बार तुम अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो। ये घर घर की सर कहानी मैं बोली कि मुझे, ये घर घर की सर कहानी मैं है। बोली कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे अंदर ज्यादा कैल्शियम एंड विटामिन है आप लोगों से। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ही तो है, तुम्हारा चेकअप करा के इतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि अपने लोगों को बता सकेंगे, देखो विदाउट मेडिसिन ऐसा रिजल्ट आता है, आप लोग भी ध्यान करो। किसी की तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए बाबा, हम अपने भीतर से जानते हैं हम क्या है क्या नहीं है। आप अपनी बात सुनिए, औरों की बात मत सुनिए, घर वालों की बात मत सुनिए। आप घर में रहिए परंतु घर वालों की बात मत सुनिए। ना ही घर छोड़कर भागे, ना ही घर में रहते हुए घर वालों की बातें सुने। चुपचाप रहो घर में, ठीक है ना। सर चुप तो रहते हैं, सबको दिखाई देता है ना कि इसका इतना वजन कैसे घट गया, 15 kg घट गया। ये तो होता ही है बाबा। अरे उनको अपने 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 ऊपर उनको छोड़ देना, आप चिंता मत करें उनके बारे में, ठीक है ना। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो योगी हैं, ऋषि हैं, और उनके बारे में चिंता नहीं करेंगे वो क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे। ये आपके ऊपर, ये आपकी बात नहीं है। वो जो कुछ भी सोचे उनकी मर्जी है। आप दिल के ऊपर नहीं लेना, रोना नहीं। आप औरों की अज्ञानता को आप अपने दिल के ऊपर मत लेना, वो पति भी हो या सास भी हो। You are in a joint family, you have chosen joint family to test yourself, your own energy, your own strength in a joint family. So keep to it. और कभी भी रोना नहीं है। देखो मैं आइंदा ऐसा नहीं देख सकता हूँ। सर मैंने गुवाहाटी में भी ध्यान सेशन रखा था, आपने मेरे से फोन में भी बात किया था सर। अच्छा। गुवाहाटी मेरा पियर है, आपने मुझे माधवी मैम के थ्रू बात किया था फोन में, वहां भी बहुत सुंदर सेशन हुआ था हमारा। और अब आगे भी हमको गुवाहाटी, पूरे आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ध्यान फैलाना। और सर मैं आपके साथ इसमें पूरा साथ दूंगी सर, पूरा नॉर्थ ईस्ट में अपने ध्यान फैलाएंगे सर, और मैं आपका साथ दूंगी इसमें। ये हुई ना कोई बात। ऐसा गुवाहाटी में मुस्कुरा। गुवाहाटी में मेरे पिताजी का जन्म भी गुवाहाटी, हम लोग है तो राजस्थान से, लेकिन हम लोग मतलब 200 साल से गुवाहाटी में है। मेरे पिताजी का जन्म वहीं हुआ था, मेरी माँ का भी पिहर गुवाहाटी में ही है, मेरी नानी का भी वहीं है। तो पूरे गुवाहाटी में चलो मिलकर गुवाहाटी जाएंगे। एकदम सर, एकदम सर, पूरे नॉर्थ ईस्ट, शिलोंग में सब जगह हम लोग ध्यान फैलाएंगे सर। So be it. थैंक यू सर, so be it. थैंक यू अर्चना। सर आज महावाक्य मिल गया कि घर में रहेंगे पर घर वालों की नहीं सुनेंगे। अपना पति का खास कर नहीं सुनना। जी जरूर जरूर। वो बोल रहा है उधर कि सर आप क्या सिखा रहे हैं इसको। सर नेक्स्ट है अर्जुन, उसका क्वेश्चन, वो आ नहीं पाया, उसका क्वेश्चन है, इज कर्मा द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अस और इज एवरीथिंग प्री डिजाइन्ड? The driving force behind every soul is free will, not karma. The basic character of every soul is free will. जो करना चाहते हैं वैसा करिए। अच्छा। पति जो करना चाहता है वही करेगा। वो आपकी सांस करेगी वो जो अपने मन से जो करना चाहती है। आप भी करिए जो अपने मन से जो करने का है। फ्री विल। यस सर। फ्री विल क्रिएट्स कर्मा, फ्री विल एंड कर्मा क्रिएट्स डेस्टिनी। Destiny is created by karma and karma is created by free will. मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी इच्छा है कि आपसे बात करें पूनम जी से। नहीं तो कोई भी देखता है क्या पूनम को? नहीं सर। अच्छा लगता है, मुझे इच्छा है तो मैं आपको देखता हूँ। जी सर। इसलिए ये नहीं कि आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, मैं इसलिए नहीं देखता हूँ। आप मुझे अच्छे लगते हैं बस, इसलिए मैं देखता हूँ आपको, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके पति को आपका अच्छा नहीं लगता तो आपसे बात ही नहीं करता हुआ। फ्री विल मुझे अच्छा लगता है। फ्री विल इज द बेसिक थिंग, वी चूज एंड अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस वी डू कर्मा एंड अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा आवर डेस्टिनी इज देयर। कर्म फल इज डेस्टिनी।
जैसे कर्म वैसे कर्म फल. Karma phal is destiny. Karma is the output of activity of your free will, choice. Why you choose? Because your own free will is always there. आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. Okay. You can take a birth in the physical plane, or you need not take a birth in the physical plane. It's up to you. All those people who have taken the birth on the physical plane, they chose it out of their free will. And many souls are there who they don't want to go to the Earth planet. So they don't come here. आना या नहीं आना आपके ऊपर निर्भर है. जी सर. आएंगे तो कुछ कर्म करना ही पड़ेगा. कुछ कर्म करने से कुछ फल को भुगतना ही पड़ेगा आपको. ठीक है ना बाबा? हाँ सर, उसका एक क्वेश्चन और है, पूछो. आगे बढ़िए. Is the scenario happening around a celestial plane? If so, then how do we support the celestial beings in this transformation period? We don't support celestial beings. Celestial beings support us. Okay. We are to support ourselves and our fellow beings. We are not doing anything for the celestial beings. They are doing everything for us. Yes. ठीक है ना बाबा? ठीक है सर. सर दूसरे को बुलाती हूँ, दूसरे मास्टर को. सर दूसरे मास्टर है महेश, नागपुर से. अच्छा. जिसको हम कोई ठुल्लू बाबा बोलते हैं, कोई गपोड़ी बोलते हैं. न जाने बेचारे को क्या क्या बोलते हैं. हेलो हेलो. क्या बाबा? हाँ सर, नमस्ते. पहले अपने बारे में बताइए, संदेश दीजिए. जी सर, नमस्ते सर. नागपुर से महेश. और सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना था. रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ. You keep your mic in the front of your mouth. ओके सर. वैसा. ओके. अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है. ओके. कुछ दिन पहले एक विजन देखा था कि पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो या और मुंह के पास रखो. अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है. ओके. हमारा अर्थ है, पिरामिड के अंदर मुझे एक विजन दिखा था. और उसके बाद एक मतलब मैसेज आया कि बिकॉज ऑफ जितनी भी पिरामिड्स हमारे पृथ्वी के ऊपर है, वो हेल्प कर रहे हैं हमारे पृथ्वी को इवोल्यूशन के लिए. जितना भी इवोल्यूशन अभी पृथ्वी का हो रहा है. नहीं यार बाबा, समथिंग इज रॉन्ग. सर अभी ठीक है? महेश थोड़ा माइक को और पास में लेके जाओ, अपने मुंह के पास और लेके जाओ. हेलो. हाँ और पास में लेके जाओ. हाँ पास में एक्चुअली. हाँ बोलो. हाँ, बात करो. धीरे से बोलो. महेश सर कुछ आ रहा नहीं है उसका. तब तक मैं दूसरे मास्टर को बुलाती हूँ. सर हरीश भाई. हरीश भाई को दे दो. ये महेश आ गया. बोलो महेश. आवाज नहीं आ रही है महेश. छोड़ दो उनको. हाँ हरीश भाई. हरीश टोंक. हेलो. बोलो बाबा. हेलो. अपना सर मेरा क्वेश्चन है. माइक मुंह के पास रखो. माइक को मुंह के पास रखो. जी सर. बोलो. जी सर. सर कोई भी सोल बुद्धहुड अचीव करने के बाद क्या फिर से रीइंकार्नेट होते हैं क्या? फिर से रीइंकार्नेट होती है हरीश टोंक के जैसे. आपके जैसे फिर दोबारा आते हैं सिखाने के लिए. अच्छा सर. बुद्ध बनने के बाद ही सिखाने के लिए आते हैं ना, तो आप भी ऐसे ही आए हैं ना. अच्छा सर. और क्या. अरे आप और सर आपसे प्रश्न शोभा नहीं देती हैं. नहीं सर मैं ठीक है. कोई बुद्ध से प्रश्न मैं मांगता हूँ, कोई बुद्धा से मैं प्रश्न नहीं मांगता हूँ. आप अपना संदेशा दीजिए बस.
हरीश भाई। हाँ जी, हो गया। हाँ, आपका संदेशा। बस मेरा संदेशा जो सब लोग दे रहे हैं वही संदेशा है। शाकाहार का प्रचार, ध्यान, पिरामिड, सब जगह पिरामिड। अभी ऐसा लग रहा है कि सभी जगह में वेजिटेरियन की रैलीज बहुत ज्यादा होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेजिटेरियनिज्म का प्रचार बहुत ज्यादा होगा। ऐसा उसके बहुत सारे थॉट्स और इनसाइट्स बहुत मिल रहे हैं, कैसे कैसे वेजिटेरियनिज्म को प्रचार करना है। लोग सुनेंगे हमारी बात। राइट हो बाबा। यस सर। हरीश जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, स्क्रीन पे एक प्रश्न आया है, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ? If you want to know the ultimate truth, go in front of a mirror and see what is there in the mirror. वाओ, That is the ultimate truth. क्या बात है सर। Very easy to see the ultimate truth. सर, आपके पास तो प्रश्नों को एकदम इजी वे में आप समझा देते हैं, बुद्धू को भी बुद्धा बना देते हैं सर। सर, नेक्स्ट है माधवी मैडम। अरे बुद्धू से बुद्धा बनने के लिए एक ही लेटर तो चेंज करनी है। यू को आप बनाना, बस ये बनाना, बस उतना ही बात है। बुद्धू बुद्धा बन जाएगा। एक ही लेटर चेंज, ओनली वन लेटर चेंज। यू मस्ट बिकम ये, दैट्स ऑल। यस। और क्या सर? नेक्स्ट है माधवी मैडम। नो माधवी मैडम, चुपचाप बैठो। माधवी मैडम आगे बढ़ो। बेकार लोगों को मेरे सामने नहीं लाना। वो बेकार लोगों को मेरे सामने कभी भी नहीं लाना आप। मैं अगली बार ऐसा गलती करेंगे ना, मैं आपको फेंक दूंगा गटर में। ओके सर, आइंदा मैं बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करूंगी सर। चलो आगे बढ़ो। सर, नेक्स्ट है सुषमा फ्रॉम कोलकाता। वो ठीक है। सुषमा। प्रणाम सर। क्या हो रहा है बाबा? सर, आपसे बात और आपकी बात सुन रहे हैं रोज मुखामुखी में भी, और जो हमारे सेशन चलते हैं कलकत्ता। You keep the mic in front of your mouth. सर, मेरा माइक एकदम पास में ही है मेरे। Is it clear now? Okay, speak loudly. Okay sir, I will speak loudly. Sir, my question was, धर्म क्या है? धर्म क्या है? दो तरह के धर्म होते हैं, स्वधर्म और परधर्म। अपने आप के लिए जो करते हैं वो स्वधर्म है, औरों के लिए जो करते हैं वो परधर्म है। अच्छा। आपकी स्थिति में जो करने का है वो स्वधर्म है, औरों की स्थिति में जो बताना है वो परधर्म है। हर एक की स्थिति अलग अलग होते हैं ना? हाँ। नहीं होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अपना स्थिति अलग है, औरों का स्थिति अलग है। हर एक का स्थिति देखते हुए उनसे बातचीत करना, उनसे वार्तालाप करना, उनको सुझाव देना, यह परधर्म कहा जाता है। अपने स्थिति के अनुसार हम अपने आप को सुझाव दें, सूचना दें, तो यह स्वधर्म है। थैंक यू सर। और धर्म और कर्म में फिर क्या अंतर हो जाता है? अपने कर्म धर्म के साथ होना चाहिए, अधर्मी कर्म नहीं होना चाहिए। धर्म को छोड़कर कर्म नहीं करना चाहिए। अपने कर्म हमेशा अपने धर्म के साथ ही होना चाहिए। अपने धर्म को छोड़कर कर्म नहीं होना चाहिए। मतलब स्वधर्म और पर सोसाइटी के लिए जो धर्म है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए कर्म होना चाहिए। हमेशा हमेशा बाबा, कोई मामूली बात नहीं है कर्म करना, ये असाधारण बात है। बेकार काम करना बुद्धू का बात है, सही काम करना बुद्धा की बात है। और सही काम करने के लिए सही पहचान चाहिए अपने आप के बारे में और औरों के बारे में। जो पहचान लेता है वो धर्म को जानता है, जो नहीं पहचाना वो धर्म को नहीं जानता है। क्योंकि धर्म कैसे जानते हैं? अध्ययन करे तो धर्म को जानते हैं। जो पंडित है वो धर्म को जाने, पामर है वो धर्म को कैसे जाने? हर एक पामर धर्म पंडित बने, धर्म को जानते जानते हम पंडित बनते हैं। पंडित बनने का हम सही काम में, सही कर्म में जुट जाते हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुषमा। ये है सुषमा सर।
सर आपने अभी बताया स्वधर्म और परधर्म, दो तरह के धर्म होते हैं। सर मेरा प्रश्न ये थी कि फिर स्वधर्म क्या है? अपना शरीर, अपना मन, अपना बुद्धि, अपना आत्मा, इन चारों को देखना। अपना शरीर, अपना मन, अपना बुद्धि और अपना आत्मा, इन चारों को देखना स्वधर्म होता है। औरों के प्रति वार्तालाप करना, औरों के प्रति श्रद्धा देना परधर्म होता है। औरों की बॉडी, औरों की मन, औरों की बुद्धि, औरों की आत्मा, औरों की तरफ देखना परधर्म है। अपने आप की तरफ देखना स्वधर्म है। ठीक है चिंतन सर। करो। हाँ जी, आप चिंतन करो, मंथन करो इसके ऊपर। जी जरूर करूंगी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुजा, जो ये लंदन से है। इनका प्रश्न है, मुझे गुवाहाटी से किसी ने दिया है। उनको दिखाइए पहला। वो आ नहीं पा रही सर, खाली अच्छा, प्रश्न ही भेजा है। ठीक है। हाँ, एक सेकंड सर। उनका प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मुक्ति, मोक्षा, निर्वाणा एंड सैल्वेशन? They are all same words, same meaning, different words, same meaning. जल, पानी, वाटर, क्या फर्क है? They are all same. Next question. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगी अलेख्या। अच्छा, इनको दिखाइए। अलेख्या। हेलो, क्या हो रहा है बाबा? Yes, yes. Digital Dhyan Yagna is happening, sir. बोलो बोलो। Thank you so much, Poonam ma'am, for giving me the opportunity. Sir, I was asked to ask questions, but on the chat we actually have a few which I think would be beneficial for all the viewers. This question is very long. Please bear with me. We're all looking and searching for the ultimate truth. But what is the ultimate truth? When we speak of ultimate, we are talking about something which is constant and that which all of us someday will get to know. But we know that we are all parts of the supreme consciousness of each and every individual, including plants, animals, minerals, and much more. जिसको क्वेश्चन नहीं करते, the question cannot be one paragraph, one full page. Question should be only one sentence. I don't like these kind of questions which run for one page. No, I don't like it. Yes, proceed. What are we looking for? We are looking for enjoyment, which comes only through enlightenment. We want to enjoy, but we get enjoyment only through enlightenment. So, and enlightenment comes only through meditation. So we are all ultimately looking into meditation to get enlightenment and to go into enjoyment. ऐसा रहना चाहिए प्रश्न, not one page प्रश्न. ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं लेना आप. Yes, sir. I'll be mindful next time. So there's another question. It's Yes. 5 words. How do you overcome fear? You must move with fearless people. How many words? Answer. Move with fearless people. 6. You must move. That's it. Yes, sir. Just one more. Move with fearless people. Sir, I have another question. All our talents and skills comes from our past lives. Book reading as a habit, is that also something that comes from past lives? Everything comes from past lives. All your character comes from past lives. All your habits, they come from past lives, Baba. Next question. But sir, habits are coming from a future time also. So everything is there, happening right now. Habit of learning from the future comes from the past lifetimes. Gems. Thank you very much. So there were a lot more questions on YouTube, but you have answered them all in the single word meditation. Thank you very much. Right, Baba. Thank you, Alekhya. सर एक टाइम हो गया शायद, देखो बहुत टाइम हो गया. नहीं सर, अभी है टाइम, अभी 15 मिनट टाइम है. अच्छा अच्छा सर, एक प्रश्न था हमारी कोलकाता टीम से कि कोलकाता टीम ने पिरामिड सेवा दल बनाया है. हम लोग सिर्फ आनापानासति ध्यान करते हैं और वही सिखाते हैं.
लेकिन जब लोग यह कहते हैं कि यह रिजिडिटी है, आप समझदार नहीं हैं, सिर्फ आनापानसति से नहीं होता है, तो हमें उस वक्त उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? अरे गेट आउट बोलना उसको। ओके सर। नहीं बोल सकते हैं आप गेट आउट? कह सकते हैं एकदम। मैं फियरलेस पर्सन के साथ रहती हूँ, आपके साथ रहती हूँ सर। वैसे ही बोले, गेट आउट बोलो उसको। यस सर। सर एक प्रश्न आया इस पर स्क्रीन पर, व्हाट इज निर्वाणा? When you are not suffering for any reason, you are in nirvana. Okay. You have a stupidest husband, but are you suffering because of him? Then you are in nirvana. In spite of your stupidest husband, you are in nirvana. Bichara. अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक प्रश्न और था, जैसे कि एक किसी का प्रश्न था कि जब हम कहते हैं ध्यान में कि हम विचार शून्य हो जाएं, विचारों में ना रहें, असुख के साथ रहें, तो उनका प्रश्न ये है कि हम तो दिन भर विचारों में ही रहते हैं, तब ध्यान करने के टाइम विचार शून्य होना कैसे पॉसिबल है? ये बेवकूफ प्रश्न है, आप ही समाधान दीजिए बेवकूफ लोगों को, मैं समाधान नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है सर। Give me a question which is up to my level. जो कोई भी कुछ भी बकता है, मेरे पास नहीं लाना। ठीक है सर। एक प्रश्न और है सर, व्हाट इज अज्ञान? अभी अज्ञान का दूसरा नाम है ये, आपका नाम क्या है? पता नहीं सर, मैं तो बुद्धा बन चुकी हूँ। और क्या नेक्स्ट? सर प्रश्नों की वो खत्म हो गया प्रश्न। सर एक प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड फ्रेंडशिप? Love is it has been spoiled a lot. The word friendship has not been spoiled. The word love has been spoiled by Christians. They talk about Jesus love and they eat chicken and mutton. तो ऐसे लोगों के मुंह से जो लफ्ज निकलती है लव, वो शोभा नहीं देती। Okay. So friendship is the right word. Maitri. Buddha said 4 words. Maitri, Mudita, Karuna, Upeksha. There is no prem there. Okay. There is no word prem in Buddha's dictionary. Maitri is there, friendship. First is Maitri. Second is Karuna, compassion. Third is Mudita, means happiness. Upeksha means indifference. If somebody is materially more than you, then you extend a hand of friendship towards him. If somebody is materially lesser than you, you be compassionate to them. If somebody is morally, spiritually higher than you, you are happy for it. If somebody is not morally right, spiritually right, then you don't hate them, you show indifference, upeksha. तो बुद्धा की डिक्शनरी में ये 4 लफ्ज हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। प्रेम नहीं है, ये क्रिश्चियन वर्ड है। और सारे के सारे क्रिश्चियंस वो प्रेम वर्ड को नाश किए हैं। एवरी क्रिश्चियन, बिकॉज दे ईट चिकन एंड मटन एंड दे टॉक अबाउट लव। Yes. So I don't like the word love at all. That's why in PSSM literature you don't find the word love. Yes, sir. In PSSM we talk only about this Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. 4 words. बोलो मैत्री, मैत्री, करुणा, करुणा, मुदिता, मुदिता, उपेक्षा। उपेक्षा। आप इन 4 लफ्जों को आप डिक्शनरी में जाइए, सब कुछ सीखिए आप। प्रेम नहीं है। ठीक है सर। आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, प्रेम ही करो, मर्जी आपकी। PSSM में ये सब प्रेम नहीं चलता है। मैत्री नंबर 1। Okay, sir. Karuna. And if you are more enlightened than me, I am happy with you. Not that I become your lover. No. I am happy for you.
And if you are doing wrong things, I don't hate you. I will put you in a different, I will forget about you. Upeksha is forgetting, indifference. So these are the 4 words, key words for Buddha, for me and for you. Whoever wants to become a Buddha, these are the 4 words. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Right? Yes, sir. Thank you, Baba. थैंक यू सर. सर वो महेश जी को फिर से एक बार देंगे अलख्या, वो वापस आना चाह रहे हैं, उनका प्रश्न है. आप उनका प्रश्न सुनो, आप उनके मुंह से, आप अपने मुंह से बताइए, मुझे अच्छा लगेगा. अच्छा, निकालो सर. आप उनसे बात करो. मेरे पास है उनका प्रश्न सर, 1 मिनट. आप ही डालो. सर उनका है, हाउ टू कम्युनिकेट with extraterrestrial or highly evolved or higher beings for our spiritual growth. You don't have to communicate. They will communicate with you if they think it is necessary. You keep Okay. quiet, do meditation. Okay. If they find it necessary, they will communicate to you. You are not the initiator of communication. You spend your time in meditation. They will initiate communication. If they desire it so. Yes. Okay? हमारी स्तर और हमारा ही ज्ञान या हमारा स्तर ऐसा हो तो वो कम्युनिकेट करेंगे, हम नहीं कर सकते. When the disciple is ready, master will appear. Yes. You have to make yourself eminently ready. आप ये बात उनको बताइए आप. जी सर, वो सुन रहे हैं तो ठीक है फिर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन किशन वापस से पूछ रहे हैं कुछ. अलेख्या प्लीज किशन को दे एक बार. किशन पोद्दार, आप यहाँ आ जाओ. वो अभी तक खुदकुशी नहीं किया क्या? करूंगा. हेलो, आ जाओ. हाँ पूनम, तुम्हारी आवाज आ रही? हाँ सर मेरा एक प्रश्न है. हेलो, बोलो. सर जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में क्या डिफरेंस है? अब शरीर, हरेक को विदेह मुक्ति मिलती है, यानी शरीर छोड़ते ही सब चीजों की जानकारी मिलती है, परंतु इस वक्त हमें जानकारी मिलना चाहिए जब हम शरीर में हैं. जीवन हाँ. शरीर छोड़ने के बाद सबको मुक्ति मिलती है, सबको जानकारी मिलती है. सभी लोग आकाश निकट में जाते हैं, सब कुछ मालूम होता है. यहाँ मालूम होना ही जीवन मुक्ति, यही है एनलाइटमेंट. अच्छा, वो एनलाइटमेंट है. यहाँ जीते जी मालूम होना, वही हमारा जीवन मुक्त और विदेह मुक्त हुआ. दैट इज एनलाइटमेंट. उधर जाके मालूम होना वो नहीं. ओके सर, ओके सर. एक प्रश्न और है मेरे माइंड में. ऐसे में एक बार गार्डन में बैठा था, मेरे मन में आया कि 4 लफ्ज मेरे माइंड में आए सर. एक था खुश, एक था सुख, एक है आनंद और एक है परमानंद. इन चारों का क्या मतलब है सर? क्या डिफरेंस है इन चारों में? आई रिपीट माई क्वेश्चन. सुख, खुश, आनंद और परमानंद. सुख is of the physical body, kush is of the mind, anand is of the atma, and paramatma is of the sarvatma. सर सेम आंसर मेरा आया था, मेरे को एकदम सेम आंसर आपने बताया सर. थैंक यू सो मच. अरे आप तो परमात्मा हैं बाबा. आप अपनी बीवी को कैसे झेल रहे हैं आप? हाँ नहीं सर, झेल नहीं रहा हूँ. उनको समंदर में फेंको, बे ऑफ बंगाल में फेंको उनको. नहीं सर, इतना अच्छा काम कर रही है. ऐसा? हाँ सर, शुरू में बहुत मेरा मन चला था सर. मैं आपसे शेयर करता हूँ आज. तो सर मैं बहुत परेशान था उस समय. आज मेडिटेशन में नहीं आया था, इसको लेके भी नहीं आया था, और मैं बहुत परेशान था सर. मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी. बहुत मैंने खुद को टॉर्चर किया है सर. फिर हार के सर मैंने मेरे गुरु से बात की, तो मेरे गुरु ने एक ही बोला, वो जो करती है तू उसको करने दे, तू अपने ज्ञान ध्यान में रहे, और फिर देख जो होना होगा वो बहुत अच्छा होगा. सर वो दिन, आज का दिन, मैंने कभी इसको नहीं रोका. मुश्किलें आई मेरे को, मेरे माइंड ने मेरे को बहुत बेवकूफ बनाया, पर धीरे धीरे सर बात धीरे धीरे समझ में आने लग गई. और आज सर सब चीज आपके सामने है सर. अरे वाह,
इसलिए हम हरी बाबा कहते हैं आपको। Thank you, sir. Thank you for sharing your beautiful experience with us. Sorry for interrupting, but it's with your permission, sir. Let's start music meditation. Nagalakshmi Madam is here for with her beautiful Saraswati that she has. So मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा, फिर बाद में आगे बढ़ेगी वो। I want to talk to her once. Right. I request one of the moderator to unmute Nagalakshmi Madam. Thank you. There she is. Welcome, ma'am. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే సార్. ఇంకేం సంగతి? సార్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్. లైఫే మారిపోయింది సార్. లైఫే మారిపోయింది. ఇలా చూస్తుంటే ఎంత బాగుందో. పొద్దున్న నుంచి అన్ని వింటున్నాను సార్. చాలా బాగుంది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఓకే బాబా, చలో. మిమ్మల్ని చూస్తే నేను చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతాను సార్. నాకు ఎందుకో తెలీదు. ఇప్పటిదాకా కంట్రోల్డ్ గా ఉన్నాను పత్రి సార్. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఒకసారి అంతా చోక్ అయిపోయింది సార్ మిమ్మల్ని మీరు ఏంటనగానే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొన్న జయరామ్తో మాట్లాడాను. సార్ విన్నా. అందరూ వింటున్నారు సార్. రోజు అన్నయ్య వాళ్ళు శ్రీనన్న రఘు కూడా బెంగళూరు నుంచి కాల్ చేశారు ఆ రోజు మీకు. అది అంటే వాళ్ళు చీకట్లో లైట్ సరిగ్గా లేదు, అందుకని మీరు పోల్చుకున్నట్లేదు. బట్ అందరు మాట్లాడుతున్నారు సార్. అందరు చూస్తున్నారు సార్ రోజు. మంచిదబ్బా. ఓకే, వి వాంట్ మెడిటేషన్ ఫ్రమ్ యూ. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. Everybody close the eyes and begin to observe the breathing. कोई भी आंखें न खोले. सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती. मधुर संगीत होते हुए ध्यान में उतर जाएंगे. तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोह क्यों तरसावो. तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोह क्यों तरसावो. तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोह क्यों तरसावो. अब मोह क्यों, अब मोह क्यों तरसावो. अब मोह क्यों तरसावो. अब मोह क्यों तरसावो. तरसावो, तरसावो. अब मोह क्यों तरसावो. तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोह क्यों तरसावो. बिरह बिता लगी बिरह बिता लगी उतर सो तुम आयब जागो
बिरह बिदा लगी उतर सो तुम आयब जाओ तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया अब मोह क्यों कर सावो अब मोह क्यों कर सावो कर सावो कर सावो अब मोह क्यों कर सावो तूने कारण सब सुख छोड़िया अब मोह क्यों कर सावो अब छोड़ता नहीं बनई प्रभु जी हंस कर तुरत बुलाओ अब छोड़ता नहीं बनई प्रभु जी हंस कर तुरत बुलाओ मेरा दासी जन्म जन्म की मेरा दासी जन्म जन्म की मेरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगाओ मेरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगाओ तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया अब मोह क्यों कर सामो अब मोह क्यों तरसाओ 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 अब मोह क्यों तरसाओ तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया अब मोह क्यों तरसाओ कोई भी आंखें न खोलें, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती. Be with your breath. Normal, natural breath, my dear friends.
हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल उद्धर मां दीनं अतिदीनं बलहीनं हे गोविंद हे गोपाल उद्धर मां दीनं अतिदीनं बलहीनं हे गोविंद हे गोपाल उद्धर मां दीनं अतिदीनं बलहीनं हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद विहिता विहीनं विपर्याययानं विहिता विहीनं विपर्याययानं विहिता विहीनं विपर्याययानं विहिता विहीनं विपर्याययानं सञ्चिता सर्व कलुष कलापं सञ्चिता सर्व कलुष कलापं हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद वेदं न जाने
वेद्यं न जाने वेदं न जाने वेद्यं न जाने गानं न जाने गेयं न जाने गानं न जाने गेयं न जाने मन्त्रं न जाने तन्त्रं न जाने मन्त्रं न जाने तन्त्रं न जाने पाद्यं न जाने गाद्यं न जाने पाद्यं न जाने गाद्यं न जाने हे गोविन्द हे गोपाल उद्धर मां दीनम् अतिदीनं बलहीनं हे गोविन्द हे गोपाल हे गोविन्द हे गोपाल हे गोविन्द Please observe your natural flow of breath, my dear masters. त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम् त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम् त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षाम्ये दिशचाक्षुषीं सकरुणां करुणां वीक्षाम्ये दिशचाक्षुषीं सकरुणां दिव्यै चिरं प्रार्थिताम् शम्भो लोकगुरो शम्भो लोकगुरो मदीय मनस सौख्योपदेशं कुरु शम्भो
शम्भो शम्भो लोकगुरो मदीय मनस सौख्योपदेशं कुरु शम्भो लोकगुरो मदीय मनस सौख्योपदेशं कुरु शम्भो अपार करुणा सिंधु भैरवीशं महेश्वरम् 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 कापालीशं भजेऽहं कृपालवालं शङ्करं कापालीशं भजेऽहं कृपालवालं शङ्करम् अपार करुणा सिंधुं भैरवीशं महेश्वरम् अपार करुणा सिंधुं शबाचर कुलहरं शबाचर कुलहरं शबाचर कुलहरं शबाचर कुलहरं गमनीय कल्पकामि कावरं शबाचर कुलहरं कमनीय कल्पकामि कावरं शबाचर कुलहरं कमनीय कल्पकामि कावरं कृपाद्यादि मुनिविनुतपरं कृपाद्यादि मुनिविनुतपरं कृतापहरं तरुणेन्दुधरं कृपाद्यादि मुनिविनुतपरं कृतापहरं तरुणेन्दुधरम् अपार करुणा सिंधुं भैरवीशं महेश्वरं कापालीशं भजेऽहं कृपालवालं शङ्करम् अपार करुणा सिंधुं
पदाम्बुजं सुरापदाधरं हरं सुरार्चित पदाम्बुजं सुरापदाधरं हरं धराधरादिभूषणं धरादिपञ्चकात्मकं धराधरादिभूषणं धरादिपञ्चकात्मकं पुरान्तकं भवं पुरान्तकं भवं पुरान्तकं भवं पुरान्तकं भवं मयूर पुराधिनायकं शिवं पुरान्तकं भवं मयूर पुराधिनायकं शिवं निरामय निरञ्जनं निरामय निरञ्जनं निजानन्दानुभवप्रदं निरामय निरञ्जनं निजानन्दानुभवप्रदम् अपार करुणा सिन्धुं भैरवेशं महेश्वरं कपालीशं भजेऽहं कृपालवालं शङ्करम् अपार करुणा सिन्धुं Please don't open your eyes. Be with your natural flow of breath, my dear masters. गंगाधीश्वरं शंकरं शंकरं गंगाधीश्वरं शंकरं गंगाधीश्वरं शंकरं गंगाधीश्वरं शंकरं गंगाधीश्वरं शंकरं संगमेश्वरं गंगाधीश्वरं शंकरं संगमेश्वरं गंगाधीश्वरं शंकरं अंगमार्ध नारीश्वरं
अङ्गमार्ध नारीश्वरम् अङ्गमार्ध नारीश्वरम् अङ्गमार्ध नारीश्वरम् अङ्गमार्ध नारीश्वरम् शङ्खदाधरं शिवं शङ्खदाधरं शिवं शङ्खदाधरं सदा शिवं गङ्गाधीश्वरं शङ्करं सङ्गमेश्वरम् गङ्गाधीश्वरं शङ्करम् मङ्गलाकारं महादेवं मङ्गलाकारं महादेवं मङ्गलरूपं महेश्वरम् मङ्गलाकारं महादेवं मङ्गलरूपं महेश्वरं लिङ्गोद्भव वैभवं लिङ्गोद्भव वैभवं लिङ्गोद्भव वैभवं लिङ्गोद्भव वैभवम् ओंकारनादं सदा शिवं ओंकारनादं सदा शिवं ओंकारनादं 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 सदा शिवं गङ्गाधीश्वरं शङ्करं सङ्गमेश्वरं गङ्गाधीश्वरं शङ्करं शिवशङ्करं शिवशङ्करं शिवशङ्करम् Last 30 seconds. Be with your breath. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please open your eyes. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for such a beautiful, divine session. It was really great to have you and sing for all of us and take us deeper in our meditation. She has been part of PSSM from past 10 years, and she's a very trained scholar, Carnatic vocalist as well as guru. I really express my gratitude for her to come here and help us dive into this beautiful meditation. Now I would like to hand over to Charu and take further. And thank you so much. Thank you. Thank you, Nandini. Thank you, Naglakshmi ma'am.
Thank you to everybody who participated in the meditation right now. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप में से कितने लोग थे जो पहली बार ध्यान में बैठे? आप में से कितने लोग हैं जो ध्यान करते आ चुके हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? प्लीज हमारे साथ वार्तालाप कीजिए, हमें चैट पर बताइए, हमें जूम कमेंट्स पर बताइए. आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है. अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करूंगी, आनंद करुणेश जी. आनंद करुणेश experienced a Zen awakening at the age of 19. तो बहुत ही कम उम्र के थे ये जब इनकी जर्नी शुरू हो गई थी. And the Zen awakening at the age of 19 opened the door to an expanded spiritual awareness. He has engaged in meditative and spiritual practices for the past 35 years. He is the founder of Path of Joy, a humanitarian organization dedicated to spread the teachings of Mahadevi Lakshmi, Mahadevi Saraswati, Mahadevi Parvati, and other ascended goddesses from different spiritual pantheons of the world. He worked as the chairman of the finance department at the Eisenberg School of Management, University of Massachusetts, Amherst, from January 2011 until August 2018. सर हमारे साथ हैदराबाद में भी थे, DMC में ध्यान महाचक्रम, महिला ध्यान महाचक्रम जो ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर में लास्ट ईयर. एंड सर ने सोल फीलिंग्स पर अपनी बुक जो है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, उससे हमें एनलाइटन किया था. हमें डिवाइन फेमिनिन के बारे में बताया था, जिसके बारे में आज वो दोबारा बात करने वाले हैं. और हम सब बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि फेमिनिन मतलब वुमन, तो हाउ कैन अ मैन टीच अस अबाउट द डिवाइन फेमिनिन? बट author Anand Karunesh, Sir Anand Karunesh, he is here to break those myths, to break those stereotypes, and to enlighten us about the divine feminine, to teach us more. I humbly request Sir to just be online. I think Sir is already there. Moderator team, if you can please kindly have him come online. तो हम सुनेंगे थोड़ा इनसे बारे में. His book 1000 Seeds of Joy is about his experiences with goddess Lakshmi and goddess Saraswati. तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने आनंद करुणेश जी के थ्रू हमारे लिए क्या-क्या बातें रखी हैं आज इन स्टोर. आइए सुनते हैं. Over to you, sir. Thank you, Charu. Thank you, Pallavi, and a big thanks to Brahmarshi Patri ji for organizing this. What an amazing session. It's morning here in the US, Eastern Coast, so I was just getting ready and got here. So I missed most of the program. But how was the program? Amazing? A lot of dhyan? Nice. So we can maybe, I can tell you a little bit about my journey. Then we can do a little meditation. And after that, we can do some more knowledge and questions. I see there are 75 people on this call about. That's what I saw in the gallery view, right? So yeah, thanks all of you for joining. This is amazing. So good morning to you from the US. I know it is good evening over there. So we are so reminded of the oneness of everything at this time with what's going on with the coronavirus, and especially in Western countries, everything is slowed down. But it is such an opportunity to turn inward, and that's what today's Dhyan will be about. We will see how we can turn inward, and we are. We will do that in the Dhyan. So let me tell you a little bit about my journey. So as Charu said, when I was 19, even before 19, let me take you there. So when I was very, very young, when I was 4 years old, when I was 6 years old, I used to have these very profound experiences, which as a child, I never recognized them as profound. I just was completely in bliss. But I didn't think that I was any different from anybody else. So I thought everybody was living in this paradise. My parents were, my brothers were, because that's how I was living. So, the world was just, full of
those moments of emptiness that we talk about in Zen, becoming one with the mountains, really feeling the energy. I remember one day I was walking, this was in Dehradun, and I was walking just on a street, and there were these fall leaves, yellow color leaves. And I still get tears in my eyes, if I just think of that moment, what happened, just became one with the leaves. And uh, that bliss is undescribable. There's just no mental noise, no mental chatter. It's a complete fullness and emptiness at the same time. And there are no words. But those of you who've had some childhood experiences, you probably remember, there are these songs. Even Jagjit Singh has this song, ye daulat bhi le lo, ye shohrat bhi le lo, but he's remembering, he's saying, just give me my childhood back, because he remembers those moments. All human beings remember those moments. Some have just forgotten them a little bit more than others, but all have that memory. All can go back to that. And that is why in all spiritual paths, they say going back to your childhood, becoming like that is the way to grow. So then my journey, after that, I lost it all when I was 18. There was a mental process that happened, very painful for 9 months. It was like a crucifixion. And then after that, got the Zen awakening at 19. Then I was physically sick for 10 years, from 24 to 34. And then at 44 years of age, after doing a lot of different practices, lot of, paths, gurus, from Krishnamurti to Osho to, all kinds of readings I did. And then at 44, I had this conversation through my collaborator, Jade Devi, for half an hour. And in that half an hour, I knew that my path was going to change. It was the most profound conversation I had with Lakshmi ji. This was in 2007. The book then began later, 2009. The first version was out in 2012. We thought the book was done, but it was only done 1/3. 2/3 of that was going to come after 2012. But then in that period, we spoke to a lot of goddesses. We spoke to Saraswati ji, of course. After 2012, my own channel opened, and then we spoke to many goddesses. Kept working with Jade Devi also, and my own channel was opened also. So we spoke to Saraswati ji, Parvati ji. Then we spoke to Mother Mary, and that was the most profound time I remember in terms of my heart opening. She's so full of that heart compassion. And then spoke to Bridget, who's a Celtic goddess, and she took us to another levels of depth. So then spoke to Mother Gaia, and that's very important in today's time. Mother Gaia is finally, she's breathing. She's always breathing better, but humans can breathe better with her right now with less pollution. You can see the blue skyline even in Delhi and in Bombay, I think. So this is very nice. And so we spoke to Mother Gaia. And so some of those books will be coming later. I am working with the Eastern goddesses. So my next book that I'm writing right now is with Parvati ji. And then the next book from me will be with Kuan Yin Ma. Maybe even Saraswati ji, another book, because she only had one part. And then Kuan Yin Ma, then Tara. And my collaborators working with Mother Mary, Bridget, and that's what's going on. So that's my background. I'm really happy to be here. Let us maybe dive into a meditation. And once we do that, then I'll talk a little more knowledge, and then we can do some question answers. Is that a good plan, Charu? Okay. Okay, so I know you've meditated a lot today, but let's do one more meditation. We will, do the, yeah, go on. Yeah, I'm sorry to interrupt you. I'll just ask you to step a little closer to the mic, because some participants have commented ki awaaz clear nahi aa rahi hai. And another small request, because this digital Dhyaan Yagna is for all the Hindi speaking North Indian. हिंदी में भी बोलते हैं, चलो. जहाँ जितना possible है, आप हिंदी में share करिए.
चलिए, मैं थैंक यू बिल्कुल सो मच। ओवर टू मुझे हिंदी, हाँ मैं देहरादून में रहा हुआ हूँ तो हिंदी आती है। हाँ। जी। अच्छा, तो सब लोग अपनी अभी हम कुछ ध्यान करेंगे। तो मैंने अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताया था इंग्लिश में। तो बेसिकली बचपन से अभी तक कैसे ये सब ध्यान वगैरह शुरू हुआ, देवियों से बातें शुरू हुई 2007 से, और कई देवियों से बातें हुई जिनकी किताबें भी आएंगी। तो अभी हम ध्यान करेंगे। सो सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, और जहां पर भी आप बैठे हैं, wherever you are sitting, feel feel your body। तो एक बैलेंस के साथ फील कीजिए, क्या आपका अगर वेट थोड़ा राइट में ज्यादा है तो थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाइए, लाइक रॉक अ लिटिल बिट दिस वे, तो यू नो वेयर द बैलेंस इज। थोड़ा बैलेंस पॉइंट एकदम लेफ्ट राइट, और फिर एकदम स्थिर होके अपने बॉडी के वेट को महसूस कीजिए, अपने बॉडी के वजन को महसूस कीजिए। एक लंबी सांस लीजिए एंड रिलैक्स। एक और लंबी सांस, और सब कुछ जाने दीजिए, जो भी विचार है ब्रीथ इट आउट, ब्रीथ इट आउट, निकाल दो। एक और लंबी सांस, और भी हल्के हो जाइए, सब कुछ जाने दीजिए। अपने शरीर के वजन को महसूस करते रहिए। देखिए जैसे कि आपका शरीर और भी भारी हो गया है। वेट को महसूस करिए, कितना प्यार से धरती माता, मदर गाया आपको अपनी गोदी में रखती है। तो धरती माता को महसूस करिए, भले ही चेयर पे हो, जमीन पे हो। आप इतने प्यार से इस ग्रह पे बैठे हो इतने टाइम से, थोड़ा धन्यवाद दीजिए। एक और लंबी सांस, और जाने दीजिए। अभी आपके आसपास कुछ भी, कोई भी आवाज हो, उसको सुनिए। हर आवाज को दिल से सुनिए। कोई भी आवाज को जज नहीं करिए, अच्छी है खराब है, जो भी आवाजें हैं एकदम दिल से सुनिए। अगर आपको साइलेंस की आवाज सुनाई देती है, उसको भी सुनिए। एक शांति में भी, जहां कुछ नहीं हो रहा होता है, एकदम शांति होती है, उसमें भी एक आवाज होती है। वो धरती माता की आवाज है, हमेशा रहती है। अपनी सांस को देखिए,
सांस अंदर जाता है, सांस बाहर आता है। अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। देखते रहिए। जब सांस अंदर आता है तो शरीर में महसूस करिए कैसे छाती और पेट फूलता है। जो भी सेंसेशन आते हैं उसको पूरा महसूस करिए। शरीर में जो भी स्पंदन होता है, जो भी बॉडी सेंसेशंस होते हैं, को पूरा महसूस करिए। सांस लेने में भी बहुत सेंसेशन महसूस होते हैं। सांस लेते हुए देखिए कि पूरा शरीर सांस ले रहा है। अपनी पैर की उंगलियों से शुरू करिए और जैसे आप सांस ले रहे हैं, देखिए उंगलियां भी सांस ले रही हैं। जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपकी पैर की उंगलियां भी रिलैक्स हो जाती हैं। इस तरह शरीर को पूरा देखिए। अपनी एड़ियों को देखिए, पैरों के नीचे के टांगों को देखिए, सांस के थ्रू देखिए। हर बार सांस अंदर आता है तो जैसे खुशी प्यार की एनर्जी आती है अंदर, और हर बार सांस बाहर जाता है तो एकदम रिलैक्सेशन महसूस होता है, शांति, आजादी। फिर आपके नीज, घोड़ों को देखिए, उनको भी रिलैक्स होने दीजिए। अपनी थाइस को महसूस करिए। सांस अंदर आता है, एनर्जाइज, और सांस बाहर जाता है, रिलैक्स। अपने पेट को महसूस करिए। सांस अंदर आता है, एनर्जाइज, और सांस बाहर जाता है, रिलैक्स। पेट से ऊपर छाती, सांस अंदर आता है, एनर्जाइज, सांस बाहर जाता है, रिलैक्स। पूरा शरीर सांस ले रहा है। अपने हाथों को महसूस करिए, कंधों को, आर्म्स को, एल्बो, फिंगर्स। Energize with in breath and relax with out breath.
और अपनी गर्दन को महसूस करिए, कितना टेंशन रहता है गर्दन में पीछे। Breathe in and breathe out. और अपने चेहरे को महसूस करिए, आँखों को। Breathe in, breathe out. नाक, लिप्स, कानों को महसूस करिए। और completely relax. और सर को महसूस करिए, सर के ऊपर सहस्रारा चक्र। Breathe in, breathe out. पूरे शरीर को महसूस करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक ऐसा संकल्प रखिए कि आधा घंटे या 1 घंटा जितना भी आप मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम आप अपने सारे रोल्स को छोड़ दीजिए, सारे बिलीव्स को जाने दीजिए, खाली उस टाइम। तो आप अगर एक हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो खाली आधे घंटे के लिए आप अभी नहीं है, वो रोल नहीं है अभी आधे घंटे। और देखिए कैसे लगता है। अगर आपका कोई जॉब है और आप कोई पोजीशन पे हैं तो आधे घंटे के लिए आप वो कुछ भी नहीं है। ये सारी बिलीफ्स दिमाग में रहती है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है। इन सबसे टेंशन होता है, तो उनको ड्रॉप कर दीजिए खाली आधे घंटे के लिए। वापस आप फिर वाइफ बन जाएंगे, हस्बैंड बन जाएंगे, फिर आपका रोल होगा, सब कुछ होगा। जैसे नींद आती है तो थोड़े टाइम के लिए अपन सब रिलैक्स हो जाते हैं, फिर सुबह होता है तो फिर सब कुछ चालू हो जाता है। तो मेडिटेशन में जस्ट फॉर हाफ एन आवर यू आर नोबडी। आप कुछ भी नहीं हैं आधे घंटे के लिए। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। एकदम खालीपन को महसूस करिए। इससे डरिए मत। खालीपन होने से भरपूरता ज्यादा आएगी। जब आप मेडिटेशन से जागेंगे तो फिर आप अपना रोल और भी अच्छी तरह से निभाएंगे, तो आपको हेल्प करेगा आपके रोल में। हम ये नहीं कह रहे कि आप पहाड़ पे जाके सब कुछ छोड़ दीजिए, खाली है जब जितना मेडिटेशन करते हैं उस टाइम के लिए नो रोल्स,
नो बिलीव्स, सब कुछ छोड़ देना है, एकदम गहराई में चले जाना है, सब कुछ छोड़ के, केवल इस टाइम के लिए। अपने शरीर के बारे में भी काफी बिलीव्स रहती हैं आपको, कई तरह के विचार, उनको भी छोड़ दीजिए। कोई सोचता है मैं बहुत पतला हूं, कोई सोचता है बहुत मैं मोटा हूं, कोई सोचता है मैं बहुत सुंदर हूं। These are all beliefs. ये आप नहीं हो। इन सबको मेडिटेशन के टाइम जाने दो, कंप्लीटली जाने दो। आपकी बॉडी कैसी है, आपका कैरियर कैसा है, क्या पोजीशन है, आपका क्या रोल है, आप मदर हो, फादर हो, डॉटर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सब जाने दो, खाली मेडिटेशन के टाइम के लिए। और सांस अंदर लीजिए, और हर बार सांस बाहर निकालते हैं तो सब जाने दो। आप एक एम्प्टीनेस हो, खालीपन। ये भी विचार हो कि मैं इंडियन हूँ, कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कि हैदराबाद में रहता हूँ, इसको भी जाने दो। इंडियन होना भी एक बिलीफ है। आप कुछ नहीं हो। आवाजों को, जो भी आवाजें हो रही हैं, सुनते रहिए, दिल से सुनते रहिए, विदाउट जजमेंट। सांस को देखते रहिए, सारे जजमेंट चले गए, सारी बिलीफ्स चली गई। आप खाली एक लाइफ एनर्जी है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। जब ये सारे विचार, बिलीफ्स चले जाएंगे तो आपको अपनी भरपूरता महसूस होगी। आप हर चीज को पूरा महसूस कर पाएंगे।
ये ध्यान एम्प्टीनेस का सरस्वती जी का है, तो उनका मैं एक मंत्र बोलूंगा एंड देन वी विल कम आउट। आप खाली शांत रहिए। ॐ ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। सांस को देखते रहिए और अपने पैर की उंगलियां हिलाइए, हाथों की उंगलियां भी हिलाइए और अपनी बॉडी को महसूस करिए। वापस बॉडी में आ जाइए और अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाइए और सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। How's everybody? अच्छा लगा? Good, good. I can see all the different people. I'm just looking at everybody who's here. Good, good. तो अब we'll have little more knowledge. ठीक है? So Hindi, English, Hindi, right? ठीक है. Hello Swati, hello Charu. I'm seeing some people. Archana is here. A lot of people are on mute. So I guess अपन कुछ बातें करेंगे सरस्वती जी के जो ध्यान किया ना उसके बारे में, और फिर विल गो इनटू फिर लक्ष्मी जी के बारे में। ठीक है? तो कई देवियां हैं, सब अपना अपना रूप लाती हैं, और ये जो खालीपन का ध्यान है ये बड़ा अच्छा ध्यान है। एक बार एकदम खाली हो जाते हैं तो फिर भरपूरता महसूस होती है, जैसे कि नींद पूरी आ जाती है ना, एकदम 100% यू स्लीप, बिल्कुल विचार नहीं होते। तो जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम नया दिन शुरू हुआ है, राइट? और वो जो नयापन है वो कहाँ गया? वो बचपन में बहुत होता था। बचपन में अपन सुबह उठते थे और ऐसे लगता था एकदम न्यू वर्ल्ड हैज बिगन, राइट? न्यू लाइफ हैज स्टार्टेड। एंड नाउडेज अभी बड़े होने के बाद जब सुबह उठते हैं तो लगता है कि वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग द सेम थिंग फ्रॉम यस्टरडे, राइट? नयापन चला गया। सो वो जो नयापन चला गया, वो नयापन लाना है वापस, क्योंकि ध्यान का मतलब है एकदम ऐसे जीना कि एवरी मोमेंट इज न्यू। नयापन हमेशा चलता रहता है।
So that is why emptiness is important. So जो emptiness है, that is your higher self. एकदम empty. But still we call it self. Why is that? क्योंकि there is a slight balance. There is a witness. Because of the witness, we call it higher self. And that is the highest level where you are in complete emptiness. You're a witness to the whole universe, moment by moment. And it's a new moment. Every moment is a new moment. But then that higher self expands into even more bliss. Its nature is bliss. It's always expanding. So when it expands into more bliss, the opposite is created. जो उसका जो विपरीत रूप है, वो भी उसकी भी उसका भी क्रिएशन होगा. तो वो जब क्रिएशन होता है तो फिर the soul comes into play. Soul is जो आत्मा है, वो एक हायर सेल्फ का छोटा सा भाग है. तो आप सबकी आत्माओं का एक हायर सेल्फ है. आप जुड़े हुए एक तार के जैसे जुड़ा हुआ है. So you are much more infinite than you think. अभी तो एक soul में हो, but soul is connected to your higher self, which is infinite. Soul भी infinite है, मगर higher self is even more infinite. So then वो जो higher self expands, तो उसका opposite create होगा, तो फिर soul आती है. फिर soul के बाद, soul is filled with love, joy, compassion, all the colors, 1,000 colors of the soul, seeds of joy. फिर उससे you come into creation. From that primordial joy, physical manifestation happens. And so we are falling. Higher self, soul, physical manifestation. Physical manifestation के बाद the mind gets created. Abhi the nature and the animals don't have so much of the mind, but they've been around for millions of years. So the mind comes later. Because we are falling, mind is also further falling. Because all the suffering is in the mind. Body में थोड़ा suffering था. Higher self में तो एकदम bliss था. Soul में maybe slight, little bit less of what you was there in the higher self. Physical उसमें आ गए तो फिर थोड़ा pain and joy और suffering हो गई, but very limited. Most of the suffering is in the mind, and most of the suffering is in the mind with human beings. Animals don't suffer so much. They might have pain, मगर उनकी इतनी suffering नहीं होती. So it's a falling, higher self, soul, body, mind. We finished it at the mind, मगर mind से भी नीचे जा सकते हैं आप. Buddhism में that is all part of the mind, the hell realms, these are all imaginative realms where you are suffering even more, There's an imagined suffering. So these are, ghostly realms, hell realms, There are 6 realms in Buddhism. So mind, it is all a mental realm in there. So let's say on this side, you have the worst realms, and then the mind, then the body, then soul, then higher self. So some people, when they die, most people are able to go from body towards the soul realms. But some people, if they die with too much pain, too much suffering, will remain stuck in the earthly realm, and they are going more towards the mind. They're stuck in the mind. So when you see, there are some stories of ghosts and all that. Some of them can be real, They're stuck. These energies are stuck, They are below the body. They are into the mind, There is suffering. So then they need somebody who has a body, or some angel, or some soul, or some human being to release them. And then they are released, But temporarily, if you die with a lot of suffering, you can get stuck. So never die with suffering. Death is one of the most beautiful things that happens to us.
जब अपना जीवन खत्म होता है, मृत्यु तो एक नई जर्नी शुरू होती है. इनफैक्ट अभी हमारी एक तरह से डेथ है. वी आर लिविंग बट वी आर डेड कंपेयर टू जब अपन सोल रियल में होंगे तो कितनी खुशी, कितना जॉय, प्रिमोडियल जॉय, कितना आनंद होगा. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी आर ऑल डेड. हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत कम महसूस कर रहे हैं. खाली एक दिमाग चलता रहता है, एक वरीज चलती रहती है, खाली वो महसूस कर रहे हैं. तो वी आर ऑलमोस्ट डेड. इतनी जो खुशियां जो बचपन में महसूस करते थे वो भी नहीं कर रहे. राइट? तो एक तरह से वी आर डेड. राइट? So what is life? What is death? You have to think about that, And so don't be afraid of death. When the moment of death, especially at this time, there are many people, unfortunately, with coronavirus who are passing away. Even they need a lot of love, joy, and there's to be a different way. We have to rethink the idea of death. Death is just a transition. It's just a transition, they are going into higher realms. Maybe they are lucky, that the time has come and they are going into higher realms. Everybody has their own time. So no fear. When the moment of death comes, have a lot of joy. Family around, love around, go with a lot of, so that is their emptiness. Go into their emptiness. So, ये जो सारा सरस्वती जी का ज्ञान अबाउट एम्प्टीनेस, दैट्स खाली आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना भी आप ध्यान करते हैं, 2 घंटे करता है, एक घंटे करते हैं, उस टाइम के लिए आप कुछ भी नहीं है. आप ना तो वाइफ है, ना हस्बैंड है, ना आप माँ है, ना बेटी है, ना इंडियन है, ना अमेरिकन है, ना आप इंटेलेक्चुअल है, ना आप कोई कंपनी में बॉस है, कुछ भी नहीं है. जस्ट विद ईच ब्रेथ ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट. सारी बिलीव्स को ड्रॉप करते जाइए. Not that, don't be afraid. You will be a very good wife and a very good husband and a very good boss and a very good leader. Right after the meditation, you can be that again. वो सारा रोल फिर चलेगा आपका, because रोल तो चलना है. Just don't be identified with the role. Then you can play the role even better. Then you have all the joy because you are just playing that role, and you are the higher self. You can just play the role. Just be into that meditation, drop all the roles. And when you have to play the role, you will play it much better. Because you were able to relax. वो जो आधा घंटा 1 घंटा एकदम complete emptiness में, you relax from all your beliefs, all your roles. तो इतनी energy आएगी कि जब वापस आप आएंगे जिंदगी में, तो you'll have so much energy to play the role. And then again, you'll have a time to drop the role. So this dropping the role, becoming the role, dropping the role, becoming the role, this is what you have to learn. ऐसा आप करते जाएंगे, तो then you will get the knack. कि जैसे जागते हैं, सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर सो जाते हैं. वैसे ही you become, every day you play the role. You go for your job, you play the role, you come back, you're a mother, all that is there. And then when you meditate, all the roles are gone. So make sure when you meditate, somebody is there to take care of your children and everything is taken care of. Make your situation such that you can meditate. And then go into that emptiness, profound emptiness. Drop करते जाइए, beliefs, roles, सब कुछ, सारे attachments है, सब कुछ छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए. So that is, today's Dhyaan. And now maybe I can talk more about the book. I also want to acknowledge Brahmashri Patriji is here. Namaskar. Lord Namaskar. So nice that you organized this very beautiful digital dhyana. So lovely to see so many people. So I was thinking maybe we can even open to some questions depending on what people want to know. I can talk about that. Otherwise, तो बहुत knowledge है किताब में and other. And we can have a little discussion. And Patriji is also here. We can all talk. Good idea, Charu? Waiting for your next book, Baba. Yes. With your, it's coming. I'm writing Parvatiji's book about
about 300 to 400 words on average per day are coming. So which I will multiply with 200 days or 150 days. It should be a book. So it's by December, I'm hoping. Very good. Yeah, that is more about emptiness. Parvati ji really takes on beliefs. Like Saraswati ji takes on emotions. Lakshmi ji is, about abundance. So Parvati ji deals a lot with beliefs. All the beliefs are gone in a very big way. So that is coming, and a lot of stories about Shiva Parvati ji and on relationships. Like Saraswati ji talks about, she's a mother with children. So with Parvati ji, it is about, adult relationships, man, woman, and so on, So all the suffering, 80% of suffering happens in couples, Husband and wife can't stop fighting. So uske baare mein, how to add that feminine. The relationships have become too masculine. The man is masculine, the woman is masculine, everybody was arguing, fighting. So usse kya hai ki you can't have two masculine energies in a marriage. Both need femininity. Even the man needs femininity and the woman needs femininity. Wo aayegi to relationships will become better. So all that knowledge is coming. Wow. So yeah, any questions? Yeah, Swati? Huh? Thank you so much, sir. I'm so glad and feeling grateful that I'm able to connect to you directly. And I have read your book, and it has really inspired me. Having known the stories, past life stories of all the gods and goddesses, and especially like how Devi Sita, Ram, Yashoda, when they were living human life, they were facing the same problems, but at the same time they could fully connect to their inner self, and they took some time, and then they started accepting and started living in the present moment and changed their reality. They transformed their life from suffering to joy. So this is something that I've really learned. What new thing, and what is my question for you right now is that you mentioned in your book that Lord Rama attracted war with Ravana. His inner war, which was created because of this false belief system that he developed, that he has to fight everything in his life in order to win, and his parents' projection that he has to please his parents. So this created his inner war, and that's how he attracted the war against Ravana. And when he could connect with a higher self and started receiving messages during the war, he could Ravana as his part of self, and he could win the war. So when I read this whole story, that's how I learned that everything that is happening in our life, if we are creating, every incident is creation from our inner world. So if this is the case, this coronavirus we have created, I think this is the manifestation of our inner world. I totally understand intellectually that we have to be in the state of joy to create new world. But what happens that lot of fear is always there. We meditate, but sometimes we can't intentionally transform our state of fear into joy. So can you explain in Hindi how we can deal with this present scenario and transform our state of suffering and fear into joy and create new world? Thank you so much. I like your request because your question is in English, but you want the answer in Hindi. So very good. तो नहीं, मैं बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा. तो बड़ा अच्छा सवाल है रामायण में राम ने जो युद्ध हुआ रावण के साथ, वो उन्होंने खुद अट्रैक्ट किया, वो लक्ष्मी जी कहती है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट एंड देन विल गेट इनटू जो कोरोना वायरस सिचुएशन है. सो हाउ डिड दैट हैपन? तो अभी आप जानते हैं रामायण में 7 खंड हैं.
तो रामायण में केकई जो उनकी स्टेप मदर थी, यू ऑल नो दैट जिस दिन अगले दिन राम का अभिषेक होने वाला था, उनको राजा बनाने वाले थे दशरथ। तो एक दिन पहले केकई ने बोला कि मेरे जो the 2 wishes you have granted me, अब मुझे चाहिए। तो राम को 14 साल वनवास भेजिए और भरत को राजा बनाइए। तो ये जब हुआ, at that time Ram was in his 3rd chakra. He had opened his first 2 chakras, and journey was starting from 3rd, and he was going to go into the heart, so he was there. So this is the place where that you're the king, your worldview and all that, and this came. But उस टाइम पे क्या होता था कि एक वो होता था, प्रिंसिपल्स होते थे, you lived by the पुरुषोत्तम मर्यादा, तो उसमें क्या होता था कि you listen to your father, तो जो फादर ने बोला वो करना है। तो on the one side वो राम राजा बनने वाले थे, और उधर दशरथ ने कहा कि अब तुम्हें वनवास जाना है। तो that is of course higher priority, फादर ने जो बोला वो करना ही है। But this started an internal war. कि what happened, कि slight, with why did the mother, the stepmother say this, कहीं ने ऐसे क्यों कहा, तो थोड़े विचार चले, right? जो वो थोड़े विचार चले उससे then he had a journey, that internal conflict that created, that is what led to the outer conflict eventually. That is what Lakshmi ji says, कि every person, भले ही वो भगवान भी हो या राक्षस हो रावण जैसे, सब एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह की एनर्जी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो ही एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी। ऑफ कोर्स राम वाज वेरी डिवोटेड एंड ही हैड ऑलरेडी लर्नड इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से उनको ज्ञान था। रावण में बहुत ईगो था, राम में ईगो नहीं था, अदरवाइज उनकी नॉलेज करीब करीब बराबर थी। रावण ऑल्सो वाज वेरी नॉलेजेबल, खाली एक फर्क था राम और रावण में ईगो था, और राम्स ईगो वाज मेल्टिंग अवे ऑलरेडी व्हेन ही हैड स्टार्टेड द जर्नी। अगर ईगो होता तो वो मना कर देते। वो जब भरत वापस लेने आए थे उनको बोलते हाँ चलो मैं चलता हूँ वापस, ठीक है। वो अपनी फादर की नहीं सुनते। कई लोग राजा बने हैं जो फादर की नहीं सुनते, ठीक है, तो वो कहानी वही खत्म हो जाती, राइट। ईगो नहीं था इसीलिए तो फादर की सुनी कि नहीं, जो फादर ने बोला है वही करना है। तो दैट ही वाज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग हिज ईगो। तो जब वो ईगो मेल्ट हो गया तो देन वो भी चलता रहा 14 साल, और लास्ट में द लास्ट पार्ट ऑफ द ईगो वाज टू सी रावण आल्सो एज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। When your enemy also becomes like, no judgment remains, he is also suffering, that's why he's doing this. जब वो पूरा जजमेंट चला गया तब उन्होंने वो जो लास्ट वाला बाण है जो मारा, वो भी कंपैशन के साथ, and then that released Ravan. So the whole story of Rama is about dissolving the ego, dissolving the ego, dissolving the ego, right till the end. And the very end, the ego totally dissolves. वो रावण को भी अपना एकदम becomes a part of him, and Ravan gets enlightened from when he dies. So that is the thing. Ki you have to, as you were saying, surrender, Swati, surrender to that. Surrender your ego. Now, in current situation, you're saying कि अभी इतना डर है और उसमें कैसे joy कैसे लाएं, right? That is your question, right? How do we do that? So this is why you have your body, and this is why you have your breath. It's a great resource. इसको यूज करिए। शरीर जो है ये इसको एक होली टेम्पल जैसा समझिए। इसको आप यूज कर सकते हैं। शरीर को महसूस करिए। जब डर लगता है तो शरीर में कहाँ डर लग रहा है? कहाँ पेट में लग रहा है तो वहां सांस लीजिए। छाती में लग रहा है वहां सांस लीजिए। जहां भी इमोशन आपको शरीर में महसूस हो रहा है वहां पर सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसे आप सांस पर ध्यान करते रहेंगे, डर में सांस डालते रहेंगे तो वो डर की एनर्जी विल स्टार्ट चेंजिंग, बदलती जाएगी वो एनर्जी। इट इज बिकॉज वी आर इन द हेड, वी आर नॉट इन आवर बॉडी।
आप कभी भी देखेंगे तो जब डर लगता है, जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो पहले एनर्जी जाने लगती है पैरों से, ठीक है, ऐसे लगता है कि यू बिकम लिटिल शेकी। फिर आपके घुटनों से, जांघों से, जो एकदम डर जाते हैं वो बॉडी में भी नहीं रहते, वो कहीं और पहुंच जाते हैं, वो बॉडी में है ही नहीं, वो खाली एक डर में है, एकदम डर में खो गए एकदम। दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर बॉडी, उनको महसूस भी नहीं होता कि बॉडी कहाँ है, दे आर सो फ्राइटेंड, यू नो। सो द वे टू गेट बैक इज द बॉडी। सांस लेते रहिए, बॉडी को महसूस करते रहिए, and as you do that the fear will go. Now that is one way, but जैसे किताब में लिखा है कि there are levels of consciousness. एक mind है जहाँ डर होता है, फिर body है, फिर there is soul and soul feelings, and then there's higher self and divine beings. So there are other ways. mantras भी हैं, अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप कोई मंत्र है जो आपको अच्छा लगता है, उस मंत्र को आप जप करिए। तो that is, you know, mantras is not a path in the sense कि you won't get enlightenment by mantra. मंत्रा का मतलब मनत्रा, मन की रक्षा करना। तो कई बार बहुत विचार चलते रहते हैं, डर से ही नहीं, कोई स्ट्रेस हो जाती है और दिमाग चलता रहता है, and you don't know what to do, you think you'll go insane, पागल हो जाएंगे, ये दिमाग चले ही जा रहा है। तब आप मंत्रा को यूज कर सकते हैं, तब आप कोई मंत्र उसको बोलते जाइए, सांस महसूस करते जाइए, मंत्र बोलते जाइए। तो एक तो एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी डिवाइन बीइंग से, ठीक है, और वो कनेक्ट होने से भी रक्षा होगी, और मंत्र बोलने से ही आपका दिमाग शांत हो जाएगा। पर एक बार जब शांत हो गया दिमाग, तब मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। Then you stay in the emptiness. But whenever you are feeling you're losing your mind, too much fear, too much stress, then mantras can help, chanting can help, dancing can help. Use your body and your voice, sing, you know, do anything, you know, be in the body, be in the soul. Or then of course, if you can get into that state, breathing ke saath, then, you know, the soul feelings, lot of love in the family, with friends, lot of joy of small things, choti cheezon mein celebrate it, you know. Just the fact that you can look at a tree, enjoy the tree, you know, there's so much joy in the tree. You can look at the blue sky these days, enjoy the blue sky, you know. All of this is physical, you know, enjoy, just delve deep into that, you know, go the way to be with the body is completely be one with it. Feel the sensations, feel the joy, feel the all five senses, you know. Pura महसूस करिए with the breath, and as you do that, the fear mind will start dissolving. So be more in the body, soul, and with mantras, higher self, be in these three levels. So the fear has to go. Fear has no chance. And then you'll feel the joy. Or koi question? There is a question in the chat, Mr. Karunesh, पर उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, since पत्री जी is here, अगर पत्री जी कुछ मुखामुखी करते हैं आपसे तो सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सर, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपका कोई सवाल हो। करुणेश जी, पत्री जी, या आप जब यहाँ आए थे हैदराबाद में, हाँ, फिर वापस चले गए, so I want to know the impact of PSSM on you. Very nice question. I felt with the PSSM, हम जो बातें करते हैं ना, feminine सब जगह, divine feminine, I actually experienced that in a lot of people in PSSM. So that was my experience, you know, the type of love I experienced there, outpouring of love. And more than that, you know, it's easy to love somebody who's written a book, everybody, you know, they give you attention. That is one thing. But I really felt that they actually were living that, you know. So a lot of people have, it could be also that in a place like India, Hyderabad, there is more feminine, that is also possible. But I actually felt that this meditation जो आप सिखा रहे हैं, उससे they are, you know, naturally
in that very feminine place. All the different things you do, shakari, khana, that's very feminine, respecting life. Then meditating every day, using your breath for 2 hours, and all the different things are very aligned. Egypt भी जहाँ pyramid होते थे, वो pharaohs के पहले थे pyramids. Pharaohs ने तो खाली देखा pyramids को, और उन्होंने imitations बनाया. जो great 3 pyramids है, वो pharaohs के बनाए हुए नहीं है. They are made actually by divine energies. उनका तो जो पत्थर भी है इतना जैसे ये टेबल है, इस टेबल में जो हाइट है उसमें लेफ्ट से राइट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. ये होगा 1 मीटर, तो ये होगा 1 मीटर 1 मिलीमीटर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट. तो पत्थरों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अभी दे फाउंड कि जो ग्रेट पिरामिड में जो पत्थर है उसकी फ्लैटनेस इज 25 टाइम्स फ्लैटर देन द स्टोन्स व्हिच आर पुट इन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क. जो मशीन से बने हुए पत्थर है उसमें भी थोड़ा सा फ्लैट नहीं है, वो थोड़ा सा अनफ्लैट होएगा. यू नो दिस एज एन इंजीनियर, बट ग्रेट पिरामिड में जो फ्लैटनेस है इट्स इवन मोर. सो दे वर probably cut by who knows, angels, whatever. So these pyramids, that energy comes from a place in Egypt which was very feminine, from many, we don't even know, 10,000-15,000 years ago. So there is a whole path with the energy system. That femininity is what I experienced, which I was very happy about. And we are working with some of the people. We've created a Divya Naritva group, and in the Divya Naritva group there are people, many women are there, and we do every 2 weeks we do a meditation. और फिर कुछ देवी circles बनाएंगे which are many women from PSSM. So these Devi circles are not going to be khali women circles नहीं होंगे, they'll be circles of feminine. हो सकता है there'll be some men also in them, but femininity, divine feminine will be the principle in these Devi circles. So थोड़ा बहुत there'll be Devi stuff, chant, dance, this, that, to get together, to create that love energy. So this is all what I learned, and I was very happy. I love the idea of connecting with PSSM and spiritually networked organizations is the way of the future, I think. I am tremendously, so much gratitude I have for you, for helping, for the book has reached so many people. Abhi Telugu mein bhi translation aa raha hai, और Asha Gupta ji in Delhi, she's offered to translate in Hindi, so wo Hindi version aayega. So, this cooperation is benefiting us tremendously, and I am very, full of gratitude and honored. Swamiji, when do you see the whole world becoming vegetarian? इसका एक बार हमने बात करी थी, and I will be very honest, we talked to Mother Mary. So I asked कि क्या चक्कर है ये, non-veg खाते हैं यहाँ पे, veg खाते हैं वहाँ पे. So to tell you honestly, there was not so much judgment. So Mother Mary didn't put a lot of judgment कि this is really bad कि लोग non-veg खा रहे हैं. फिर भी I pressed her on it कि भाई still this is life taking life. So she agreed कि there is some karmic thing with this. वो बोली कि अभी अर्थ का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का कुछ कर्मा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट था कि जिसके कारण अभी तक वो चल रहा था, क्योंकि सफरिंग हैज टू बी क्रिएटेड ना, तभी तो कलयुग में है अपन. तो ये जानवर को खाना भी सफरिंग है, राइट. बट दे आर सेइंग द टाइम इज कमिंग सून वेयर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विल एंड. अभी ये नहीं बताया कब होगा, बट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल एंड, एंड जैसे ही दैट विल एंड, आई थिंक देयर विल बी, द होल वर्ल्ड विल बिकम वेजिटेरियन. But no, I don't know the exact time, but there is a time in the near future जहाँ पे this contract is ending. The time will come when we make all the efforts. Yes, अपना will से बिल्कुल होगा. I agree 100%, 100%. We are also, हम भी, I was born a Jain, तो हम तो pure vegetarian है ही वैसे ही. But we are starting some food
ideas also delivering food, which will be based on vegetarian organic principles, starting something in Bombay soon. So how to honor the food, respect the food, energize the food, एकदम एकदम सही है. मतलब vegetarian, my mother could not be happier listening to this. वो हमारा सारा परिवार is very into vegetarian, and vegetarianism is the way it has to go. This was just कलयुगा एक दिन जो बढ़ गया इतना, और इतना अभी बढ़ा है. 100 साल पहले भी इतना लोग कभी भी मीट नहीं खाते थे, मिलता ही नहीं था. इवन बाहर के देशों में हफ्ते में 1 बार खाते थे, अभी दिन में 3 बार खाते हैं. तो दिस इज क्रेजी, ये तो एकदम पागलपन है. और वो भी हफ्ते में 1 बार इसलिए क्योंकि उनको सर्दियों में वेजिटेबल खाना नहीं मिलता था. अब तो वेजिटेबल खाना सब जगह मिलता है, अब तो कोई जरूरत ही नहीं. तो वी हैव टू मेक द एफर्ट्स. आई एग्री. किसी भी आदमी के लिए किसी भी सीजन में ये जरूरत है ही नहीं बाबा. बिल्कुल नहीं. मैं बताऊं कि 500 साल पहले आप एकदम सर्दी में कोई एक भी वेजिटेबल नहीं है और आपको जीना है. अरे सर्दी पे नहीं तो हम जिएंगे नहीं, हम किसी को खा कर नहीं जिएंगे, मरने के लिए तैयार हैं. सही कह रहे हैं. क्या बात है. बिल्कुल सही. अगर वर्तमान महावीर सर्दी के दिन नॉर्थ पोल में रहेंगे, क्या वो खाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं खाएंगे. वर्तमान महावीर नहीं खाएंगे, वो मरने के लिए तैयार होंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही. मारने के लिए नहीं, कहीं भी हो कैसे भी हो. स्पिरिचुअल प्रिंसिपल तो यही कहता है, मगर मनुष्य स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से नहीं जिया. In many places they used to eat. And one more question, when did you know about the PSSM first? सबसे पहले कब मालूम हुआ PSSM का? मैं था वियना में, और वियना में मैं कुछ देख रहा था अपने एक ऐप में बुक के बारे में. बुक वेंट आउट ऑफ स्टॉक. तो बुक आउट ऑफ स्टॉक, मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ. 1000 Seeds of Joy went out of stock in India. So that day you had mentioned the book in Rishikesh. अच्छा. तो जिस दिन आपने बुक मेंशन किया तो आई थिंक 40-50 किताबें बिक गई, एंड आई थिंक वी वर रनिंग लो ऑन द इन्वेंटरी. तो एक दिन में ही देयर वर लाइक 40-50 कॉपीज सोल्ड. वी यूज्ड टू नॉर्मली सेल 4-5 कॉपीज अ डे. सो आई सेड व्हाट हैपेंड. देन सम मैसेज आई गॉट कि पत्री जी recommended this book. फिर आपके बारे में देखा, वेबसाइट देखी, और and that's how I learned about your path. And उसके बाद से I've been very I've seen so much happening. So many, कई लोग बॉम्बे में भी मिले, महेंद्र जी and everybody, and so, and then Hyderabad was amazing. तो बहुत अच्छा. And now your daughter is doing this in America also, so it's very very nice. तो यहाँ पर अमेरिका में भी पिरामिड्स बनाए हैं ना आपने? ऐसा उम्मीद रख रहे हैं. अच्छा, ठीक है. होना ही है. ठीक है. आई विल. इंडिया में हुई तो अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यही मेरे लिए एक परेशानी की बात है. बिल्कुल. अमेरिका so very intelligent, so very religious, so very scientific, why they are not taking it up? इनफैक्ट पिरामिड के अंदर बैठते हैं तो पिरामिड खाली है एकदम, तो वो एम्प्टीनेस का ही मैसेज है कि एकदम एम्प्टी करते जाइए. खाली पिरामिड में बैठिए, ओनली एनर्जी, नथिंग, खाली एनर्जी. एंड सो इट्स अ गुड मैसेज. लेट अस सी समथिंग वी कैन क्रिएट हियर. या आपको यहाँ आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है बाबा. And your book has changed the whole thing for us. It is such a great honor to have a great supporter like you. It was, it's like a dream. I was telling that in that place also. So it is my honor to connect with everybody here. And मैं तो सच में I'm looking forward to जब मैं इंडिया आऊँगा अभी. I'm expecting July, August तक इंडिया में it will be much better. So maybe by then I'll come. So then we will definitely do more with Devi circles. And so मेरा एक vision है पत्री जी, to create these feminine circles from all paths. Doesn't even have to be PSSM. जिसको भी जाना है, आना है, to create these circles of love and joy
deep love, unconditional love, you know, circles in small towns, in places where, you know, people can meet, and they already are. PSSM mein they already do full moon or new moon, but Devis, goddesses, they want to spread this in a big way. कि सारे इंडिया में there should be these circles of feminine where we come meditate, where we do some, maybe some, depending on the interest. Some people like to do yoga, they do some chanting, they do some things for the body, with the voice, for the body and soul. That connection jo hoga, usse kya, when women, there'll be more women in these, there'll be some men, but there'll be initially more women, then more men will join. So these circles of feminine will create like a support system all over India, because when women can have other women and men supporting them, then when they go back to their families, all the problems that happen, everything that happens, you know, they have a place wahan par they can come to their centeredness, find the fullness, find the joy, take that back to the families, you know. So these women circles, Lakshmi ji had said 10 years ago, but now they're saying more feminine circles because they don't want to exclude men. Then tell me why souls take up male bodies? Is it because of the challenge? So see, it is only the transition right now that we are creating these feminine circles. और वो लोग बहुत देवियां तो ये कहती हैं कि फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों हैं. Her soul, every soul has experienced women incarnations and male incarnations. Every soul has experienced. तो मेरी सोल में अभी भी फेमिनिन है, अभी भी मैस्कुलिन है, मगर सारी दुनिया बहुत मैस्कुलिन हो गई है because of industrialization, survival, because of war, everything. What has paid is to become masculine. If you become too masculine, if you invade countries, if you loot, if you do all of that, like Europeans did when they came to America, they basically took over the whole land, whole country, and through science, through, you know, their chemicals and machines and steel and all of that, they created a whole country. So that was all very masculine. That paid off. इसलिए सारी दुनिया has become masculine. Men have become masculine. Women have become masculine. Women are enjoying, you know, dressing like men. Men are not enjoying dressing like women. Why is that? Because there's a celebration of masculine. A woman looks nice in a suit, but a man doesn't look nice in a salwar kameez. Why is that? That is simply because the whole world has become like that. We're all celebrating masculine. So wo Deviya are saying ki we need to turn back to celebrate the feminine in women and men. Now I can say कि देवी circle में ज़्यादा men होने चाहिए, but that won't happen because men are still too much in their mind. They're too much in their career. You know, they're too much focused that way. You know, we would want Devi circles to have men and women, all of them. But now it is likely that there will be more women initially, then the men might join. So this masculine energy is needed for stability, for survival, for structure, for, you know, creativity, some of that. But that is not all what life is about. No? Life is about love, joy, nurturing, compassion. वो सब has disappeared. कई शहरों में you don't know आपका neighbor कौन है, बिल्डिंग में मालूम ही नहीं है. ऐसा कभी होता ही नहीं था. गांवों में सब जानते थे neighbor कौन था, पड़ोसी कौन थे. You know, we had a lot of love. वो love has disappeared. Love की बातें करते हैं, but you know, in our own families, in neighborhoods, you know, we find love in a place like PSSM. Because people have their intention. But you go back to your families, go back to the neighborhoods, go back to the cities, again, we start living masculine way. We don't feel that love. So how do we create these circles in a big way where love becomes the way? Like Jesus also talked about it. But how do we bring it on earth? Wo challenge. And that has to come by surrendering to the feminine energies. Killing animals and eating the beef and the mutton and the chicken is not love. That is not. The Christians speak about love, but they are absolutely anti-love. I agree. Is it love? It is not love. It is not love. It is the utmost cruelty. Yeah.
ये जो आई थिंक द ह्यूमन माइंड इज सच कि उसको बचपन से कुछ भी सिखा दो तो कॉन्ट्रडिक्शंस बिकम अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइकी. यू सी इन वेस्टर्न कंट्रीज they have, everybody has a pet. They genuinely, I've seen so many friends of mine, they genuinely love their pets so much. But at the same time, on the lunch and the dinner plate, they're eating animals, right? So this contradiction, I make them aware sometimes, I also love Chloe so much, that dog is so amazing. But then how are you eating this? But because human brain has seen that right from the childhood, their body is used to it, mind is used to it. जैसा भी आप conditioning, it's all conditioning. वो conditioning कैसे खत्म करें? So we have to use scientific facts about what is wrong with non-vegetarian food. Then use love energy also. How can you say? So a lot of people are changing, मगर वही है human brain, human mind. It takes time to evolve, it seems. Thank you very much, sir. Thank you, It was wonderful. Everybody. So much time with you. Yeah, very nice of you, all of you, to join, and it's thank you. So yeah, and I will see you all when I come to India. Yeah. Thank you so much, Patri sir. Thank you so much, आनंद करुणेश जी. आज आपने लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में काफी एनलाइटन किया. हम सब जाके जरूर आपकी किताब पढ़ेंगे और लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जहन में एकदम बिठा लेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड स्पेशली मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी दर्शकों का, उन सभी स्पीकर्स का जो दुनिया के अलग अलग कोनों से हमें ज्वाइन किए हैं. हम यहाँ पे इंडिया में हमने 9 बजे प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन लंदन में सुबह 5 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था. तो लोग सुबह 5 बजे से बैठ करके प्रोग्राम देख रहे हैं. मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके कि वक्त का ना देखते हुए कुछ ना. द टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी इज नाउ. सो पीपल आर जॉइनिंग इन, सब जुड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं. So utmost gratitude to everyone here. And आपने कहा 75 people are watching here. There are more than 1,000 people जो PMC कन्नड़ा, PMC तमिल, PMC तेलुगु, PMC हिंदी के द्वारा इस लाइव सेशन को देख रहे हैं सर. So the time for spirituality is now, like I said. Thank you so much. तो बिना वक्त जाया करे हुए मैं अगले स्पीकर को इनवाइट करूंगी. अगली स्पीकर हैं परिपत्री जी. इनका इंट्रोडक्शन तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन जो सामने बैठे हैं सर, अगर वो भी थोड़ा उनके बारे में बताएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. परिपत्री is an award-winning executive empowerment coach for successful but stuck women ready to learn how to step fully into their power. She's a corporate trainer who teaches meditation to organizations. Through her one-on-one program, The Life-Changing Power of Self-Prioritization, she takes women on 3-month program of self-discovery, soul care, and releasing the parts of their life that don't serve them. तो अभी हमने divine feminine की बात की, तो परिपत्री जी भी फेमिनिटी के साथ वर्क करती हैं. जितने भी women हैं, जितने भी औरतें हैं जो अपने कहीं पे भी stuck हैं, तो उनको वहां से उभारने के लिए she works for that. She was recently recognized as one of the top 20 global women of excellence by US Congressman Danny K. Davis at the annual International Women's Day. Pariji lives with her husband and 2 kids in Clarksburg, Maryland. So I request the moderators, अगर Pariji यहाँ पर हैं, to just let her through, maybe. Hello everyone, can you hear me, see me? Hello ma'am, nice to see you. We can hear you very well. Thank you very much for being here with us. Thank you Charu. Thank you very much. That was a lovely introduction. And hello Mr. Karunesh, wonderful to see you here. I was listening to your meditation. It was absolutely wonderful. So I could get my morning meditation here. So thank you. And hello Patriji, namaste. You have been doing excellent. You've been sitting there for last 3 hours, I'm seeing now. That's amazing. My mom will anytime call me and say when this will be done. But everybody is so wonderful to hang out with you here. Andarki na namaskaralu, sabko mera pranam. And hello to everybody around the world watching on YouTube, on various channels.
Thank you so much, PMC Hindi, PSSM North India. You guys are amazing, amazing, amazing. ये पूरा जो ध्यान यज्ञ है, कितने बहुत ही कम टाइम में ऑर्गेनाइज किया और इतना बढ़िया किया है. I'm truly inspired by you all. This is truly amazing, and सबको इस तरह साथ लेके आना. It's wonderful job. I think we all can learn how you have done this and put together this. So thank you so much. And so everybody, I've been listening questions. Oh my God, it was truly amazing. I see Koteshwara from Abu Dhabi. I see Swati from Jaipur. This is wonderful. It's so nice to hang out here. And today, मैं आज pyramids के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि pyramids is the main influence or the main pillar of the pyramid spiritual societies movement. तो आज आप सब ने बहुत आज अच्छे से meditate किया. I saw Nagalakshmi madam, beautiful music, wonderful music. And then I saw Hitesh. Hitesh, we have never met, but it's truly amazing to see your session. Wonderful. I hope I meet you soon in India sometime. And I saw the question and answers with Patriji. It was amazing, and I saw that he was saying that one of the questions he mentioned that मैं बस acting करता हूँ, मैं कुछ देखता नहीं हूँ, but सबको हर एक तरह clairvoyance होता है. जैसे कोई clairaudient होता है, कोई देख सकता है, कोई सुन सकता है, कोई महसूस करता है. But for him, he has a knowing. आज मैं अपने presentation में उसके बारे में मैं बात करती हूँ. And how he knows stuff. And how it can be applied for everybody, not just him. So we'll talk about the story right now in my presentation. मैंने एक छोटा सा presentation create किया है. So I would ask our moderators to, I don't know how we can bring that up, or if not, I'll just go and talk through it. So let me know if that is possible. Ma'am, you'll have to share your screen. एक share screen option होगा. Okay, we'll bring it up. Okay. All right. So I got a message that you guys will bring it up. So I'm just gonna wait. Okay, share screen. Okay. Let me share my screen. But I want to give time for some question and answers at the end as well. So please stay tuned for that. Oops. Okay. So can you see the screen? Oops. Hang on. Yeah. Can you see the screen and can you see me? Yes, of course, you are there. Okay, wonderful. Thank you, Dad. Okay, so today we will talk about pyramids, and thank you, Karinesh ji. You have touched a little bit about pyramids before I just got in. That you said the rocks were flatter in the Giza pyramid than they were engineeringly done, and that's one of the interesting facts of Giza pyramids, of how amazing they are. Like if you see the picture here, it's just such amazing perfectionist job done. And also if you अगर आपको मैं हिंदी में switch करूंगी, अगर मैंने नहीं किया तो please मुझे prompt कीजिए. ये pyramids जो है ऐसे नहीं थे, उसके ऊपर पूरा white limestone का casing था, and then at the top एक capstone in gold was on top, and वो सब because of vandalism वो सब now it is lost, it was stolen. So but the pyramids were like huge white casing stones, like huge stones that anybody from around the far away lands could spot the pyramids.
So it was not like this. And how did they build it? Each stone was from 1 ton to 75 tons, around 90 tons each stone. How did they bring in the desert at that point? It is really a mystery, and pyramidologists have studied a lot. So today मेरा ये मकसद है कि आपको ये मैं बताऊं कि आप at the end of the course आप ये टेक अवे कि पिरामिड्स का क्या टेक्नोलॉजी है. Is it just some mystic theory कि हम समझ नहीं पा रहे, or is there science and evidence behind it? So this is my goal today in this session, to give you about that. And also मैं स्टोरी बताऊंगी. मुझे स्टोरी बताना बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ. तो आपको पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का जो भी नए लोग ट्यून इन हो रहे हैं, I just want to share with you how this started and what is the main mission and why pyramids are a big part of this mission. And I'll talk about meditation and pyramids. उन दोनों का connection क्या है. And of course, at the end, I'm going to share PSSM global vision and mission, and to everyone who is watching us from all over the world. So let me start with a story. पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ जो मुझे नहीं जानते हो या मेरे स्टोरी के बारे में नहीं जानते हो. So my name is Parimala Patri. I was born in Hyderabad. So ये story मैं कई बार बता चुकी हूँ, but people who have not yet heard or who are new to this organization, क्योंकि काफी नए लोग join हुए हैं इस event के लिए, so which is amazing, and that's the goal that we want कि नए लोगों को बताएं ये work क्या है. So that's really, really amazing. So I was born in a very ordinary family, middle class family, and there was everything about the family was normal, but except for my father. This is a story of an ordinary man, but of an extraordinary story of an ordinary man. And also I want to say that every success story, every hero story, every story of an enlightened person or a successful person starts off being ordinary. Nobody starts off being extraordinary. Everybody starts off with being ordinary, but when they awaken to their purpose, when they awaken to their truth, to their own power, that's when their story starts becoming extraordinary. So जैसे आपने अगर एक मैसेज दिया है पत्री जी ने, जो PSSM Global, it's on PSSM Global, but that is for everybody who is on PSSM, is one of the things that he said was, there were Buddhas before and there will be Buddhas after. But it may not be the same Buddha that we had, Gautam Buddha, but they will be everywhere in their own way, in their own uniqueness. So every success story, every story that we have is unique to us, is unique to our own fashion, our own variety, our own way. So the stories that we discuss, the heroes, so everybody who's sharing their experience, they're all success stories. They all started when they started aligning with their true purpose, their true alignment, their true connecting to their heart. And that's when things starts becoming extraordinary in our life. And he was awakened, he got enlightened in the year 1979. So many people ask me, and even I had this question, what is enlightenment? What does that truly mean? Like, what is that? What is being awakened? That means, उसका मतलब ये है कि जब आप, again, आपके purpose को आप जानते हो और आप उसको pursue करने में fearlessly आप कदम उठाते हो, that's when आप enlightened या awakened कहला जाते हो. So it's first understanding who we are, where we came from, like our own inner power, and standing in our ground and truly honoring that purpose within us and taking action, not just sitting at home, but taking action fearlessly. And that is what we all become. Our story starts becoming extraordinary. So again, we are all Buddhas. We are all here. Every PSSM master is a Buddha, pursuing their own passion in their own way. And another thing is learning from everybody. That is something that that I've learned throughout the time and really opened up many different portals. So this is where I'll tell you about the knowing I just mentioned. So he started
reading books. I mean, he has always been reading books. I don't think many people give account कि उन्होंने इतने books पढ़ा है, इतने books पढ़ा है. But I don't think really anybody can tell how many books he has read so far. He can hundreds and thousands of books. Because since I know him, I only saw him with a book. I've never seen him without a book. So I really don't know what is the count. And I don't think even he knows the count. He just makes up the numbers. But it's definitely in thousands and thousands. And after he was awakened, he started pursuing like, okay, my purpose is different. My passion is different. And then he started reading books, many spiritual books. And one of the book that really, really turned him is, I had this book right here. Okay, I can't find it now. Is this book. The turning point was The Secret Power of Pyramids, Bill Schul and Ed Petit. And I recently got this book. There are many books that I'm reading here. The Secret Forces of Pyramid. And this is one of the books, The Psychic Power of, this is another book of the same author, The Secret Power of Pyramids. This book completely, उनका life change हो गया ये book पढ़ने के बाद. Suddenly a whole new avenue of information came in. And then he started reading about what pyramids are, what are they used for, and how the healing happens. All that is in this book. So if you ever want to read, this is a great book to start learning about pyramids. So मेरा एक question था कि ये book पढ़ने के बाद उनको ये पता चला कि pyramids have this amazing power, and meditation and pyramids are an absolute amazing combination. तो तब मुझे समझ में, मैं इवन बचपन में मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे इतने श्योर है. वो तभी भी वो बताते थे कि मेरे को तो कुछ दिखता नहीं है, मैं बस सबके एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ. बट हाउ, सो देन आई वुड क्वेश्चन माई सेल्फ कि हम लोग अभी इतना रिसर्च करते, कुछ भी करने के लिए इतना रिव्यू करते, इतना रिसर्च करते कुछ बिलीव करने के लिए, राइट? वो टाइम पे उनको बस सबके ये बुक पढ़ के और सबका सुन के उनको कैसा ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना कन्विक्शन आया कि वो अपना जॉब छोड़ के ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट स्टार्ट करके इतने सारे पिरामिड्स बनाना और पिरामिड्स आर सोली फॉर मेडिटेशन, ये चीज बताना. How was he so convinced about this fact? And now I understand. At that point I didn't understand, but now as myself being awakened, I understand that when we are connected with our true source, when we are connected with our heart, we have a knowing within us. We have a deep knowing. We just know. All the answers are within us. They are not outside of us. कोई किसी के पास भी है, वो आपके गुरु हो या कोई एनलाइटेंड मास्टर, किसी के पास नहीं वो आंसर्स आपके अंदर है. बट जो इंफॉर्मेशन आता है, वी शुड नेवर स्टॉप, वी शुड लिसन टू एवरीथिंग, वी शुड अलाउ द इंफॉर्मेशन टू कम इन, एंड वी विल नो व्हेन वी हियर, व्हेन वी फील, व्हेन वी रीड, we will know the truth, we will understand the truth, because as our perception, our information flows in, our perception shifts. When our perception shifts, that's when our frequency changes, we raise our vibration, our frequency rises. So we have to, that's one of the things that he's very particular about, is reading books, because information, as we read books, as we listen to experiences, something that we are allowing that information is light is information. We are allowing the light to come in through us. We should never block that information based on judgment, based on based on our preconceived notions. Just listen to every experience as a new experience. Read every book as a new book. And you can, in fact, even if you read the same book again and again, every time you read the book, you will get new information. When we start reading or listening to people with no judgment, with just being there, and that's where mindfulness comes into play. So that's when I understood, oh my goodness, it's just his knowing. And now I can understand, because that's what I have. Like, I just know that this is the truth, this is what I need to do, this is where I need to go, and we just know. And this is how, and that's
this happens only when we are in meditation, only when we are connected to our source, connected with it. And this whole Dhyaan Yagna, which has been put together, is an initiative, is a message, is an encouragement for everybody to do that. We don't have to seek answers from Patriji, Mr. Karunesh, or from anybody. You can find your own answers by just going within. You don't need anybody's validation. You don't need to say, Patriji, ye correct hai kya? Ye main kar sakti hu kya? Ye main kar sakta hu kya? You don't need to ask anybody anything. Go within, ask your own self, and just do that. And that's what he says. You are a master, you are a god, you are a co-creator of this universe. Everything you see, you're hearing is your own energy reflection. So you believe in yourself, trust in your experiences. And as you trust, कोई भी relationship trust से बनता है. अगर हम अपने आप को trust नहीं कर सकते तो वो relationship नहीं बनता. तो पहले आप अपने आप को trust करना सीखिए कि हाँ, जो मैं feel करती हूँ वो correct है. So honoring our own feelings, honoring what we are, our own emotions. That's where his turning point started, and this whole concept of pyramids was planted in his head. And then so he was, तो तब क्या होता है जब पहली बार वो meditation start किए, तो पहले तो मेरे family members थे, मेरे mom के भाई, मेरे मामा, उनके friends, they were all coming home and meditating. So वो time पे तो ना internet था, ना कोई information, outside information आने का chance था, तो they were just experimenting, doing things, experimenting on their own about astral traveling, third eye visioning, chakras, kundalinis, what is this, what is that. There's a lot of experimenting going on, and that's how most of the information was coming through. And at that point, the word of mouth of this information spread, and there were 10 people, 20 people, 30 people. And one fine day, one gentleman from Kurnool, this is in Andhra Pradesh, the picture that you're seeing, he came in and I asked, sir, you're doing an amazing job. I want to build you a meditation center. So that's when he said, don't build me a rectangular meditation building. I want a pyramid. And then wo time pe, he was like, oh my gosh, what is a pyramid? Ye kahan se aaya? Humne to suna hi nahi iske baare mein. So then he gave that book, the book that I just showed. And he convinced that, pyramid is really powerful, and this is something that we need to get for meditation. And the first pyramid was built in 1991, where 300 people can sit, and this was my home. This was my second home. This is where I grew up. This is where I had all my childhood memories, where I meditated for like 4 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours, 16 hours, practicing Mauna. My whole childhood, summer holidays were here. And I really enjoyed. We had a great group of people coming in from different villages, different towns around that area, around Kurnool in Andhra Pradesh. And बहुत ही मजा आता था. बस यही बातें होते थे, पास्ट लाइफ में तुम क्या हो, पास्ट लाइफ में मैं क्या हूँ, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में वो वर्ल्ड जाएंगे, ये वर्ल्ड जाएंगे, बस यही बातें, यही सीखना है, यही करना है. तो this was something very interesting. And at that point I still didn't know. I knew pyramids were powerful because I used to hear from everybody, but मुझे पता नहीं था कि truly कैसे आता है, power क्या है, what is this? Is this something that why only we are talking about it? क्यों हम बाहर नहीं सुन रहे ये बात, या स्कूल में नहीं सुनते, या कहीं भी नहीं सुनते, सिर्फ हम बात कर रहे. तो मुझे वो चीज तब तक पता नहीं था ये क्या है. एंड देन पिरामिड में बैठ के हम ये सारे एक्सपीरियंसेस सुनते थे, जैसे लोग बहुत हैप्पी हो रहे हैं, टेंशन नहीं है उनको, स्ट्रेस नहीं है, दे आर रियली वेरी हैप्पी. हीलिंग होता था, वी कुड सी पीपल हीलिंग, हेडेक से लेके chronic illness, chronic pains, out of body experiences, third eye activations, pineal gland activations, euphoria. Oh my goodness, we have seen so many people having that extreme euphoria, being extremely happy, having kundalini awakenings and raising their own vibration. When I say raising vibration, iska matlab ye hai ki
बहुत happy, compassion, love, gratitude, appreciation, ये सब high vibrations है. Lower vibrations are anxiety, anger, depression, guilt, regret, ये सब lower है. So raising vibration है, ये लोग बहुत appreciate कर रहे हैं एक दूसरों को, बहुत gratitude, compassionate, and one of the things that we saw was people vegetarian बन रहे हैं. जो भी लोग आ रहे हैं मेडिटेशन पिरामिड में करके ऑटोमेटिकली अपने आप वेजिटेरियन बन रहे हैं. तो ये सारे हम देख रहे थे, पर फिर भी ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे थे कि जो भी आ रहे हो ये सब देख रहे हो, बट स्टिल मुझे I did not understand really what the power is coming from. And then afterwards I'm going 2 stories along. एक तो PSSM और pyramids के बारे में. Next second pyramid came in 1996. Again, this is a small village in Andhra Pradesh where 50 people sat, and the third one came in 2003 where 400 people came. This I believe is in Anantapur. So people started seeing the benefits of pyramids. People started understanding, okay, pyramid has something going on. There is something happening in there. People are experiencing different energies. There's something happening within them. But really, let's understand what is that happening today, because this is something that we all PSSM masters should know, the power of pyramids, because that's where it all started. Now pyramids जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई अभी का नया आविष्कार नहीं. It has been there since ancient times and also in different civilizations. Ancient times में मेरे को fascinate ये करता है कि ancient times mein it has been there everywhere. People never spoke to each other. They didn't have internet. They didn't have anything to communicate this information कि ऐसा बनाना है, ऐसा करना है. But yet there were pyramids around the world. China, Mesopotamia, Mexico, Russia, Cambodia, Indonesia, everywhere you see pyramids. And how did that happen? कि सब जगह pyramids बना रहे, but nobody didn't communicate because that was ancient times. There was no trading or nothing happening, but yet they had this information. How did that happen? क्या हुआ? स्टक हो गया? There seems to have been some issue with Pari Patri's network. Pari ma'am, can you hear us? चलिए दोस्तों, लगता है परी जी को थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में. तब तक मैम हमें पिरामिड्स के बारे में बता रही थी, पिरामिड ऊर्जा के बारे में बता रही थी. पत्री सर ने कैसे PSSM की शुरुआत की ये बता रही थी. बीइंग इन अ हाउस होल्ड जहाँ पे बचपन से उन्होंने पिरामिड एनर्जी को देखा, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी. तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो पिरामिड्स जिनके लिए नया कॉन्सेप्ट है, मेडिटेशन जिनके लिए नया कॉन्सेप्ट है. जैसे मैम ने बताया, बहुत सारे नए लोग आज जुड़े हैं जो पहले इन चीजों से वाकिफ नहीं थे. Sorry, I'm back. She's back. Over to you, ma'am. Yes, I don't know where I lost, but I'm just going to talk about, just continue where I left. I hope everybody is enjoying. I hope I'm seeing everybody smiling right now. So great. Okay, let me continue. Okay. All right. So I was just, मैं ये बता रही थी कि पिरामिड सब जगह है. ये कोई नई आविष्कार नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है. This has been there everywhere. And an interesting बात ये है कि ये सारे are in the shape of a triangle, are in the shape of a pyramid. It's not a rectangle, it's not a square. It is the pyramid. So this is fascinating कि what is this shape power? ये shape में क्या है? Is there something
mysterious or is it scientific? Let's just look into that. Okay, first, before we go, let's understand the origin of the pyramid. Pyramid, fire in the middle in Greek language. And in ancient Egyptian, they used to say pyramid को per meter बोलते थे. इसका मतलब ये है कि house of energy. Ancient Egyptians. The pyramid word itself means कि वो एक energy generator है. It transmits, receives, and it receives and transmits energy. That's what it is called. That's what it is known for at that time. So a house of energy that has fire in the middle, a vortex in the middle, which is, we'll look into the research today. I don't know how much time we have. So moderators, just please ping me when we are closing. So because I want to take questions as well. So before we get in, I want to just talk about, introduce the concept of energy. Max Planck, this guy was the father of the quantum physics, and this is where मेरा research start हुआ, क्योंकि मुझे समझना था कि क्या है ये pyramid power, why are we so fascinated with this, and how it this all had happened, and that drew me to the quantum physics, of course. So this guy says that all matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds the most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. The existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. So he's talking about some force which is the existence of this conscious mind and which is keeping everything together. And this theory was later again worked by Einstein on quantum physics. So what he says was, this we all know, he says everything is energy, everything is vibration. His equation, energy equal to matter. And again, as quantum physics suggests, that an atom is 99.999% space. It is just space. Everything we are seeing, the glass, the phone, my voice, me, this computer that you're seeing, everything that you perceive, आप जो देख रहे हो, perceive कर रहे हो, जो matter जैसा लग रहा है आपको, but it is just energy. It is space packed together. 3D level में हम जब बैठे होते हैं, जब हमारा perception different होता है, तो उस हमारा perception, based on our perception, a form is created. We see things based on our perception, not how it is. So this space is, बहुत scientists ने इनको vacuum बोला है, इनको ether बोला है, फिर बाद में इसको अभी जो साइंटिस्ट है इसको फील्ड बोलते हैं, बायो फील्ड बोलते हैं, या सोर्स फील्ड बाय डेविड विल्कॉक, या हमारे योगिक ट्रेडिशंस में प्राणा, ची इन चाइनीज. सो देयर हैव बीन डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग, द कॉन्शियसनेस. तो उसके बारे में आज थोड़ा हम वी गेट डीपर इनटू दैट. सो अगेन परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी. जैसे an atom can be a wave or a particle. So the way we see things defines the form. So matter, जैसे हम बोलते हैं we create our own reality, is basically based on our own perceptions, based on our own belief systems. We are creating things in our life. We are seeing the way things in our life. Suffering only is a state of mind. It doesn't exist. Suffering comes in when we are attached to things in our life. That's when the suffering comes in. So this is all, again, we are incorporating Buddhist, what we teach in PSSM to what I'm talking about in science. So I'm just trying to correlate these two things. So to give a broader perspective of how this whole movement started. Next is, I want to introduce you all to this great guy, Nikolai Kozyrev. He is a Russian scientist. ये 1951 में बहुत ज़्यादा research करना start किए हैं in astronomy. And this guy, वो जब communist movement हुआ था, तब इनको concentration camp में डाल दिया गया था. तो because they used to think, all the communist people used to think all the scientists are a threat
to their government because they can think. They are not, they won't be mind controlled, they won't become slaves because they can think. So they put all the scientists in the concentration camps in Russia. At that time, this guy was in 10 years in the concentration camps. And agar aapko pata nahi कि concentration camps were very, very, very hard living. You didn't have food, you didn't have good sanitary options. It was a very, very hard life. And at that point, that's when there was this deep, deep suffering, he had this awakening. So हम लोग जब बोलते हैं ना, जब हम when we lose, when we go beyond of what we can tolerate or what we can sustain, that's when this huge awakening starts. For him, that's how it happened. He started researching more about this conscious, intelligent mind that we just talked about, the Max Planck talked about, and the Einstein did. So he started researching more about that in the concentration camp. He was in the concentration camp, but his mind was not. His mind was free. He was able to think. No matter where we are, suffering only happens when we accept it. He did not accept it. He was still working on his own research, being in there. So that's something that we can all learn, that, we don't have to limit our dreams based on what we see in our life. We don't have to limit our imagination based on our reality. हम लोग अपना imagination, अपना dreams, you must dream big. You must be able to go beyond what your reality is, because again, remembering who we are, that our purpose, we are not limited by this physical reality. So he started researching, and then he started learning about time, gravity, and levity. These are the 3 components. ये बहुत ही ज़्यादा research किया है. और मैं पूरा research में जाऊंगी नहीं इस बार. I'll just go through the main parts of what he found. What he said was, all matter is simply a special case of all-pervading universal energy filling all space, called ether. So what he said was, all this ether या prana जो भी हम बोल रहे हैं, look at it as a fluid, like water around us and within us. We are here and the water is here. जब हम water में रहते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं तो एक ripple जैसा पूरा water में जाता है, right? That's the same thing that happens. We are all connected. Whole universe, whole multiverse is connected. हमारे अंदर जो होता है, वो ripple effect is happening in the entire universe, entire multiverse. जो सिर्फ आपका सोचने में क्या होता है या मेरे करने से क्या होता है, that's not how we think, because you are connected. You are in this web. You are in this cosmic web. So everything आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, is going to affect it. मैंने अभी उनको सुना है कि किसी ने पूछा कि मैं 1% को सिखाऊंगी तो is it काफी? Yes, it is काफी, because every person is connected. Everything is connected to this collective consciousness. तो हम जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, it is going to have a ripple effect. It is going to affect the whole consciousness of the web. So that is something that he discovered, that this has this ability that everything is like fluid-like. And आप अगर डेविड विलकॉक के बारे में नहीं सुने तो प्लीज आप देखिए, अभी आपको टाइम है. On Gaia TV, there is a series called The Wisdom Teachings. Please go ahead and watch it. In that, season 21 is all about pyramids. So if you want to dive deep into pyramids, that is the episode आपको देखना चाहिए. And तो in fluid में अगर आप कोई shape, तो ये fluid ऐसा है कि what he says is the ether is a medium that can be intensified and manipulated into any force or manifestation by the use of materials, shapes, and other forces, including thought. So basically, and what he found is the time itself, they all function as torsion wheels. Torsion wheels means वो spin होता है. Everything is spinning. And even gravity, he says, is spinning. That's how they work. आप अगर universe में देखोगे तो every nature, we see this spiral action in our galaxies, in our solar systems, in nature. Everywhere we see that. Even in our head, it goes round and round and round. So this is a pattern we see everywhere.
And this is what they say, this is a torsion generator, is what is prana. That is the prana that is coming together, the source field. And even our thoughts are torsion generators. And the interesting part is emotion. मैं फिर से इंग्लिश में जा रही हूँ, I'm get back to हिंदी. अगर ये थॉट में अगर आप इमोशन मिक्स कीजिए, जैसे आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, एंड और थॉट, इंटेंशन और इमोशन को कपल किए, इट गेट्स एम्पलीफाइड. दैट इंटेंसिटी ऑफ टॉर्शन जनरेटर गेट्स एम्पलीफाइड. सो दैट्स व्हाट ही टॉक्स. इनका रिसर्च आप अगर निकोलाई कोज़रेव गूगल में डालेंगे तो यू लर्न मोर अबाउट हिम. So then he started experimenting. He came out of the concentration cancer release हो गया और अपना और research इसके बारे में बात किया है. And then torsion field का concept आया. Torsion field also confirms, अगर आप निकोला टेस्ला को जानते हो, he is actually the guy who invented alternate current. It's not Edison. It was Nikola Tesla. So Nikola Tesla का जो concept है, इसने confirm भी किया है about this torsion field, about this gravity, about time itself can be manipulated. Again, I'll repeat. Time itself can be manipulated using these forces. Gravity and levity are two forces opposing each other. So all these concepts have been discovered by this guy. And now let's talk about the pyramids. So what he says is हमने देखा कि ये पूरा water है. Everything, the consciousness is like, think about it like a fluid. So when there is a pyramid in this fluid, like this is also made of the consciousness, the fluid, every material, every solid that we perceive. So ये जो shape है, somehow it creates a distortion in this, or it acts like a torsion generator itself because of it's like think of it as like a whirlpool, like a spinning action, upside down. And somehow the intensity, the torsion generator, it acts like an antenna for cosmic energy. So this research has begun many lot of interest in 1970s. तभी वो टाइम पे बहुत सारे बुक्स आने लगे. So one of the famous example everybody knows is about Bovis. This guy ये एक Frenchman है. So in 1970s 1940s or in 1940s इन्होंने बोला है कि मैंने he worked with a pyramid. He created a cardboard pyramid and put a cat in there, and it got mummified, a dead cat. And then he started researching more about it, और उसने razor blade उसके अंदर डाला था. This guy started learning about it, and he started telling about how he could mummify. And also interesting point in the books that you read, he said there were animals inside, a cat inside the pyramid. And interestingly, after it came out of the pyramid, it would refuse to eat rats. It would not eat meat. It would only be a vegetarian. So that is an interesting fact of what pyramid did, and that's something that the books talk about. And then this guy, next guy, Karel Darbal, this guy actually did the razor blade experiment. So इसने क्या किया वो time पे, again it was a communist time, they didn't have time, they didn't have money to get razor blades, new razor blades. So he was in a necessity कि उनको shave करने में problem हो रहा था. तो इसने क्या किया, इसने सुना था इसके बारे में, अरे मैंने वो बोविस का सुना है कि पिरामिड में बहुत पावर होता है, लेट्स सी अगर ये मेरा रेजर ब्लेड को कुछ कर सकता है. तो उसने क्या किया, अपना रेजर ब्लेड पिरामिड के नीचे रखा 24 आवर्स, और उसके बाद क्या वो पूरा इट बिकेम एक्सट्रीमली शार्प लाइक अ न्यू रेजर ब्लेड. दैट वाज अमेजिंग. लाइक एंड देन वो एक्सपेरिमेंट एक बार हुआ, उसने रिपीट किया और देखा, और इट वाज हैपनिंग. एंड ही आल्सो went to the government. He created a patent number called 91304 for the Cheops pyramid razor blade sharpener. So the government ऐसे ही patent नहीं देता है, वो बहुत research करता है, बहुत experiment and re-experiment, duplicate करता है results, because जो वो again वो results उनको दिखाना पड़ता है. So they actually went through all of this research and then gave him the patent. उसके बाद this guy Patrick Flanagan, he is one of the legends in pyramid research. अगर आपको pyramid के बारे में और जानना हो, research करना हो,
So inke books, there are many books on Amazon. You can get them all, the science of pyramids. He repeated all these experiments, and what इसने क्या देखा कि ये जो effects है plants पे या organisms, living organisms पे effects है, जो various effects which I'll talk about, he was not able to replicate यही effects with other shapes like rectangle, icosahedron या oval या round. वो सिर्फ pyramid shape में आ रहा था. So that is what he saw, which was pretty interesting for him. And then let's talk about pyramid water now. Pyramid water, there was lot of research about this, and then this is something that I do at my home. I always drink only pyramid water. And why? Which I'll tell you. It has amazing amplifying effects. Again, एक और research है from Russia, Dr. Egorova. This guy is a Russian scientist. उन्होंने क्या किया? He fed pyramid water to mice that had been given nasty carcinogens. So they were group of rats. There was two control groups. उनको दोनों को carcinogens का they were given that, and whether it will develop into cancerous tumors. So what they did was, the one control group ko they gave pyramid water, and the other group they were not given pyramid water. So what they have seen was, the mice drinking the pyramid water had significantly fewer tumors than the mice drinking the ordinary water. And again, ये सब information आपको source field investigations book में मिलेगा by David Wilcock. There's tons and tons of research. मैं बहुत ही कम आपको present कर रही हूँ, just to give you that pyramids are more than what we imagine. They have this amazing power. In fact, it was said that आपको acupuncture सबको पता होगा, right? Acupuncture में हम क्या करते हैं? Needles लगाते हैं energy centers में, and that will create flow, create that energy flow and balances and harmonizes us. Pyramids are those needles on earth. Pyramids are those needles on earth which are balancing and harmonizing the planet Earth and also the whole cosmic. As we just said, everything is connected. We are living in this living cosmic web, conscious cosmic web. Every thought we are having, every action is affecting the collective consciousness. So pyramids that we are building, which Pyramid Spiritual Society movement is building, how many pyramids? 20,000 pyramids, the last count, is creating that changes, is creating that movement on the earth planet. Every one pyramid, this pyramid that I have, to the mega pyramids that we have in Hyderabad and Bangalore, it is all creating this effect. This is connecting and creating an energy grid. And the other benefits that they have seen is effects on solids, getting charged. They are not, preservation, which we all know, effects on liquids, charging water, getting purified, removing toxins, healing power from cancer to headache. If you sit in the pyramid and meditate, rejuvenation, feeling more vitalized by the morning. If you have a pyramid on in your bedroom and you sleep underneath, you feel more energized. You feel like you've rested well. Amplifies meditational experience. This is something that I just want to mention, why meditation and pyramid go together. And effects on plants. Having pyramids for farming is amazing. For growing plants, it grows much healthier and faster inside the pyramid than outside. And all this is evidence. There is all noted evidence. We have books on it. It's not something we are just making it up. And I want to introduce you to Russian pyramids also here. Russian pyramids. How many of you know there are pyramids in Russia? Okay. There are pyramids in Russia. And interestingly, this is again an interesting point. Our first pyramid, the PSSM pyramid, started, the first one is in 1991. Same year, the first pyramid in Russia came up by this guy, Alexander Golod, which is very interesting. Like in the same time, different people started building pyramids. They didn't talk to each other, but the information was shared.
So this is something that we must be know, that the collective consciousness, when we connect to it, we get this information. So this guy, he was working with the military. He was the government guy, because the government trying to do research, it funded to create this pyramids, and it was all engineered scientifically. But this pyramid is not like our Giza pyramid, but this is steeper. This is called the Russian pyramid. It's steeper. Its angles are different than our Giza pyramid. So it's the shape power, the pyramid itself, the shape has this amazing power. What they have seen is this one, the picture that you are seeing is 140 foot tall, and it is made out of pure PVC pipes. They saw that when a metal is introduced in this pyramid, uska effects अलग थे, वो distortion effects दे रहे थे, तो उन्होंने metal सब निकाल दिया और सिर्फ PVC pipes के साथ ये बनाया. So what they have seen, A pyramids के साथ what Russia has seen was earthquakes कम हो गए nearby, before the pyramid, after the pyramid. So the nature was getting affected. Water, lake में बहुत सारा toxic material, polluted material हुआ करता था. तो after ये pyramid आने के बाद उस area में वो water started getting purified अपने आप. And this was interesting because government ये सब monitor कर रहा था. उन्होंने क्या किया, pyramid के अंदर जो salt और pepper रखा था, वो salt और pepper prison में criminals को दिया था. और they started showing more and more loving thoughts and loving behavior. That means the vibration was rising. Remember we said love and compassion, they were all higher vibrations. So the frequency was changing, environment was getting better, the radioactive the radioactivity was getting reduced, electromagnetic radiation kam ho raha hai. तो ये सारा जो research है, they started seeing, Russia started noticing, and इसके अंदर जो crystals थे, वो actually they were used in their space travel as well, for making the equipment. So it was widely recognized, widely published, but this information was suppressed because of the Cold War, the American and Russian. So there was a lot of information that was suppressed and did not come out. So many people do not know about these pyramids. So meditation effect. Now let's talk about meditation. Again, this guy, they talk about this published research. Okay, this was a very published research about 7,000 people getting together and meditating. And then they saw that the global terrorism goes down by 72%. 7,000 meditating together, global terrorism goes down by 72%. Last December, we had 30,000 people meditating together. I wonder if we had studied what changes would have seen. All this drastic, Earth is right now, we are in this conscious awakening process. Earth is shifting, the whole humanity, there's a whole shift in transformation happening, and we are all, I am so blessed and so feeling grateful that hum ye time pe Earth planet mein hai to witness this transformation, to witness this huge awakening. We all, हम लोग सब sign up करके आए हैं इधर, तो अभी इसमें कोई fear नहीं है, क्योंकि हम इधर है to witness this huge transformation happening right now on Earth planet, and every other race, every other extraterrestrial races or dimension लोग सब हमको अभी देख रहे. It's like a hot real estate or property going on right now on Earth, which we are all witness of this. परी मैम, माफी चाहती हूँ आपको यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट इट इज ऑलमोस्ट 7:10 राइट नाउ, तो अगर क्वेश्चंस लेने हैं तो yes thank you so much. So I'm going to wrap up this because I want to talk about the pyramids and meditation. So then for all the new people who are watching, then we had this pyramids in Bangalore. We had all these pyramids you are seeing everywhere on in India. 20,000 pyramids have been built, and now we are going to have a pyramid. Somebody asked a question, Anandi, you have asked a question about pyramid in US. We are going to get a pyramid in St. Petersburg, Florida very soon.
So all this information is available on is going to be available on pssmglobal.org. And before I start taking questions on this, I want to introduce PSSM Global, our mission and vision. I'm so proud to announce this today in this platform. PSSM Global is an organization initiated to connect and collaborate with all individuals, with all the organizations around the world to spread the message of this meditation and the pyramids. I just talked about how amazing these pyramids are. We need to bring these pyramids all over the globe. This is not something that we are doing for our community or for PSSM. We are doing this for the whole of multiverse, for this whole of humanity. So because we are trying to balance the earth frequencies from everything that we have created in our to destruction. So our mission is to enable the masses to dive deep within, raise oneself, and elevate the consciousness globally. The vision of PSSM Global is to enable a movement that creates personal and global transformation. So as we start with our personal transformation, our global transformation starts. That's how it starts. It all starts within, connecting within, and starting as, again, I going back to the story how I started being ordinary. When we awaken, we become, our stories start becoming extraordinary every single day. So that's my announcement on PSSM. And also we have started PMC Global. So please subscribe to PMC Global. We are going to bring, हम लोग सारे वर्ल्ड से, सारे जहां से ग्लोब से मास्टर्स को ला रहे हैं टू टेक देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस शेयर करके हम उनको सिखाएं. That's how PSSM works, is by sharing and learning from each other. So please subscribe to PMC channel so you support us and we can bring more and more information. Thank you so much. So now I am ready to talk and interact with everybody here. Thank you so much, ma'am. Everybody, please subscribe to PMC Global for all the updates that will be coming to us soon. Audience question लेने से पहले, ma'am, if I can just request पत्री sir, अगर उनके कुछ सवाल हैं आपके लिए. Okay, परी जी, नमस्कार. Namaste. Tell me, how did you bear a stupid father? Well, that's a question I need a whole session to answer. I need a whole 1 hour, another 1 hour. But I think it's amazing to that you are so comfortable to call yourself stupid. I think that's something that we all can learn. Humble ourselves, whoever we are, in whatever position we are, and that always inspires me. So, well, I signed up for it in Astral Verse. I had a contract to have this father in this lifetime, and I'm just living my contract right now. Yes. Any question you want to put to me? Any question I have to put for you? Well, I don't know. How are you doing? How are you doing right now with the whole Dhyaan Yagna? Can you share your or your experience about today's event? How did everything go? I'm very happy with today. Today it has been a very great day. Okay. And morning I had my own session. Then I listened to Newton and Lakshmi. And then home. After Newton and Lakshmi, who was Ilona Selki ji ka session Ilona tha. Selki, and his all have beautiful music and music pictures I have seen. And then our Ludhiana master. Ludhiana master, I wanted to contact him after his lecture, but his phone is engaged. He doesn't want to talk to me. And then I met Ritesh and our master,
मास्टर पल्लवी का सेशन था सर। ज़्यादा नहीं देख सका मैं, I was held up in some other business, and then I had music session, then I had question and answer session, which is always thrilling for me. Yeah. It is a question and answer session that is always thrilling for me, because for every question I would like to answer in a practice way. Yes, we saw that. I want to see my own stupidity in my answer. I do create stupid answers, and I have a hearty laugh. That is the Again, right. yeah, you can give stupid answers, but the way we perceive it, the way the person receives it is their own responsibility. It is not on you. So when we understand that, then we start blaming other people. Why did that person say this? That person should not say this, because the responsibility is within us on how we perceive that information. So I always laugh at myself and my stupid answers. I've turned every wise question into a stupid answer, and I am quite adapted. And I laugh at myself. कितने लोगों को मैं उल्लू बनाया है, ये सभी लोगों को मैं उल्लू बनाया है, इंक्लूडिंग परिपथ. Absolutely. तो इतना कहते हुए, then very happy to talk to Anand Karnish ji. Then I thank him wholeheartedly. The whole PSSM is thankful. The whole world is thankful to him for his great contribution to this Earth planet, Earth's humanity. And then I am enjoying your session about pyramidal energy, the power. Yes. Carry on, Baba. Well, did I say it correctly about your awakening to the pyramid energy? Of course you did. The pyramid spiritual social movement is mainly geared towards pyramid energy. Meditation everybody knows. Vegetarianism everybody knows. Spiritual science everybody knows. The cause and effect phenomena, law of karma, the law of reincarnation. But it is the pyramid energy which is a specific selling point of PSSM. So Yes. you took right on the clue. And Yes. You, in the remaining of your lifetime, you have to do that. Whatever you have done today, and that's your job. That is every pyramid master's job. Because all other things, vegetarianism, so many other people are doing it. Meditation, so many other people are doing it, have done it. Spiritual science, so many people have done it. But we are pioneering in this part of the world, the pyramid energy. That is our specific contribution for which we are all born. Thank you very much. Speak a few words about your mom. Yes. Well, I hope she was here. I could see her today. She is there watching the whole program in the upstairs. If I may, I want to request the host, the moderators. Can I share an experience of hers with pyramids? Yes. Okay. Please, Awesome. Please. Yeah. So when the first pyramid was built in Kurnool, the picture that I showed in 1991. So वहाँ पे तब उनका the design was वो pyramid build करने के बाद ऊपर apex में इधर crystal रखना है. So because we want तभी मैंने crystals के बारे में सुना था और crystal energy के बारे में. तो तब क्या हुआ, कोई हिमालय से कोई बहुत बड़ा योगी कर्नूल आके उनको पता चला कि यहाँ पे एक पिरामिड है, बन रहा है. तो वो एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही एंशिएंट क्रिस्टल अपने साथ बहुत ही ध्यान से लेके आए थे और मेरे फादर को दिए थे ये वो क्रिस्टल. इट वाज अ राउंड क्रिस्टल, बहुत ही संभाल के वो लेके आए कि वो पिरामिड के ऊपर रखे. तो ऐसे वो टाइम पे तो क्या हुआ, वो घर पे था, मैं बहुत छोटी थी, आई वाज 9 years old. घर पे रखा था टीवी के पास, मुझे बहुत ध्यान से याद है. और नेक्स्ट डे वो पिरामिड में स्थापित करना था, बहुत बड़ा सेरेमनी, बहुत बड़ा इवेंट था वहां पे. तो वो टाइम पे क्या हुआ, रात को देखा तो
वो एक हैंडकरचीफ में क्रिस्टल था, हैंडकरचीफ में रख के ऐसा फोल्ड करके टीवी के पास रखा था। तो रात को जाके देखा मैंने, मेरे मॉम ने जाके देखा कि वो कर्चीफ ऐसा ही था पर क्रिस्टल गायब था, क्रिस्टल गया हो। तो मेरे डैड वाज लाइक ओ माय गुडनेस, ये क्या हो, क्योंकि वो बहुत ही कीमती था, बहुत दूर से बहुत एंशियंट क्रिस्टल ये योगी लेके आए और गायब था। तो वो मेरे मॉम बहुत पैनिक हो गई। आई एम लाइक ओ माय गॉश, मेरे हाथ से ऐसा कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन। शी गॉट इनटू पैनिक। और आप अगर जो लोग मेरे डैड को जानते हैं उनको गुस्सा को भी जानते होंगे। तो वो शी वाज वेरी वेरी यू नो पैनिकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड। तो देन शी दैट नाइट वो पिरामिड जाके पूरी रात मेडिटेशन में बैठी है कि आई नीड टू नो वेयर दिस वेंट, ये कैसे गायब हो सकता है, मैंने ध्यान से रखा था। तो the whole night she meditated alone in the pyramid, nobody was there, and in the morning she came back and she said मेडिटेशन में उन्होंने देखा कि वो क्रिस्टल के साथ कोई योगी मुनि लोग बैठे थे और उसके ऊपर बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे वो क्रिस्टल के ऊपर। तो उन्होंने वो देखा है और वो सुना है। एंड देन she saw that the crystal was right in front of her when she opened her eyes. So that was pretty amazing, like that happened. And this pyramid was something that was a very close to all of our lives. It was a big influence हमारे सबके लाइफ में, और जो भी लोग तब थे, it was such a huge thing. And that crystal was there, and वो crystal अभी pyramid के apex में लगाया हुआ है कर्नूल में. So if anybody has a chance to go and meditate there, it is one of the most powerful places. So she had this. If my father had the knowing, like he knows things, she was a seer. Unko dikhta tha. She used to see things. She used to, she was a healer, and that's probably her influence on me in healing, in the sense that she was a sympathetic healer where she would take, and now she stopped after that. But she was a seer. She could see things. She could astral travel. She could see with her third eye, and that's how he used to get his information from everywhere. And he, again, with his knowing, with his clairsentience, he could understand and give that information to the masses. So that's something that I've always learned. She was my guide and teacher in teaching this information. Thank you, Baba. I didn't know this. You know this. I forgot. You know this. See, I'm reminding you every time a new experience. Yes. I need to remember a lot. Yes. Thank you, Charu. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सुबह 9 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे ज्यादा और हम क्या चाह सकते हैं आपसे। थैंक यू सो मच सर, फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी, फॉर योर पेशेंस विद अस। You are a great moderator, Baba. Learning from the best, sir. First of all, you tell about yourself. You didn't give your message, your experience. Please do that now. Yes, sir. तो मेरा नाम चारू थपलियाल है। मैं पिछले 4 साल से पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड एनर्जी के साथ, आनापानसती, PSSM के साथ जुड़ी हूँ। मैं बचपन से ही हमारे स्कूल टाइम में स्टार्ट हुआ था। वी हैड मैंडेटरी मेडिटेशन इन माय स्कूल, 15 minutes in the morning and 15 minutes in the afternoon, छुट्टी से पहले। And it used to be the most torturous experience for me back in school, कि 15 मिनट अगर किसी बच्चे को बोल दो 6th क्लास के, आपको बैठना है यहाँ पे आंखें बंद करके, और आपको समझाया नहीं जा रहा है क्यों। So I used to run away from meditation. मुझे बस लगता था घंटी बजे, छुट्टी हो, मैं घर जाऊं। And that continued for many years when I was in school. My awakening started when I read the book The Alchemist by Paulo Coelho. I was searching for a particular book in my library and suddenly The Alchemist came to me, and मैंने सोचा चलो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बहुत पॉपुलर बुक है, बस मुझे इतना पता था पॉपुलर है। I started reading The Alchemist. I was a voracious reader. I still am a voracious reader. I take after sir in that. जितनी भी मास्टर्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन सब से सीखने की कोशिश रही है हमेशा से। So I kept reading one thing after the other, and more knowledge started to come inside in my intellect, but वो assimilate नहीं हो पा रही थी for some reason. There was something which was missing. For that reason itself,
इवन दो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट स्कूल तक, मैंने कॉलेज में आके फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट चूज किया, क्योंकि मुझे वो सत्य को जानना था, मुझे कुछ खोज थी किसी चीज की, पर ये नहीं पता था किसकी। तो मैंने फिलोसफी को चूज किया, मैंने टेक्सचुअल स्टडी करी, मैं टेक्स्ट में घुसी, क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट पढ़े, वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़े, पर वो जवाब नहीं मिले। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे इसका भी एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने अपने दोस्तों को सबको बोला था आपको कोई मेडिटेशन सेंटर हो तो प्लीज बताना, मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैं अपनी दोस्त से फोन में चैट कर रही थी एंड उसने मुझे बताया कि उसके फैमिली फ्रेंड्स का सेंटर है सफदरजंग दिल्ली में, पिरामिड मेडिटेशन सिखाते हैं, वेजिटेरियनिज्म सिखाते हैं, मेरी बहुत अच्छी बनेगी उनसे, मुझे वहां पर जाकर के सीखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। विश्वास नहीं मानेंगे, उसी मिनट जो मेरी रूममेट हुआ करती थी पीजी में, वो एकदम अंदर आई, उसने कहा चारू मैं बहुत बढ़िया मेडिटेशन सेंटर होके आई हूँ आज सफदरजंग में, तुम चलोगी मेरे साथ? तो मुझे लाइफ में बहुत सारी चीजों पे उस समय डाउट था, पर ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो कोइंसिडेंस था, इट वाज टू पावरफुल फॉर मी नॉट टू टेक नोट। मैंने कहा कुछ तो है सेंटर में, यहाँ जाकर के कोशिश करनी चाहिए। पर इम्पेशंस इतना था, मैंने उसी समय अपनी दोस्त को बोला मुझे बताओ ये कैसे करते हैं आनापानसती। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं ध्यान में बैठी, सिर्फ 7 मिनट बैठ पाई, लेकिन उस पहले सेशन में मुझे लगा मैंने ढंग से किया नहीं ध्यान, बिकॉज आई वेंट बैक टू हर, मैंने उसे बोला मुझे कुछ कुछ दिख रहा था, मुझे कुछ आसमान में कुछ बीइंग्स दिख रहे थे, कुछ सिल्वर कलर के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दिख रहे थे, शायद मैं इमेजिन कर रही थी, मैं ध्यान ढंग से कर नहीं पाई। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग एट मी, शी सेड अरे तुम तो थर्ड आई मास्टर हो। सो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। और अभी जो सर का 18 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ PSSM, उसका एक प्रिंसिपल है स्वाध्याय, विच इज रीडिंग द राइट स्पिरिचुअल बुक्स। तो उसी को हम गार्ड बांध के सर की गाइडेंस में MB पब्लिशिंग हाउस हमने खोला है, मैड बुद्धास पब्लिशिंग हाउस, which is India's first self-publishing platform dedicated to spread holistic and spiritual living. स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के लिए, स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए, स्पिरिचुअल रीडर्स, राइटर्स, ऑथर के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म ओपन किया है, ताकि जितने मास्टर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, हम अपनी, क्योंकि ये सर का प्रिंसिपल है, एवरीवन शुड रीड, राइट एंड पब्लिश द मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस। सो इसी वजह से हमने ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन किया है। This is our little contribution to this whole PSSM movement, and I'm also part of Mad Buddhas, one of the organizers of this event. So this whole journey has been wonderful, and I'm eternally grateful to sir. उनकी गाइडेंस में रह करके हमने ये सब सीखा, हमने ये सब जाना और आगे बढ़ रहे हैं। So thank you so much Patri sir for wonderful experiences. अब क्या होगा सर? अभी तो ये नया कॉन्सेप्ट देखा है डिजिटल ध्यान यज्ञ का, सो आज सक्सेसफुल रहा है, अभी और कुछ नए इनोवेशंस, नए कॉन्सेप्ट्स लाएंगे। And I want to say a big thank you to Mad Buddhas for doing this, and they are also working on PSSM Global, so I'm very excited about that. Right, so thank you so much. Shastri ji, what of thanks? Yeah, Krishna is there. Yeah, sir, it is a great opportunity for all of us. ये आइडिया आया था अप्रैल 19 का, पत्री सर ने डेट दिया है, सो वो डेट को हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। अप्रैल 18 और 19 का कुरुक्षेत्र में ध्यान यज्ञ होने वाला था, और उसके लिए हमारा रामराजू जी, रागिनी मैडम और डॉक्टर संगीता नेहरा जी बहुत काम किए थे 1.5-2 महीना, बट अनफॉर्चुनेटली द कोरोना वायरस और जो भी एग्जिस्टिंग जो चीज़ हुई है, लॉकडाउन हुई है, हमने सोचा कि कैसा भी करके ये ध्यान यज्ञ करना ही है। सो ये थॉट था, एंड कृष्णा के साथ हमारा और कृष्णा के बीच में बात हुई है, देखो इंडिविजुअली हर एक लोग क्लासेस ले रहे हैं, सो व्हाई शुड नॉट वी डू ऑन एन ए रो एंड मेक इट लाइव आल्सो विथ म्यूजिक। सो ऐसा थॉट शुरू हुआ था अराउंड 10 days बैक। यस, वी आर बैंग ऑन। सो सवेरे 9 बजे को चालू किया था, शाम को 7, 7:30 भी बज रहा था। सो ऑलमोस्ट all the channels of PSSM, PMC Telugu, PMC Tamil, PMC Kannada, Pyramid Valley International, PSSM Global, PMC Hindi, everybody is
translating in the respective languages also. Kannada people are translating. Tamil people are doing. So that's the way this event has happened. And we are thankful for all the masters. सभी masters को हम शुक्रगुजार हैं. जैसा बाहर से आए हुए परिपत्री लास्ट स्पीकर है और फर्स्ट स्पीकर हमारा एलन सिल्की है. और उसके बाद हम लोगों का ये प्रयास था कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था पत्री सर और न्यूटन सर को एक ही प्लेटफॉर्म में. नॉर्थ इंडिया में एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेट, बट दिस टाइम ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म वी कुड एबल टू डू. न्यूटन सर को हमारा हार्दिक अभिनंदन और हमारा हार्दिक कमिटमेंट एंड थैंक्स फॉर देम. एंड और हमारा मॉर्निंग स्पीकर्स में रहे हैं आयना सिल्की रही है और वो मैडम के लिए हमारा धन्यवाद. और हमारा अनिल भारती जी आए हैं नॉर्थ इंडिया से, उनका क्लास हुआ था, उनकी सेशन में बातचीत हुई है. हितेश जी का बात हुई है. हितेश वशिष्ठ जी ने उन्होंने सुंदरम स्पीक्स का किताब भी लिखा हुआ था. ऐसा हर एक मास्टर्स को हमने अपना शुक्रगुजार और धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं. ये पूरा कार्यक्रम हर एक मास्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद ग्रुप कॉन्शियसनेस होने से कोई भी चीज हम लोग हासिल कर सकता है. जैसा कर सकते हैं ओनली पिरामिड मास्टर ही कर सकता है. और वो पिरामिड मास्टर सोचने से वो करके दिखाता है. हमारा मास्टर्स में और लोग नागलक्ष्मी मैडम हम लोगों का म्यूजिकल मेडिटेशन करवाए हैं. एवरी ध्यान यज्ञ में, एवरी जानवा चक्र में हम लोग को प्रोग्राम होता है, बट वर्चुअल क्लास में हम लोगों ने आज उनको देखा है. आनंद कर्णेश जी इतना दूर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इमीडिएटली उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट के साथ आज का सेशन में आए हैं. मास्टर पल्लवी फिजिकली शी इज नॉट इन दिल्ली बट शी इज इन महाराष्ट्र फॉर बहुत दिनों से रही है और बहुत सारे सेशंस ले रही है. पल्लवी के लिए हमारा हार्दिक अभिनंदन और सिंसियर थैंक्स है. और हमारा नॉर्थ इंडिया के पूरे मास्टर्स हमारा कुरुक्षेत्र के लिए जो प्रोग्राम चालू करना चाहते थे, जब कृष्णा ने खास करके मैडम से बात किया था, अपना संगीता नहरा मैडम से, मैडम 19 तारीख का डेट दिया हुआ है, ये डेट में हम लोग ऐसा करना चाहते हैं. तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया है, आप करिए हम आपको सपोर्ट करेंगे करके कृष्णा को इमीडिएटली हाँ में मिलाया है. कृष्णा तुम थोड़ा बाकी मास्टर्स के बारे में स्पेसिफाई करो, पत्री सर भी लाइन में है. यस कृष्णा. मास्टर कृष्णा बम्मा रेड्डी. कृष्णा जी आप ऑनलाइन हैं? मैं जब तक मिस्टर कृष्णा ऑनलाइन आते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ लोगों को. ही इज अ वेरी सीनियर पिरामिड मास्टर. पिछले 18 साल से ज्यादा उनको हो गए हैं PSSM के साथ जुड़े हुए. पत्री जी के बहुत सारे सेशंस उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में. स्पिरिचुअल रिट्रीट्स और वेजिटेरियनिज्म के लिए रैलीज रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं. लविंगली कृष्णा भैया के नाम से सब इनको जानते हैं नॉर्थ इंडिया में. जो ये रैलीज हैं इन्होंने दिल्ली, जयपुर, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, उत्तराखंड की कई जगहों में की है. एंड ऋषिकेश में बहुत बड़ा इवेंट होता है महायोग ध्यान कुंभ, जो इस साल भी होपफुली नवंबर में होगा. तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स रहते हैं एंड ही इज ऑलवेज देयर. एंड भैया का यही थॉट था कि हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबको लेकर के आए. एंड जैसे शास्त्री सर ने बोला, इट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एवरीवन केम टुगेदर, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड देयर एनर्जीज. क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड कोऑपरेशन में ही आप चीजें हासिल कर सकते हैं. द फिस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द फिंगर. सो यही आज हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ. आई होप Mr. Krishna is online. He can come online. Yeah, hello. We are all waiting. I think he's there. Yeah, Krishna, you can speak right now. Yeah. I think you people can hear me. Yeah, done. Yeah, right. Thank you. First of all, I would like to thank Brahmashi Subhash Patriji
for when I talk about this idea, he immediately accepted and he asked me to do this program. And also he asked me, okay, tell me at what time I have to come and do it. So it was a shocking to me that he's asking a time for the event. And I asked him, said, sir, you please give us the time so that accordingly we will plan. And immediately he replied, okay, I will start this program and I will take my session from 9 to 10. So that was my first confidence of picking up this project. And I spoke to Shastri ji, and I spoke to Mad Buddha's Sensei team, and then I spoke to Sangeeta ma'am. Means actually this date was planned for Kurukshetra Dhyan Yagna. So I spoke to her. She was immediately reacted to it, and she said she's very much happy that we thought of not having that program, but now somehow we are going to have it in a digital platform. And I spoke to all the other speakers, just like Newton sir and Pari ma'am, and who they immediately accepted our request. And Anand Karnesh ji, it was a bless to have him here today, because daily from last 40 days or from the time when the Karna has started, I am just daily rolling the 1,000 seeds of joy, trying to complete it. Let me see means when I will complete it, but I have a lot of things from that book and a lot of changes that I have done in this during this Corona lockdown time. And I would like to thank many of my supporters, means who really encouraged me here, and who really encouraged me here. Of course, I have all my team here. Instead of me only speaking, I would request everyone to come and join the video, who are working from last 2 to 3 weeks. Yeah. Everybody come onto the screen. Hello. Yeah. All mad people, mad Buddhas. इससे बढ़कर एक पागल कैसे जान गए यार all mad Buddhas देखो कैसे हंसते हैं देखो Yeah, we are missing one more. Jaspreet, he is not here, and Charu, he is there. She is there on that, and also Alekhya, Amulya, Chirag, and Akshi, Naman, everyone. All over the world, all over the world. Yes, all over the world. So thanks everyone for making this. Yes, yes, sir. Under the leadership of Krishna. Yeah, thank you. No, they are the leaders, and I have been working out for this project. So I would say in that way. So I have many bosses behind me. अपना सूरज देखो चश्मे में. Yeah. Yeah. पल्लवी किधर है? Pallavi, yeah, she's there till now, but I think she lost. Yeah, she's there. She's not in Delhi. She's going down. Yeah, now she's. Yeah, she is in Pune. That's what I'm asking. Okay. Hello, sir. Right, Baba, you have done a big thing. You are the manager of all the Buddhas. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. फिर मिलेंगे. But we are actually in B. Thank you, Satyakar. Thank you, Pani. See you again. Global. Pani, do you have anything now? Yes, we have it in 20 minutes. Yeah, PSSM Global, the Saroja madam is taking untold story of Sita already. Oh. And it's already happening, right? So many things are happening. What to do? Yeah. I'm getting confused. Yes, sir. I think now you have to get into the call soon after the untold story of Sita is over, and we'll thank you, sir, and all the North India masters and all the South masters, especially from Pyramid Valley International. We got fantastic support from Ravinder sir and
Balaji and full team. In the similar way, we got from Jay Kumar has taken very big pain in making this physically in the electronic copy, in digital copy, as well as in the Times of India also. And same way, PMC Telugu people have fully supported, and Paima Challenge, they also supported us. So it is a great collective conscious and collective group work, and I'm sure that ऐसा event और हम ऐसा ही प्लान फर्दर करेंगे, क्योंकि अभी एक रास्ता तो पता चल गया, हम लोगों ने एक हफ्ते में टर्न अराउंड कर सकते हैं. PSSM मास्टर कोई भी डेट देना है, कोई भी चीज चाहते हैं, वो तो करके हासिल करेगा. दिस इज द प्रूफ. Thank you all the young buddies and young masters and all the future of PSSM. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. See you, Baba. Thank you, thank you. Thank you, Yeah. sir. Thank you. Everybody. इस दुनिया की भाग दौड़ में एक पल के सुकून इस दुनिया की भाग दौड़ में एक पल के सुकून को सारे ढूंढने चले धूप छाओ की जिंदगी में एक पल के खुशी को हम खोजने चले गूंजे सत्य की सुन के हम थम गए अपने ही आप से अब मिल गए सत्य को पहचान कर ध्यान से उत्थान कर सत्य को पहचान कर आया ये पिरामिड मेडिटेशन चैनल हम सबका चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल हम सबका चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल एक नई लहर आनंद की एक नई लहर आनंद की एक नई लहर आनंद की हमको ब्रह्म में मिलाने हमको ब्रह्म में मिलाने नव युग में सत्य को दिखाने
सशक्त बनाए।